ये क्या बंच क्या है ये ट्रांसफर का है सर, लाइवलीहुड का, एक जगह से दूसरे जगह किए। ठीक है, इनका नितिन गुप्ता जी का नाम डाल दीजिएगा, लर्निंग काउंसिल फॉर स्टेट। चलिए 58 पूरा बंच। हाँ बंच My lord, petitioner is a 92 years old man, my lord, and is third class employee, my lord. And my lord, after 30 years from the post of assistant fisheries officer, my lord. assistant fisheries of My lord, third class employee, my lord. And after 30 years, my थर्ड lord, क्लास एम्प्लॉय नहीं कहते, क्लास 3 एम्प्लॉय कहते हैं। my lord, सब थर्ड क्लास एम्प्लॉय तो बहुत ही my lord, derogatory हो जाएगा। class 3, my lord. क्लास 3 एम्प्लॉय, My lord, employee. And after a lapse of 30 years, my lord, he started one of recovery, my lord. बताइए इसको बोला था। He was retired on 31/3/84, my lord. टेंशन ना ले यार। And हाँ डिटेल्स बताइए सर वो डिटेल्स आ गई फाइल का सर इसमें आ गई डिटेल। इसमें निवेदन ये था साहब, रिटायर होने के बाद पीपीओ जारी हो जाता है, उसके बाद पेंशनर और बैंक की लायबिलिटी होती है सर। देयर इज नो रोल। अच्छा तो बैंक के लिए कौन आ रहा है जी बैंक से तो बैंक। हाँ बैंक ने तो ये कहा कि गवर्नमेंट ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए उसको फॉलो कर रहे हैं। बोला ना मतलब इन दिस रिगार्ड। कहाँ है कागज आपके? जी सर आ गए। नहीं, आपके अधिकारियों को इतना तो कोर्ट का रिकॉर्ड होना चाहिए, दे शुड रिमेन प्रेजेंट इन टाइम। सर फाइल हो गया, इसको रख लें सर। कहाँ है कॉपी दीजिए। तो इसमें नहीं लगी, कल फाइल हो गया है। ये ओआईसी है जी। क्या फाइल किया है आपने? आप भी रिटायर होंगी, आपको इस बात का अनुमान है कि आप पूरे टाइम नौकरी में रहेंगी? नहीं सर। Then why you are harassing a retired person? सर मैं निवेदन करना चाह रही हूँ कि डिपार्टमेंट से सर 1989 में रिटायर्ड हो गए थे सर, पीपीओ उनका जारी हो गया था। और पीपीओ जारी होने के बाद में सर जो पेंशन बनती है सर बैंक से बनती है, और जो कटौती जो हो रही थी सर उसमें विभाग का कहीं कोई अच्छा आपने कहा है, ठीक चलिए सर देखिएगा। श्री ये बैंक का सर पुष्पराज सिंह गहरवार, लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर। My lord, श्री मानस my मुनि वर्मा जी। My lord, I am relying upon this judgment. जजमेंट अभी नहीं, पहले फैक्ट्स को। My lord, sorry, my lord, sorry. श्री मानस मुनि वर्मा, लर्नेड काउंसिल फॉर द स्टेट, अलॉन्ग विद, आपका शुभ नाम बताइए मैडम? शशि प्रभा धुर्वे सर। श्रीमती शशि प्रभा धुर्वे जी, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस। नेक्स्ट पैरा। श्री कपिल दुग्गल फॉर द रिस्पोंडेंट बैंक। नेक्स्ट श्रीमती शशि प्रभा धुर्वे, Joint Director Fisheries, submits that the state has never directed the bank to make any recovery, and once PPO was issued in favor of the pensioner in the year 1989, when he attained the age of superannuation, thereafter no recovery is proposed by the state government. Full stop. It is strictly between bank and the pensioner. Next, Sheikh Kapil Duggal. मैं एड्रेस on that note. हाँ बिल्कुल, अभी आपको सुना कहाँ मैंने, अभी सुनूंगा ना आपको। जी बताइए। Please have a reply now. जी Reply on behalf of respondent number 5. Respond number 5. No? 5. Just a minute. Yes. Your Lordship, please have paras 3 and 5 of my return, and then I'll take your Lordship to the state's annexure. Contention is para 3 at page 3. जी पढ़िए please. Further, the quantum and calculation of amount of pension to be paid to the petitioner is also to be determined by his employer. जी That is respondents number 1 to 4. And answering respondent is merely the executing authority which credits the amount of pension in the bank account of the petitioner. Then para 5 note that however the Directorate of Pension, Provident Fund and Insurance, DOPPFI, Department of Finance, Government of Madhya Pradesh, with its letter dated 8/1/2019, intimated manager CPPC Punjab National Bank that it had scrutinized the case of pensioners of Madhya Pradesh and had found that excess payment was being made to some pensioners, and recovery was to be made from the cases where excess payment was being made. A sheet was annexed to the said letter which contained the details of the amount of pension paid
and which should have been paid, thereby highlighting the excess amount made to the petitioner. And accordingly, recovery of amount paid in excess was required to be made. Annexure R2 दिखाइए. Yes, please have annexure R2. Start from page 14. Please see, Lord, this is issued at the top, Lord, by Sanchanalaya Pension Provision Bureau, Madhya Pradesh. There is the sheet and The sheet thereby, Lord, starts at page 70. तो कितना अमाउंट इन्होंने रिकवर करने के लिए कहा? The total amount is, Lord, 3,57,245. जी इसमें कितना प्रिंसिपल है, कितना इंटरेस्ट है? पूरा प्रिंसिपल है इनके पास। पूरा प्रिंसिपल अमाउंट है. आप तो बोल रहे हैं कि विभाग ने कुछ कहा ही नहीं. सर ये डिपार्टमेंट पेंशन वाला अलग है, फिशरीज के लिए मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अच्छा. ultimately it's a state government, Lord. मध्य प्रदेश शासन विधि कमिश्नर पेंशन के लिए कौन अपियर हो रहा है? रिस्पोंडेंट नंबर 3 के लिए क्लियर तो हम होते हैं, पर इन दिस रिगार्ड माय लॉर्ड देयर इज नो इंस्ट्रक्शन। आप बुलवा लीजिए कमिश्नर साहब को, लिखिएगा उसके आगे लिखिएगा श्री दुग्गल, कपिल दुग्गल, reading from his return submits that it was Directorate of Pension, Provident Fund and Insurance which had issued a DO to the bank dated 8/1/2019 directing it to make recovery of the amounts shown in the enclosed sheet, calculation sheet, which shows recovery of rupees 3,57,245 to be made from the petitioner. Full stop. अभी तक कितनी रिकवरी हो गई आपके पास? 56,000 इंटरिम ऑर्डर हो गया था तो फिर 56,000 हुआ था, उसके बाद स्टे होगा। अच्छा ठीक है, फुल स्टॉप. Thus, stand of the Directorate of Fisheries that the state government has not made any recovery, appears to be needs further clarification in as much as Directorate of Pension, Provident Fund and Insurance, Government of Madhya Pradesh, Finance Department had not even bothered to endorse a copy to the parent department, had not bothered to endorse copy of Annexure R2 to the parent department. Full stop. Next paragraph. How a recovery could have been imposed after 30 years of retirement of pensioner is to be brought on record by the respondent number 3, Commissioner Pension. Full stop. Let affidavit, personal affidavit of Commissioner Pension be filed, failing which Commissioner Pension, Sadhana Enclave, Phase 2, Hoshangabad Road, Bhopal shall remain personally present. Let affidavit be filed by 10th April, list on 11th April. My lord, after passing the stay order, my lord, he was required the amount, my lord. Then, my lord, I filed a content petition. That is kindly, my lord, साहब अभी wait करिए. linked with the my lord petition, my lord. Content number, my lord, 2582. दे दीजिए, पर्ची पर लिख के दे दीजिए. My lord. Along with कर दीजिए. My lord, and my lord, one more submission, my lord. Last time, my lord, honorable court was to issue notice, my lord. While my lord, I was adjusted, my lord. ठीक है, हमें नहीं मालूम, आप नहीं आएंगे एडजस्ट हड़ताल में. एडजस्टमेंट की एप्लीकेशन हाँ होगा, ठीक है, तब उस नोटिस का जवाब दीजिएगा प्लीज. आज मत बात करिए, उस नोटिस का जवाब दीजिए फिर आगे बात करिएगा. my lord. Serial number 151. Saurabh Bhushan Srivastava. क्या करें? तो लास्ट ऑर्डरशिप में जी उसमें वही है सर कि हाँ, फरवरी याद है मुझे. पिछली बार भी जी किस पद पर हैं आप? सर इंस्पेक्टर नेम प्लेट लगाने का नहीं है चलन क्या? सर वो टूट गई सर, ट्रेन में आया था तो ट्रेन में टूट गई? जी सर, आपके साथ भी धक्का मुक्की हो जाती है? सर वो निकलने में हो गया सर। अच्छा, मेरे को जितना मालूम है कि कोर्ट में when you come then if name plate is not there then it is you are not said to be in complete uniform. सर जी सर क्या शुभ नाम है आपका? उमेश कुमार तिवारी। हाँ तिवारी जी बताइए, ये पिछली बार भी आपने कहा था कि फाइनल रिपोर्ट पेश कर रहे हैं,
ये हमने पिटीशन डिस्पोज ऑफ की थी 15 दिसंबर को। सर क्या तकलीफ है फाइनल रिपोर्ट पेश करने में आपको? फाइनल हो गया है सर, खारिजी इसमें हमने काट दी है सर। जो भी काटा हो 15 दिसंबर को भी आपने यही कहा था, सर क्यों नहीं पेश की गई कोर्ट में? यू आर वेटिंग फॉर हुम? सर एमएलआई की जो रिपोर्ट्स थी सर वो नहीं आ पाई थी, कब आई है एमएलआई की रिपोर्ट? और उसके बाद फिर एमएलआई की रिपोर्ट्स कब आई? डेट बताइए। इसके लिए भी आपको एक असिस्टेंट लगता है बताने के लिए? नहीं नहीं सर, वो विवेचक है इसलिए घटना का रिप्रेजेंटेशन करता है उसके लिए। आप कब से हैं इस थाने में? सर 9 महीने पर। 9 महीने हो गए, तो दिसंबर में भी आप ही थे ना एसएचओ? जी जी आप विवेचक हैं, आपको ये नहीं मालूम कि रिपोर्ट किस तारीख को आई? ये सर अपने पास 27/7/22 27/7/22 को सर 27? रिपोर्ट आई। 27/7/22 को आई सर। हाँ और उसके बाद इसकी क्वेरी के लिए हमने फिर से पत्र लिखा, हाँ जो कि पेंडिंग थी सर। अभी हमने बोला था कि 15 दिन में आपको मिलेगी फिर से। हाँ। फिर कुछ क्वेरीज मिली थी सर। किस तारीख को क्वेरी के लिए पत्र लिखा? और सर घटनास्थल का रिक्रिएशन भी कराया। हमें नहीं मालूम ये सब चीजें। आपने दिसंबर में सरकारी वकील साहब ने यहाँ कहा सर that within 15 days final report will be filed before the concerned court। फिर सर हमने पत्र लिखा तो किस 27 तारीख को पत्र लिखा आपने? ये सर 26 फरवरी को हमने पत्र लिखा। 26 फरवरी कौन से साल की? 23 सर। क्यों? इसी जब सब 27/7 को आपके पास रिपोर्ट आ गई थी तो आपने 6 महीने तक क्या करते रहे आप? कुछ सर रिपोर्ट्स जैसे एफएसएल का रिक्रिएशन होना सर घटनास्थल का, तो घटनास्थल का रिक्रिएशन करके। कब किया रिक्रिएशन आपने? 15/12 को रिक्रिएशन हुआ सर, और फिर हमें 1.5 महीने बाद इसकी लगभग रिपोर्ट प्राप्त हुई। क्यों? किससे प्राप्त हुई? एफएसएल से सर। एफएसएल अधिकारी होते हैं सर। हाँ, दिसंबर 2015-22 में रिक्रिएशन ऑफ सीन। जी सर। हाँ, कहाँ है? बुला लीजिए आप अपने एफएसएल अधिकारी को। और रिपोर्ट दी उन्होंने कब? किस तारीख को रिपोर्ट दी एफएसएल ने सीन रिक्रिएशन की? सर 1.5 महीने बाद दी है सर। तारीख बताइए। तारीख सर इसमें है। यू कैन नॉट गिव वेग इंफॉर्मेशन टू द कोर्ट। गिव मी द स्पेसिफिक डेट। जी सर। Otherwise, I'll record adverse finding against you. जी सर। Give me specific date. अच्छे मन लिखे सर। जी पर्चे में है सर। बताइए ना, तुम वो केस डायरी में क्यों नहीं है? वो बैग में क्यों रखा है पर्चा? सर ये खारिजी वाले जो प्रपत्र हैं ये अलग कर लिए थे, जो होते हैं प्रपत्र साक्ष्य वाले, और केस डायरी अलग है सर। केस डायरी देखिए ना। जी सर। सरकारी वकील साहब को केस डायरी नहीं भेजी क्या आपने? भेजी गई सर, उनकी भेजी गई। हाँ, क्या डेट है बताइए? 29 जनवरी सर 2023। 29/1/2023 को भेजी रिपोर्ट। जी सर। फिर आपको 1 महीना क्यों लग गया? आपने किस फरवरी को भेजा है? फरवरी छह फरवरी 6 फरवरी को भेजा है आपने। उसके बाद सर फिर जो हमारे पास ये गए थे सर वहाँ लेके एमएलआई सर। हाँ, पावती लेके आ गए थे सर। उसके फिर उन्होंने कहा था कि बाद में फिर आप आइएगा। बाद में कब गए आप? फिर सर दोबारा कब गए?
आप लोग घर से पढ़ के नहीं आते हैं बिल्कुल से। आए सर ये तो क्या पढ़ के आए आप? 27 फरवरी इसीलिए तो आपका बैच टूट जाता है ट्रेन में। जी सर 27 फरवरी को उन्होंने फिर लिख के दिया है सर हमें। क्या? इन्होंने लिखा है कि प्रकरण की रिपोर्ट तत्कालीन संचालक डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा द्वारा दी जा चुकी है तथा तत्कालीन संचालक विभाग संस्थान से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। फिर अतः उनकी रिपोर्ट को पूर्व की रिपोर्ट को मानकर प्रकरण का निराकरण करें। तो बस उसके बाद फिर कब लिखा इन्होंने आपको? ये 27 फरवरी को लिखा है। 27 फरवरी को आ गया। उसके बाद आज कौन सी तारीख है? फिर अभी तक फाइनल रिपोर्ट क्यों नहीं पेश हुई? सर फाइनल रिपोर्ट हो गई। किस तारीख को पेश हुई? यही तो पूछा था, किस तारीख को फाइल हुई फाइनल रिपोर्ट? सर फिर हमने खारिजी के लिए पत्र लिखा सर, पहले एसडीपी साहब को लिखा सर 3 तारीख को सर। हाँ 3 इसी मार्च में सर। हाँ। और अगले दिन एसडीपी साहब ने फॉरवर्ड की, कल खारिजी हो गई इसमें। कल खारिजी पेश हो गई है? हाँ काट दी गई सर थाने से। काट दी गई नहीं होता, कोर्ट में कब पेश हुई? अभी सर कोर्ट में पेश नहीं हुई। क्यों कोर्ट में कब पेश होगी? अब नेक्स्ट में पेश कर देंगे सर। नेक्स्ट मंथ क्यों करेंगे? नहीं मतलब जो भी आने वाला टाइम सर, यहाँ आने वाला टाइम मतलब सैटरडे भी वर्किंग है हाई कोर्ट? वहां जाएंगे सर, पेश करेंगे। क्या आपके यहाँ क्या प्रोटोकॉल है? खारिजी काटने के कितने दिन बाद पेश करने का नियम है? सर जल्दी कर सकते हैं सर, नहीं अगले दिन भी कर सकते हैं। वेग उत्तर मत दीजिए। अगर आपने 3 अप्रैल को काट दी थी तो आज तक पेश क्यों नहीं की? किसका वेट कर रहे हैं आप? सर पेश नहीं, खारिजी थाने में क्यों नहीं, कोर्ट में क्यों नहीं गई? खारिजी तो कोर्ट में, फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में पेश होती है मजिस्ट्रेट के सामने। सर निवेदन ये था कल कटी है सर खारिजी। अभी आपने बोला 3 अप्रैल को। नहीं सर 3 तारीख को एसपी तो कल कटी तो आज क्यों नहीं पेश हुई? गो एंड फाइल इट टुडे इटसेल्फ। जी सर अभी गाडरवारा से है ना? नहीं सर पिपरिया सर। पिपरिया इज नॉट फार ऑफ। यू फाइल इट बिफोर 5 o'clock। आप 4:30 बजे, आप 4 बजे तक फाइल करके इनको सूचित करिए। और 4 बजे तक फाइल नहीं हुई उसका नंबर दीजिएगा। जी अदरवाइज यू विल बी कॉल्ड अगेन। 4 बजे तक फाइल हो जाना चाहिए और सर करके मुझे नंबर दीजिए। बिल्कुल सर 4 बजे तक इनका नंबर लेके। उसका क्या एक्नॉलेजमेंट मिलता है ना वहां से? जी सर रिसीव कोर्ट से। जी तो वो एक्नॉलेजमेंट की कॉपी लीजिए, इनसे फैक्स पे मंगाइए, ईमेल पे फैक्स पे बुलाइए, मुझे वो कॉपी 4 बजे पेश करिए। इट इज देयर हेडेक टू प्रोड्यूस इट। सर सीरियल नंबर 2 श्री घनश्याम पांडे। Now, Miller's case today listed in question of the maintainability. हाँ बताइए। Lordship, I am requesting for 2 weeks time to बाद verify Lordship. क्या वेरीफाई करना है? Lordship, actually इसमें हुआ ये था कि मैंने जो है कि 91 की एप्लीकेशन ट्रायल कोर्ट से डिसाइड हुई थी Lordship। स्पेशल कोर्ट का मामला था Lordship। 397 में Lordship वैसे मेंटेनेबल है जी, मेंटेनेबल है। 397 में स्पेशल कोर्ट का जब मामला होता है, जब 91 की एप्लीकेशन डिसाइड होती है Lordship हाई कोर्ट में रिवीजन आती है। सही है। कहाँ है प्रोविजन बताइए? पढ़े 397 भी पढ़ते हैं अपन। आइए पढ़िए 397 पढ़िए। सॉरी बट Lordship मैं बुक नहीं ला पाया। सॉरी मैं बुक नहीं ला पाया। ये तो बहुत ही उत्तम प्रकार की एडवोकेसी है आपकी। ये आप वो बुक भी लेकर नहीं आए जिसके ऊपर की आपको बहस करना है। आप लोगों ने दी थी ना, कहाँ गए? कपिल पटवर्धन और गुप्ता जी ने बुक्स दी थी ना यहाँ पर। जी साहब। कहाँ चली गई वो किताबें? कहाँ है वो किताबें? तो यहाँ क्यों रखते हो? तो उनके लिए भाई। ये सेट सुबह वहां रख दिया करिए। सीआरपीसी पूरी किताबें रख दीजिए, उसके बाद में उनको जो उठाना होगा उठाएंगे वो। श्री शाह इज, क्या शुभ नाम आपका? एपी शाह? अशोक शाह। Ashok Shah is not ready with the matter. He has not even got the CRPC to address the court. He prays for time to argue on the issue of maintainability. On his request, case is adjourned list after 8 weeks. सीरियल नंबर 3
लक्ष्मण सिंह ठाकुर 3.1, आत्माराम लकीरा, सीरियल नंबर 3 फर्स्ट टाइम listed हो जी, और सीरियल नंबर 3.1 is already issue notice to the proceedings. 3 में भी नोटिस कर दीजिए, 3 में लिखिएगा। श्री आपका शुभ नाम? धीरेन्द्र सिंह जी, धीरेन्द्र सिंह ठाकुर for the appellant issued notice to the complainant through learned public prosecutor Shri Manasmani Verma में क्या कितने साल की है? 10 साल से ऊपर है? 2 साल की 2 साल की है तो डेड मर गई उसकी माँ है। हाँ ठीक है, ठीक, नोटिस तो इशू करना पड़ेगा। जी सर। लिस्ट दिस केस along with 3.1 के साथ कर दीजिएगा। In the week commencing 17 अप्रैल 2023। नंबर 4 MP सूचना In respondent on behalf of respondent 7, 8, 10, 11 and 15 my lord is on adjustment. ठीक है, उनको एडजस्टमेंट पे रहने दीजिए, आप तो खड़े हैं ना। The ex parte declared lordship. एक से रुक जाइएगा। Lordship. जी I'm for the appellant, my lord. आप बताइए ना। Your lordship, this is the appeal, my lord, against the ex parte judgment and decree which was passed against me, my lord, by the learned lower appellate court. Yes. Initially, in this case, the suit was filed by us, my lord, for title declaration and injunction, my lord. My suit was decreed, my lord. Then the other party defendants have preferred an appeal. Initially, before the court of Riva, my lord, appellate court. Later on, my lord, the matter was transferred to the court of Mahuan, my lord. When the Mahuan additional district judge court was constituted, my lord, later on. And my submission, my lord, that I was not served the notice, my lord, and an ex parte order, ex parte proceeding was proceeded, and consequently the ex parte decree was passed against me, my lord. Then I moved an application under order 41, rule 20, order 41, rule 21, law. For the hearing of appeal, on the ground that the first the notice were not served properly, not and the एक सेकंड, ऑर्डर 41 रूल 21। जी my lord, I'm reading the 20 rehearing on application of the respondent against whom ex parte decree made, where an appeal is heard ex parte and judgment is pronounced against the respondent, he may apply to the appellate court to rehear the appeal, and if he satisfied the court that the notice was not duly served on, or that he was prevented by sufficient cause from appearing when the appeal was called on for hearing, the court shall rehear the appeal on such terms as to cast or otherwise as it thinks fit and proper. My application was rejected by the court. कहाँ है आपकी एप्लीकेशन का ऑर्डर, रिजेक्शन का ऑर्डर? That order date is not, that is ये थी होगा ये, that order date is not 21/8/2007। जी 21/8/2007। जी क्या लिखा है इन्होंने, किस कारण से आप अनुपस्थित रहे? ये इन पैरा 3 मिनट में काइंडली पैरा पैरा 3 में हमारी एप्लीकेशन को ही डिस्क्लोज किया है।
आवेदन में के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदक ने अनावेदक के विरुद्ध ग्राम पिपरा स्थित अराजी नंबर सो की भूमि की स्वामित्व घोषित किए जाने और कब्जा दुरुस्त किए जाने के लिए स्थायी अध्यादेश के अंतोषित व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 मऊगंज के न्यायालय में प्रस्तुत किया था। वह आवेदक के पक्ष में दिनांक 18/3/93 को निर्णित किया गया था, जिसके विरुद्ध अनावेदक गण ने चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश रीवा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। अपील की सुनवाई हेतु आवेदक को समन जारी किए गए, परंतु उस पर कोई विधिवत समन्स नहीं हुई, तामीली नहीं हुई। आवेदक के द्वारा इंद्रजीत प्रसाद पटेल को कभी अपनी ओर से पैरवी करने के लिए निर्देशित नहीं किया था। यदि उसकी ओर से इंद्रजीत प्रसाद पटेल मेमो लगाकर पक्ष समर्थन के लिए उपस्थित भी हुए हों तो उसकी जानकारी नहीं है। इसके पश्चात यह अपील व्यवहार न्यायालय मऊगंज में आंतरिक होकर आई और मऊगंज में दिनांक 9/7/98 को पंजीबद्ध किया। अपर जिला न्यायालय मऊगंज के द्वारा आवेदक की उपस्थिति के लिए नोटिस जारी किया गया, परंतु नोटिस उस पर शामिल नहीं हुआ। प्रकरण में जो दिनांक 4/3/99 को पेशी का समन आवेदक पर तामीली बताया गया है, वह समन आवेदक को नहीं मिला तथा समन पर ऐसी कोई टीप अंकित नहीं है कि समन के साथ अपील ज्ञापन की प्रतिलिपि का समन के साथ भेजी गई हो। फिर भी तत्कालीन अपर जिला न्यायाधीश ने दिनांक 4/8/99 को पेशी का समन तामील मानकर आवेदक के विरुद्ध अपील प्रकरण में एक पक्षी कार्रवाई का आदेश प्रदान किया और अपीलार्थी अनावेदक को सुनकर प्रकरण का निराकरण दिनांक 27/8/99 को कर दिया। समन की वैध तामीली न होने के बाद भी आवेदक के विरुद्ध एक पक्षी आज्ञा पारित की गई है, जिससे आवेदक न्याय से वंचित हो गया है तथा दिनांक 27/8/99 के निर्णय की जानकारी आवेदक को उस समय हुई जब विवादित भूमि पर अनावेदक गण भवन निर्माण करने के आशय से निर्माण सामग्री एकत्र करने लगे। उसी समय गिरिजा प्रसाद पटेल ने आवेदक को बताया कि अपील न्यायालय का फैसला अनावेदक गण के पक्ष में हो गया है। तब आवेदक ने दिनांक 7/5/2003 को व्यवहार न्यायालय मऊगंज जाकर जानकारी प्राप्त की और अपील के निर्णय और आज्ञप्ति की प्रतिलिपि हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। दिनांक 22/5/2003 को उसे निर्णय की आज्ञप्ति प्रतिलिपि प्राप्त हुई। तब उसे ज्ञात हुआ कि अपील न्यायालय ने उसके विरुद्ध एक पक्षी कार्यवाही का निर्णय पारित किया है और अपील न्यायालय द्वारा एक पक्षी निर्णय व आज्ञप्ति को अपास्त किए जाने हेतु आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए जाने के लिए आदेश 41 नियम 21 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का आवेदन और इस आवेदन के प्रस्तुत किए जाने में हुए विलंब को क्षमा करने के लिए आवेदन मर्यादा अधिनियम की धारा 5 का आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किया है। And this application was filed that is on 16/6/2003 as it is mentioned. 6 से पढ़िए जी, पैरा 6 से पढ़िए जी। आवेदक की ओर से तर्क किया गया कि अपील न्यायालय ने अपील प्रकरण क्रमांक 771/90/98 का जो निर्णय दिनांक 27/8/99 को पारित किया उसकी जानकारी तत्सम उसे नहीं हो पाया था। दिनांक 6/5/2003 को जब अनावेदक गण ने विवादित भूमि पर निर्माण करने के आशय से निर्माण सामग्री एकत्र की तब उसे बात बताइएगा शुक्ला जी। जी सर, आपके पास में तो एक जजमेंट एंड डिक्री था 93 का सर। उसका एग्जीक्यूशन कब लगाया आपने? एग्जीक्यूशन नहीं लगाया हमने सर। वकील साहब, जब अपील की जानकारी नहीं होगी तो जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया है वो ये होगा कि आप जाके एग्जीक्यूशन फाइल करेंगे अपने जजमेंट डिग्री को एग्जीक्यूट कराने के लिए। 93 की जजमेंट एंड डिग्री है। आपकी सब बात तर्क के लिए मान ली जाए कि आपको अपील की कोई जानकारी नहीं। एक्चुअली सर इन्होंने अपील पहले तो फर्स्ट में इन्होंने रीवा में प्रस्तुत किया, फिर बाद में मैटर ट्रांसफर हुआ। ट्रांसफर भी हुआ तो मेरा तो ये था कि हमें तो संबंध ही नहीं मिल पाया। अच्छा,
unless until I move this application that one opportunity be given to us to अच्छा उसमें और बाकी कुछ कार्रवाई होना नहीं थी, एक हियरिंग तो होना थी। और यही निवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष भी है कि एक चांस दे देते, अपीलेट कोर्ट इसको हियर करके दोनों पक्षों को, और प्रॉपर्ली। आपका खुद का कंडक्ट ही गड़बड़ है। आप लिख रहे हैं जी कि आपका पक्षकार मतलब आप मतलब आपका पक्षकार जी 3/5/2003 को जानकारी हुई जी और प्रतिलिपि आपको 22/5/2003 को मिली, जी जबकि आपने जो आवेदन है वो 22/4/2003 को लगा दिया था। जानकारी की डेट भी गलत दे रहे हैं आप। सर इसमें अब निवेदन ये है कि ये तो रिकॉर्ड से ये हो कि उसको नोटिस सम्मन मिला नहीं मिला, दैट इज इशू। अब वो तो जो एप्लीकेशन लगाया बनाया होगा नंबर 7 लॉ। यस जी एनीथिंग एल्स? in para 6 not the court has dealt the issue of 7 it has recorded a finding जी that process server Santosh जी had already संतोष प्रसाद दुबे जी ने साक्षी मोहम्मद अयूब और सुरेश प्रसाद की मौजूदगी में तामील किया गया है। अब वो तामिली को तो ये देखना होगा कि whether that तामिली is proper or not. You were required to lead evidence. चलिए, anything else? And they admitted lordship also. They admitted lordship that the notice was filed on them, but the appeal memo of appeal was not included that, and they only because of that. ये दो जजमेंट निकालिए। ये लॉर्डशिप 1965, 1965 MPL देखिए ना भाई। ये लॉर्डशिप शॉर्ट नोट 12 ये लॉर्डशिप आई एम दूसरा है 1972 MPLJ नोट 52 दोनों निकाल के दिए। My lord, one recent judgment passed by this Cardinal Bench of the Honorable Court, इस केस में भी 13 साल के बाद एक्स पार्टी डिक्री सेट असाइड करने के लिए अपील फाइल हुई थी। उसमें भी यही आया था कि जो नोटिस की डेट जो कोर्ट ने नोटिस तो उन्होंने मान लिया कि तामील करा दिया हमने उसको, लेकिन नोटिस की जो हियरिंग की डेट थी उसके बाद नोटिस तामील हुआ था। That is not the case. After 13 years, this appeal was preferred before this honorable court, and that appeal was allowed, my lord, and are giving opportunity of hearing to the parties, my lord. इसमें एक मिसलिनियस अपील भी एक कनेक्ट थी, उन्होंने साइड की, और फर्स्ट अपील थी, इसमें भी यही स्थिति बनी थी। उन्होंने नोटिस की डेट फिक्स किया था 13/8 सुनवाई की, 15/8 को उसको नोटिस दे दिया, और फिर उसमें एक्स पार्टी प्रोसीड किया और बाद में जाके डिक्री भी कर दिया। That point has been dealt with. Yes. This miscellaneous appeal is filed by the plaintiff appellant being aggrieved of order dated 21/8/2007 passed by learned additional district judge Mauganj district Rewa in miscellaneous civil case number 18/03
whereby an application filed by the petitioner for the appellant under Order 41 Rule 21 CPC seeking setting aside ex parte proceedings is rejected. Next paragraph. Learned counsel for the appellant submits that appeal was instituted against the judgment and decree dated 18/3/1993 passed by the learned civil judge class 2 in civil suit number 57A/1987. Full stop. Against this judgment and decree, appeal was filed before the 4th Additional District Judge Rewa, bearing number 16A/93. Full stop. In the year 1998, Additional District Judge Court was sanctioned for Mauganj, and therefore case was transferred to Mauganj, and new number 71A/1998 was given to the appeal. Full stop. Next paragraph. In this case, ex parte judgment was passed by the appellate court on 27/8/1998. Full stop. Next paragraph. It is appellant's contention that firstly, he had not authorized Shri Indrajit Prasad Patel to appear on his behalf before the learned 4th ADJ Rewa. Full stop. It is also submitted that no summons were ever received or served on the appellant, and therefore the decision of the court at Mauganj to proceed ex parte is expressly illegal and arbitrary and deserves to be set aside. Full stop. Reliance is placed on a decision of a coordinate bench dated 3rd February 2023, filed in first appeal number 614 of 2017, wherein ex parte proceedings were set aside after 13 years of they being undertaken. Next paragraph. Shri Paresh Parikh, learned counsel for the respondent defendant, in his turn submits that factual matrix of this case is different. Full stop. After transfer of case to Mauganj, notices were issued. ये 27/8/99 है कि 27/8/98 है? 27/8/99 सर, 27/8/99 कर दीजिएगा। 27/8/99 ऑर्डर। हाँ जी। हाँ। Notices were issued for service on the plaintiff appellant. Full stop. That notice was duly served by the process server Sampatti Prasad Dubey in presence of witnesses Mohammad Ayub and Suresh Prasad for the next date, that is 4/8/1999. Full stop. Counsel for the appellant has taken a plea that since notice/summons were not accompanied with memo of appeal, therefore service was not complete on the plaintiff, and that was sufficient reason preventing him from appearing before the appellate court, that is the Court of Additional Session District Judge, Mauganj District, Rewa. Next paragraph. Shri Paresh Parikh submits that there was sufficient notice to the appellant about the date fixed by the trial court by the appellate court at Mauganj, and technicalities of summons being not accompanied with a memo of appeal could not have been resorted to, so to avoid appearance and then seeking setting aside of ex parte judgment and decree. Next paragraph. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, few things needs to be highlighted. Full stop. First aspect is that admittedly summons were served on the appellant for appearance on 4/8/1999. Full stop. Sorry.
4/8/1999. Full stop. Therefore, the full appellant had moved an application for obtaining copy of the judgment and decree on 22/4/2003, but he mentioned date of knowledge as 3/5/2003, which has been taken to be an adverse circumstance against the appellant. Full stop. Secondly, no reason is given for not appearing after service of summons. Full stop. This distinguishes the case of the appellant from that of BB by Divedi, in as much as in that case summons were allegedly served after the due date. Full stop. Secondly, in that case, when there was that on the date so fixed, that is 21/3/2003, appellant was not proceeded ex parte on the basis of the so-called refusal to accept the summons, but plaintiff was directed to pay the fresh process fee, and it is noted by a coordinate bench that it is not clear as to whether any fresh process fee was paid in compliance of the order dated 21/3/2003. Full stop. In this backdrop, coordinate bench had set aside the ex parte decree dated 26/4/2004. Full stop. As mentioned above, facts of the present case are different. Full stop. In this case, summons were duly served for appearance on 4/8/1999, when due to non-appearance ex parte proceedings were drawn against the present appellant. Full stop. Trial court has placed reliance on the decision of this High Court in Preeti Kumari Das DASS versus Fatima B. 1972 MPLJ short note 52, wherein it is held that mere irregularity in the service of summons cannot be a ground for setting aside ex parte decree if the court is satisfied that the defendant knew or but for his willful conduct would have known of the date of hearing. Full stop. Similarly, reliance by the trial court on the decision of this High Court in Gauribai versus Dhelu Ram 1965 MPLJ note 12 is on the same issue. Full stop. When these judgments are taken into consideration, and also the fact that the summons were duly served for appearance on 4/8/1999, then mere technicalities of not enclosing the memo of appeal cannot be a circumstance to set aside the ex parte judgment and decree. Next para. Even otherwise, there is no evidence to counter the findings recorded by the appeal learned additional district judge that process server Sampatti Prasad Dubey had served the summons in presence of the witnesses Mohammad Ayub and Suresh Prasad. Full stop. When it was open to the appellant to have examined these witnesses to dispute service of summons, but since appellant failed to take any steps to examine these witnesses and prove to the contrary that service of summons was not made on him for appearance on 4/8/1999, no indulgence is required in the matter. Miscellaneous appeal fails and is dismissed. Number 5. Number 5. Ravi Shankar Seni, Mukhtar Ahmed. This petition I have challenged for my non-consideration for promotion to the post of District Sports Welfare Coordinator.
to the post of district sports coordinator, Manoj. Manoj, I was by the next step P1, I was appointed as the clerk, Manoj, in the Sanchalaya in 87, Manoj. Next step P1. 1987 जी. क्लर्क बने आप 2nd February 87, Manoj. नहीं, second February 1987 you were appointed as clerk. Annexure P1, Manoj. Page 13 also. जी And P2 I was confirmed, Manoj, in 6th P87, Manoj. हाँ? 6th P87 P2 se I was confirmed, Manoj. हाँ. Subsequently, Manoj, I made various representations for my promotion, Manoj, and on the basis of that, annexure P6 was issued, Your Lordship. एक सेकंड एक महीने में कंफर्म हो गए आप टेम्पररी था पहले, फिर वो प्रोबेशन पे चलिए रखा। कोई बात और उसके बाद I made various representation, Manoj. On that basis, if Your Lordship is kind enough to come to P6, Manoj. P6 yes जी सर इसमें मेरी प्रार्थना थी 11/7/22 को रिजॉइंडर फाइल किए हैं। हाँ अगर ये समय दे दें साहब एडिशनल रिप्लाई कब 11/7/22 के बाद कितना समय हो गया लगा भी नहीं सर, इसलिए मैं छोड़ लगने से क्या होता है और मैं रेडी हूँ मैट्रिक सर। हाँ तो फिर रेडी है तो बहस करेंगे ना और वो सब्सिक्वेंट कुछ पेश किया है उन्होंने किया है तो आपने क्यों नहीं जवाब दिया 11/7/22 जी सर और अभी है चौथे में 6 अप्रैल 2000 9 महीने हो गए सर। जी आई एम रेडी टू वर्क जी जी हाँ क्या हुआ P6 में क्या हुआ P6 में उनका कहना था कि there was provision for 20% of promotion. जी where are the recruitment rules Manoj, that I have filed with my rejoinder, Manoj. हाँ बताइए P14, Manoj. P14 देखिए कनिष्ठ खेल संगठन के पद की सेवा के कर्मचारियों से प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्त करने के संबंध में जिला कनिष्ठ संगठन के पद में खेल एवं युवा संचालनालय क्षेत्रीय कार्यालय जिला कार्यालय के नियुक्त चयन के द्वारा नियुक्ति की जाना है। इस योजना में वे सदस्य जो भाग ले सकेंगे जिनके पास लेनदेन के तहत का है। ठीक है ये तो 98 का था जी 97 का फिर क्या हुआ But I was never considered under these नहीं अरे आपने ये पिटीशन लगाई है 2011 में किस जूनियर का प्रमोशन हो गया ये तो बताइए थोड़ा सा ये 54 Manoj इनका प्रमोशन ऑर्डर है P4 8 है इसका प्रमोशन P7 was his appointment order as clerk and P8 is his promotion order let us see 97 P7 96 में बने जी कौन है ये स्पॉट नंबर 4 वाला जी इसको बुलाओ P8 से इनका प्रमोशन हो गया ये प्रमोशन नहीं अपॉइंटमेंट हुआ सर प्राइवेट रेस्पोंडेंट आर posted my lord in post that post my lord they are relying that promotion वो डायरेक्ट किए जाने के फलस्वरूप वो रिक्रूटमेंट पोस्ट है साहब वो जो ये जिस पोस्ट पे जाना चाहते हैं याचिकाकर्ता डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट है ये 20% रिजर्व्ड है आपको क्या रहा है P6 में कुछ कह रहे हैं P6 में P6 पढ़िए 2009 का है एक सेकंड पहले दो डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है इनका ऑर्डर है 6/10/2008 का ठीक है प्राइवेट रिस्पोंडेंट का तो 6/10/2008 को क्या था तो 14/2/2009 का है संबंध में लेकिन शासन द्वारा जिला खेल अधिकारी का पद द्वितीय श्रेणी में उन्नयन किया गया है शासन द्वारा लिखी सेवा से कार्यपालिक द्वितीय श्रेणी में 20% पर पदोन्नति करने का प्रावधान है जिला उन्नयन होने के कारण अब उक्त प्रावधान लागू नहीं होता है Sir, up from which state they have upgraded, they have not stated, and I assured that 97 rules on that day I was full, having all the criteria. Why did you not agitate that in 97? भाई you had criteria तो हर ग्रेजुएट को जो है भारत का भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी बनने के लिए एंटाइटल करता है आप लेकिन PSC UPSC का इम्तिहान नहीं देंगे नहीं वो तो है सर UPSC का नहीं देंगे तो क्या प्रमोशनल पोस्ट अभी तो वो तो खत्म हो गया ना कि रिकमेंडेशन पे किसी को बना देते थे नहीं वो तो खैर वो जमाना तो I don't know I don't remember नहीं but still मतलब
kept on making. Representations will not give you any cause of action. You will have to show that when this private respondent was promoted, that time there was a provision for 20% reservation for promotion to the post of to this higher post of district sports officer. इतना बताना है आपको सर वो आपको P14 से ही P14 से दिखाइए रिजॉइंडर में हाँ रिजॉइंडर P14 जो है 97 का है 97 में से हम तो 2008 तक मान लेते हैं जी सर ये 15/9/2008 का P6 में हवाला है जी ठीक है 97 से 2008 तक 20% पदोन्नति का था प्रावधान और ये जिला खेल अधिकारी का जो पद है वो तृतीय श्रेणी पद था बट यू नेवर क्लेम दैट पोस्ट then this post was upgraded to a class 2 gazetted post and therefore promotion channel for a class 3 clerical to executive was withdrawn. Now you will have to show that still you were entitled to be appointed promoted as district sports officer. सर इसके लिए एक मैंडेटरी भी है साहब सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में आप पार्टिसिपेट किए हो दिस इज द मैंडेटरी अब इनका कहाँ है ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ये हमने पैरा 4 में लिखा है विश्वविद्यालय क्रीड़ा समिति ये पैरा 4 माय रिप्लाई में लो हाँ ठीक है नेशनल लेवल पे क्या खेला आपने आई रिप्रेजेंटेड द स्टेट इन हॉकी स्टेट नेशनल नहीं किया नेशनल की बात हो रिप्रेजेंटेड द स्टेट वाला कहाँ है बताइए ये तो भोपाल विश्वविद्यालय भोपाल के प्रमाण पत्र लगे हुए हैं स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट दिखाइए ये पेज 13 देखने से पेज 13 ऑफ द रिजॉइंडर सिविल सेवा ये सिविल सेवा क्रीड़ा नियंत्रण मंडल बोर्ड है मध्य प्रदेश का सामान्य विभाग है कि श्रीमती संसो को अंतरराष्ट्रीय हॉकी खेल प्रतियोगिता 83 में रिप्रेजेंटेड टू स्टेट एंड नेशनल लेवल नहीं स्टेट लेवल है मध्य प्रदेश सिविल सेवा क्रीड़ा नियंत्रण मंडल है ये भाई द्वारा राष्ट्रीय हॉकी खेल प्रतियोगिता में क्या विल नॉट गो इनटू दिस आपने किया होगा बिल्कुल आप राष्ट्रीय खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है जी नियम में ये बता दीजिए कि जिस तारीख को ये नियम लागू हुआ और जिस तारीख को प्राइवेट रिस्पोंडेंट का प्रमोशन हुआ क्योंकि प्राइवेट रिस्पोंडेंट की प्रमोशन की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है जी 6/10/2008 और ये जो सर्कुलर है जी 15/9/2008 को इस पद का उन्नयन कर दिया गया और ये 20% का प्रावधान समाप्त कर दिया गया आपका कुछ है नहीं इसमें नहीं दैट आई हैव टू फाइंड आउट मानो नहीं फाइंड आउट नहीं हो तो क्लियर है भाई but because after 97 Malot I could not find anything Malot हाँ ठीक है ना because Malotship से I was consistently requesting Malot रिक्वेस्ट से नहीं होता है because there was a promotional post Malot 20% the promotional हाँ, हाँ. exercise had to be carried out by them रिक्वेस्ट से कुछ नहीं होता है चलिए लिखा देंगे इससे Shri Anup Nair, learned counsel for the petitioner. Shri Manas Mani Verma, learned government advocate for state. Petitioner has filed this petition, mentioning therein that she was initially appointed as lower division clerk in the Directorate of Sports and Youth Welfare, by order dated 2nd February 1987. Full stop. She was confirmed as LDC by order dated 6/3/1987, Annexure P2. Full stop. Petitioner has been making representation for promotion to the post of district sports officer, which according to the petitioner at the relevant point of time as is thought to be made out from Annexure P14 was a class 3 post and there was provision for promotion of LDC to the post to the said post. Next paragraph. It is submitted that
Petitioner, being a national level hockey player, should have been given promotion on the post of district sports officer, but though petitioner continued to make representations, however, her representations were not decided, and in the meanwhile, by order dated 6/10/2008, Annexure P9, private respondents were given promotion, and that being the cause of action, this petition is filed. Next paragraph. Shri Manas Mani Verma submits that rule, that circular of 1997 as contained in Annexure P14 deals with promotion of clerical staff on the post of junior sports organizer. Stop. It is submitted that this promotion was to be made through a competitive examination. Full stop. It is not the case of the petitioner that she participated in the competitive examination for promotion to the post of junior sports organizer. Full stop. It is further submitted that thereafter in the year 2008, post of junior sports organizer was upgraded to that of district sports officer, which was a class 2 post against the status of a junior sports organizer, which was a class 3 post. Full stop. Next paragraph. Since the post was upgraded, therefore the provision which was contained in Annexure P14, which is contained in Annexure P14, is stood amended in as much as earlier there was a provision for promotion from a ministerial class 3 service to an executive class 3 service, but that provision was withdrawn. Full stop. It is not the petitioner's case. The next paragraph. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, it is evident that this petition is filed in the year 2011. Full stop. Petitioner's case is that the private respondents were appointed as assistant grade 3 by order dated 1/10/1996. Full stop. Thereafter, private respondent was given promotion as district sports officer, district sports and youth welfare officer by order dated 6/10/2008. Full stop. Next paragraph. It is further submitted that private respondent was not given promotion but appointment on the post of district sports officer. It is also mentioned in the return that for the post of district sports officer, necessary qualifications are graduation in second class and qualification of
Master in Physical Education or MPE, besides representing the Senior National Championship. Full stop. Since petitioner does not fulfill any of these qualifications, therefore her candidature was not considered for upgradation. Full stop. Next paragraph. Thus, it is evident that firstly, petitioner in terms of the order dated 16/2/2009 and its order dated 15/9/2008 and 15/9/2008 is not entitled to claim promotion on a class 2 post for which provision came to an end when post was upgraded from class 3 executive to class 2 gazetted. Full stop. Besides this, there is no material on record to show that petitioner possesses necessary qualifications for appointment as district sports officer. Full stop. Petitioner has though enclosed copy of a certificate issued by the Madhya Pradesh Civil Seva Sports Control Board Bhopal showing that petitioner had participated in national hockey in 1983 and had represented the Madhya Pradesh, but it is not a certificate showing requirement of participating in senior national championship. Besides that, petitioner has not brought on record any document to show that he possesses necessary qualification of MP.Ed and MPE, which are the prescribed qualifications for appointment oblique upgradation of a person to the post of district sports officer. Therefore, both on the ground of not possessing the necessary qualification and also on the ground that the channel of promotion for LDC to the post of sports officer stood curtailed with the amendment, petitioner has no case for consideration. For showing indulgence, petition fails and is dismissed. Serial number 6, Shri Ashok Kumar Chakravarti, Shri Rama, Shri Srikant Jain. The efforts to compromise the matter have failed. The lands were अच्छा ये वो वाला केस है वो जो रायसेन की जमीन वाला ओके क्या हो गया सर वो लैंड बेचना था आपको, वो बेच नहीं पाया शायद अभी तक। मेरा तो इंस्ट्रक्शन सर वो बेच पा रहे हो तो बात अलग। नहीं हो पा रही है, क्यों नहीं बिक पा रही? पार्टी ये अब दूसरे व्यक्ति के कब्जे में है। बात हुई थी तो इनके मामा वगैरह लगते हैं। एक पोर्शन है, पूरे लैंड का एक छोटा सा पोर्शन है और तो छोड़ के बाकी मैं और पूछ लेता हूँ, एक 1.5 हफ्ते का टाइम और दे दें। पूछ के लेते हैं, आपको प्रोएक्टिवली करना पड़ेगा ठीक है सर, बिल्कुल चक्रवर्ती जी। जी बिल्कुल, पूछने से नहीं होगा। मैं चला जाता हूँ, से मैं करके पूरा एफर्ट करके बताता हूँ अगली। श्री अविनाश जरगल, लर्नेड काउंसिल फॉर द अपीलेंट। श्री अशोक कुमार चक्रवर्ती फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 1। श्री पीसी जैन फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 8। श्री पीसी जैन फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 8। श्री टी.एस. लांबा फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 7 और रिस्पोंडेंट नंबर 7 लिखिएगा। It is Shri Chakravarti, Ashok Kumar Chakravarti again prays for time to make efforts to settle the matter amicably. On his request, he is granted 15 days time to do the needful. List on 2nd May 2013 or 23. जी कर लीजिए इसको। मैं कर देता हूँ। 2 महीने तक। जी सर, तो आप जब तक प्रोएक्टिवली नहीं करेंगे झगड़े में उलझ जाएंगे। जी जी मैं करता हूँ। इंट्रीम ऑर्डर है। I are to continue. Serial number 7, Shri Mohan Patel. That case है my lord. Issue notice, आपका शुभ नाम? मोहन पटेल। Shri Mohan Patel issue notice to the respondents on payment of PF by registered AD post. Returnable for दिखाइए, क्या इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ अवार्ड है क्या? Yes, my
Who is appearing for Oriental Insurance? कोई है क्या वकील साहब? ओरिएंटल के लिए लांबा जी, ओरिएंटल के लिए कौन आता है? जेंट्स बाकी है, बाकी भी है। मैं अभी न्यूली हूँ लॉर्डशिप, बिल्कुल नया हूँ। मैं खुद ही अच्छा, आप भी ओरिएंटल के लिए हो? ओरिएंटल के लिए हूँ, लेकिन बिल्कुल नया हूँ तो लॉर्डशिप। नए से क्या होता है यार? जी, अभी केसेस वहां से आए नहीं तो मेरे पास। लो ना ये केस जी। श्री टी.एस. लांबा एक्सेप्ट नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। सिर्फ एनहेंसमेंट का है तो ठीक है, इसको लोक अदालत में रख के कर देंगे। एक्सेप्ट नोटिस टू सीक इंस्ट्रक्शंस इन द मैटर that copy of memo of appeal be supplied to Shri T.S. Namba during the course of the day. Full stop. He may seek instructions to list this case in the forthcoming Lok Adalat on 13 मई 2023. दे दीजिएगा लिस्ट में लिख के फ्री सिटिंग के लिए। जी जी बिल्कुल, आज ही मैं कर दूंगा, आज ही। सीरियल नंबर 8 श्री मोहन पटेल। सेम इंजरी केस माय लॉर्ड। इंजरी केस है, लेकिन क्या कंपनी में डिले है माय लॉर्ड। कंपनी कौन सी है? कितने दिन का डिले है? 70। ठीक है, कंपनी कौन सी है? मेगमा एसडीआई जनरल। तो ये वकील है ना, देखिएगा श्री मोहन पटेल हर्ड ऑन IA 4652/2023। ठीक है ना, एन एप्लीकेशन फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले। श्री T.S. Lamba appears on advance notice. Delay of 70 days in filing the appeal for the reasons mentioned therein is condoned. Appeal is admitted for hearing. Notice is waived by Shri T.S. Lamba for respondent number 3. Since award is against the respondent number 3, comma, list this case in the forthcoming Lok Adalat. Not in form of direction, not to maybe given to me. अच्छा अच्छा, और नंबर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नोटिस ऐसा कर दीजिएगा। चलिए दोनों में ठीक है ना, काम बस आप कर। सीरियल नंबर 9 श्री संजीव पुली। पेमेंट अपील फॉर एनहांसमेंट। हाँ, इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है? नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। और उनको बुलाइए, DN शुक्ला जी को बुलाइए। तो सर इसके साथ एक अपील और लिंक कर दे, अराइजिंग आउट सेम एक्सीडेंट। कर देंगे भाई, पहले DN शुक्ला जी को तो बुला लीजिए। इसमें सर वो पे एंड रिकवर हो गया है। पे एंड रिकवर हो गया है ना जी। अच्छा, इसमें ओनर को भी नोटिस आएगा। जी। इशू नोटिस टू द रिस्पोंडेंट्स ऑन पेमेंट ऑफ PF पर रजिस्टर्ड AD पोस्ट within 3 days, returnable 4 weeks. Will kindly admit List this case along with appeal number MA number 1858 1858/23। कॉल फॉर द रिकॉर्ड। ऊपर वाले भी दोनों में रिकॉर्ड कॉल कर लीजिए। सीरियल नंबर 10 श्री निकेश कुमार जैन। Lordship, in this case, appeal, Learned Trial Court dismissed the claim case, Lordship. Delay in 24 days, Lordship. Issue notice to the respondents on IA 4967/23, an application for condonation of delay। कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है इसमें? United India, Lordship. यूनाइटेड के लिए कौन अपीयर होता है? आप हैं यूनाइटेड में? आओ। On our request, notice is accepted by Shri T.S. Lamba for respondent number 3. He may seek instructions in the matter. तो रिजेक्ट कर दिया इन्होंने। Lordship, पहला ग्राउंड तो डिले का था Lordship, और दूसरा ग्राउंड उन्होंने ये लिया था Lordship कि 108 गाड़ी से इसे सिहुरा लेकर के आए थे, सिहुरा लाने का कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया। चलिए देख लीजिएगा इसको, आप लगाएं, लोक अदालत में लगाते नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, लिस्ट ऑन लिस्ट इन द फोर्थकमिंग लोक अदालत। सीरियल नंबर 11 कुमार पांडे। मतलब इनहेंसमेंट की अपील, इंजरी केस। नेशनल इंश्योरेंस में किसी और को नोटिस देता हूं मैं। नेशनल में उनको दीजिएगा, DN शुक्ला। DN शुक्ला जी को कॉपी दीजिए। जी बुलवाओ, DN शुक्ला जी को बुलवाओ।
डीएन शुक्ला जी और इनको तीन लोगों को बुलवाइए। सुनो, डीएन शुक्ला, सोहाने साहब और वो मैडम बनर्जी, तीनों को बुलवाओ जरा, एक एक नोटिस तीनों को दे देता हूँ। डीएन शुक्ला का लिख लीजिएगा, एक्सेप्ट एडवांस नोटिस ऑन आवर रिक्वेस्ट, ठीक है ना। कॉपी ऑफ द अपील मेमो बी सप्लाइड टू श्री डीएन शुक्ला ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे। He may seek instructions in the matter list in the forthcoming लोक अदालत। Serial number 12, Sri Karti Mali. There's a delay of 22 days. ठीक है, कौन सी कंपनी है? आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। कहाँ गए लांबा जी? आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में आते हो ना? श्री टीएस लांबा ऑन आवर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट्स नोटिस heard on IA 5220/23. There is delay of 22 days. 22 days. This is unknown for the reasons इतना duly supported with an affidavit. Let copy of the memo of appeal be supplied to the learned counsel for the insurance company. तो खारिज हुई है यार जी, इसमें तो उनको भी नोटिस जाएगा। Notices be issued to the respondents number 1, 2 and 3, 1, 2, 3 and 5 on payment of PF by registered AD post within 7 days, returnable 4 weeks. All for the record. Serial number 13, Srimati Neema Di Goswami. कवर्ड मैटर है एमके यदु से। कैसे? एमके अब्यूज केस एनेक्चर P6 your lordship, and in similar matter honorable DB has passed an order in favor of the petitioner, annexure P3 may kindly see page मधुकांत यदु का मधुकांत यदु। कहाँ लगा है मधुकांत यदु? ये annexure P6 है your lordship, पेज नंबर 34, पेज नंबर 34 to 36, पेज 34 to 36 है your lordship। तो सेट का ऑर्डर है मैडम, हाई कोर्ट का ऑर्डर था। ऑनरेबल इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट की पिटीशन डिसमिस की। मैं काइंडली सी अगेन एन ऑर्डर में एनेक्चर ये ऑर्डर कर दीजिएगा। एनेक्चर P3 है लॉर्डशिप में काइंडली सी। इसका जो ऑर्डर है ये ऑर्डर कर दीजिएगा। हो गया पेज नंबर 27 में है। Serial number 14, Sri Rajesh Prasad Doge. आंध्रे जी, ब्लड पिटिशनर हेडमास्टर है मिडिल स्कूल क्लास 2 एम्प्लॉय, पनिशमेंट फॉर स्टॉपेज ऑफ 2 इंक्रीमेंट। कमिश्नर तक क्या हुआ है ना? आप तो जी मिला, कमिश्नर तक की अपील डिसमिस हो गई ना? हाँ, कमिश्नर ने फल कर दिया कलेक्टर की ऑर्डर ऑन पेमेंट ऑफ पीएफ by registered AD post within 7 days, returnable 4 weeks. ब्लड इंटरिम आई हैव आल्सो ट्रेड इंटरिम नहीं होता इसमें, अपील तक निरस्त हो गई, अब जब सबमिट करेंगे तब सब मिलेगा। चलिए, प्रेयर फॉर इंटरिम रिलीफ इज रिजेक्टेड। Serial number 15, ब्लड इसको रिजेक्ट न करके अरे नहीं ठीक है, क्या कर हम प्रेस नहीं कर रहे। जवाब आने दीजिए, जवाब आने दीजिए। इट्स रिजेक्टेड एज नॉट प्रेस्ड। चलिए, यस बताइए सिंह साहब। But the matter pertains to time pay scale, my lord. The petitioner was initially appointed as a CEO, my lord, in SADA, my lord. And later on, my lord, that has been abolished, my lord. And he was retired on from the post of commissioner. ये आपका रिप्रेजेंटेशन डिसाइड करने के लिए कौन देता है? My lord, my petitioner's contention is that petitioner is seeking upgradation of pay scale on completion of certain 30 years of service. Full stop. He has made a representation annexure P8 to the respondent number 2. He prays for a direction to the respondent number 2 to decide said representation through a speaking order. This innocuous prayer is not opposed by Shri Manaswani Verma. 15 days, 60 days. Serial number 16, Rahul Mishra. Order for the petitioner. Petitioner's grievance is that against the order of the punishment
petitioner has already preferred an appeal before the respondent number 2, but that appeal is pending since 19/11/2021. 19/11/2021 and has not been decided till date. Next para, this petition can be disposed of with the direction to the respondent number 2, that is the Principal Secretary, Cottage and Rural Industries Department, to decide the pending appeal within some reasonable time. 15 दिन में देंगे, 30 दिन में decide करेंगे, if not already decided. मतलब under Rule 23 of CCA rules करा दिए. I preferred an appeal under Rule 23 of CCA rules. जी, I oblige. Serial number 70. 15 दिन में fresh copy of the order देंगे और वो appeal decide करेंगे, if not already decided, within further period of 30 days of the communication of the order. Your Lordship, number 17, Sri Vastav Singh. Your Lordship, this matter is to be argued by the main counsel. My Lordship is adjusted today. ठीक है श्री, क्या मैटर क्या है ये? Your Lordship, on the last date of hearing, my lords have posed a query that in other exams conducted by UPSC, whether the scaling method is being used or not. Yes. But my lords, this is to be answered by the, will be finally argued by the main counsel. ऐसा नहीं होता है. आप क्यों आए हैं? Lordship, he's adjusted today. Adjustment. Shri Kaustubh Singh. Pranjal Tripathi. Pranjal Tripathi for the petitioner. Shri Machani submits that arguing counsel is on adjustment and he alone will be able to answer whether a scaling process has been adopted in past or not. Full stop. There is adjustment of the arguing counsel up to 10/4/2023. List this case on 11/4/2023, top of the list. A clear stipulation that no further adjournment will be admissible in favor of the respondent, Public Service Commission, and if counsel fails to appear or argue, then this court may be constrained to call for the personal presence of the Secretary of the Public Service Commission. 11 तारीख, top of the list. Serial number 18, Sri Shreyas Mohan Guru. My lord, in this case, the petitioner was initially appointed as a revenue sub-inspector at Shahpura, Nagar Parishad Shahpura district Dedori, my lord. Later on, my lord, he was बच्चा है, स्टे भी नहीं है. नहीं, स्टे नहीं. This is not a transfer matter, my lord. अच्छा. Later on, गलत लिखते हैं, क्या लिख रहा है? क्या मैटर है ये? मतलब, my lord, later on his services was directed to be absorbed by the Nagar Parishad Bahari. There was a policy of a state, the excess employee can be taken by the different Nagar Parishad. Nagar Parishad Bahari was not giving him joining. We filed a writ petition. In the writ petition, first time they have taken the objection that you have to submit your relieving slip, relieving letter and last pay slip from Nagar Parishad Shahpura. Nagar Parishad Shahpura is not giving my relieving letter and last pay slip, my lord. This is my only case. उनको direct कर देते हैं. That's it. As per Annexure P3, he is claiming. Petitioner's only claim is that petitioner was an employee of Nagar Parishad Shahpura. Full stop. He was deputed to Nagar Parishad Barai, district Katni. Full stop. His joining was not accepted on the ground that he was required to bring copy of LPC and relieving from Nagar Parishad Shahpura. Full stop. Shri Shreyas Mohan Guru submits that despite representation, Nagar Parishad Shahpura district Dindori is not issuing LPC and relieving in favor of the petitioner. Full stop. This petition can be, with the consent of learned penal lawyer Vijay Kumar Shukla, this petition can be disposed of with a direction to the respondent number 2 to consider petitioner's request for relieving and LPC within some reasonable time and decided through speaking order, and if there is no other impediment, then issue relieving and LPC in favor of the petitioner so that he may join at Barai district Katni. Next paragraph. Let this, if petitioner submits a copy of the order being passed today within 7 days from today, 7 working days from today, then decision will be taken by the respondent number 2 within further period of 30 days under communication to the petitioner. Great. Serial number 19,
श्री अभय पांडे praying for next week. नेक्स्ट वीक क्या होता है भाई? Ma'am, क्या मैटर है ये? कौन सा मैटर है? my lord, कोई रिटायर्ड टीचर वाला है ना, ये तो कवर्ड है ना, ये तो yes, इसको कर देंगे जी, इसमें रिप्रेजेंटेशन डिसाइड करना है। रिप्रेजेंटेशन। तो एडेड कॉलेज वाले है ना ये? हाँ, इसको भी हमने लिखा दिया, उससे कवर्ड है ये अमित को लिखा है, उसको दे दीजिएगा, एडेड कॉलेज कवर्ड मैटर। आकाश शुभ नाम डालिएगा। आकाश चौधरी। श्री आकाश, आपका शुभ नाम भी आकाश चौधरी है? अच्छा, श्री आकाश चौधरी में जूनियर लिखना शुरू करिए, नहीं तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। आकाश चौधरी जूनियर व श्री अभय पांडे। जूनियर ऑफ श्री अभय पांडे नहीं, आपके आगे ही जेआ लिखना शुरू करिए या 2 लिखना शुरू करिए। ठीक है, चलिए। अबाउट टर्म्स पिटीशन, ओपस पिटीशन सेम ऑर्डर हो जाएगा, कवर्ड मैटर से दिखा देंगे। चलिए, सीरियल नंबर 20 श्री सुधांशु कुमार सिंह। petitioner is seeking direction. Objection चाह रहे हैं। क्या चाह रहे हैं? Absorption in the regular employment, my lord, whereas his case is different. लेक्चर P4 my lord। P4 27/8/2013 पेज नंबर 14 my lord। क्या है? अतिशेष कर्मचारी के उसमें हमारा नाम है my lord, इसमें पेज 15 में सीरियल नंबर 6 कंसीडर करके डिसाइड कर दीजिए। my lord, similar order has been passed in lecture P7 पेज नंबर 19 एंड इनको नियुक्ति भी दे दी गई है इन लेक्चर P8 के। पर इनको दी गई थी वो प्रोबेशन पे उनको मिली थी, उसके बाद consider in the light of this order also. Petitioner's contention is that his case is similar to one Shri Akhilesh Shrivastava, who had filed WP 4770/2012, which was decided by a coordinate bench of this court, wide order dated 26/7/2016. Full stop. Shri Vijay Kumar Shukla submits that case of the petitioner is different from Shri Akhilesh Shrivastava in as much as Shri Akhilesh Shrivastava was appointed on probation, whereas petitioner was never appointed on probation. However, he is in agreement that a direction can be issued to the collector Riva to consider the grievance of the petitioner in the light of the judgment of coordinate bench dated 26/7/2016 passed in WP 4770/2012 and take a call, decide the same through a speaking order. 15 दिन, 60 दिन, this court has not expressed any opinion on the merits. Serial number 21 श्री विकास जोशी, भानु प्रसाद यादव। My lord, on the last date of hearing, my lord, on 21/2013, Lord sir, pleased to call for report from Tehsildar, my lord, regarding BPL status of petitioner, my lord. ये आ गया क्या? my lord, it is awaited. Shri Vikas Joshi, learned counsel for the petitioner. Shri Vijay Kumar Shukla, learned panel lawyer, submits that report of the Tehsildar Bahuri Band is still awaited. Full stop. Let the report be positively produced within 7 days, failing which Tehsildar Bahuri Band shall remain personally present. List on 18 अप्रैल 2023। Serial number 22 श्री जय शुक्ला, कमल सिंह बघेल। I'm praying for 1 week's time. इस बात के लिए आर्ग्यू काउंसिल जो है दूसरे कोर्ट में भेजी है। क्या हो गया? देखिएगा, शुभ नाम बताइए। देवराज विश्वकर्मा। देवराज विश्वकर्मा, प्रेज फॉर टाइम। श्री जगत सिंह फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 6। श्री विजय शुक्ला जी का नाम ऊपर लिखिएगा फॉर स्टेट। पिटीशन इज एडमिटेड फॉर फाइनल हियरिंग, लिस्ट फॉर फाइनल हियरिंग एज पर प्लीडिंग्स आर कंप्लीट, लिस्ट फॉर फाइनल हियरिंग as per his term and seniority in part B of the list.
ठीक है, पहले भी टाइम ले चुके हैं आप। रिजाइंडर के लिए ले चुके। ठीक है, चलिए अब ये पार्ट बी में आएगा। सीरियल नंबर 23 श्री दिनेश कुमार माथुर। So kindly pass it. पासवर्ड सीरियल नंबर 24 संजय कुमार गवार। माय लॉर्ड, इसमें एक आवेदन हमने पेश किया है मॉडिफिकेशन का। जी, एक एप्लीकेशन मॉडिफिकेशन की पेश क्या मॉडिफाई कराना है? क्या मॉडिफाई कराना है? सर मैं परयूस से लास्ट ऑर्डर आपको दे दूं। जी, इसमें क्या हुआ था साहब, ये जो एंट्री ऑर्डर हुआ है 4/12/2017 का, इसमें 17B के कंप्लायंस के लिए उल्लेख नहीं था, इस वजह से 17B का कंप्लायंस नहीं कर पाए, तो गलत। क्या हुआ एंटी मॉडल देखिएगा, दिखाइएगा जरा। 4/12/17 में 4/12/17 देखते हैं, पढ़ते हैं। ऐसा कोर्ट को लिखना जरूरी है क्या? नहीं, वो तो है नहीं, तो वही स्टैट्यूटरी प्रोविजन को कोर्ट की ऑर्डर शीट सुपरसीड कर देगी। नहीं, मेरी प्रार्थना सिर्फ वही है साहब कि 20,000 रुपये कॉस्ट हटा दे। नहीं, कॉस्ट भी हटा दें और सब मुझे समय दे दें, मैं कंप्लायंस कर दूंगा। इतनी कॉस्ट तो नहीं हटेगी, एक हफ्ते का समय देते हैं, कंप्लायंस करके आ जाइए। देयर इज नो नीड फॉर एन ऑर्डर, देयर इज अ स्टैट्यूटरी प्रोविजन। पर इसमें कोई ओपिनियन भी नहीं गया था, इसलिए नहीं किया तो डिपार्टमेंट की गलती है। डिपार्टमेंट को इतना कानून मालूम होना चाहिए। छोटा टाइम दे दूंगा, मैं आपको टाइम दे दूंगा, ना कॉस्ट हटाऊंगा ना कुछ और करूंगा। नहीं, आई एम रेडी टू आर्ग्यू दिस मैटर राइट नाउ इफ माय लॉर्ड। हाँ बिल्कुल करिए ना, कॉस्ट तो जमा करानी पड़ेगी, लेकिन आज तक की जितनी कॉस्ट है वो तो जमा करानी पड़ेगी। नहीं, 17B का भी कंप्लायंस करना है, मैंने बता दिया ऑफिसर। कितने दिन में कर देंगे 17B का कंप्लायंस? वो विद इन अ वीक। ठीक है, लिखिएगा श्री मानस मनी। कॉस्ट के लिए इसलिए निवेदन कर रहा था साहब कि वो चूंकि उस ऑर्डर शीट में नहीं था, इसलिए उनकी गलती होने के कारण। नहीं, उनकी गलती है, इसलिए हाई कोर्ट को लिखने की जरूरत नहीं है कि 17B की कंप्लायंस करें, वो तो साहब स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, कानून में ही है साहब। अगर हाई कोर्ट नहीं लिखेगा कि आप जाके दोपहर का भोजन करिए, तो आप दोपहर का भोजन नहीं करेंगे क्या? करना पड़ेगा। हाँ, चलिए एप्लीकेशन आइए नंबर 4697/2023 is dismissed as not pressed. Next, Shri Manas Mani Verma prays for and by way of indulgence granted 2 weeks time to make compliance of provisions contained in Section 17B of the ID Act. He shall also deposit cost within the same time. List in the week commencing 24 अप्रैल 1 मई 2023। चलिए 3 हफ्ते का टाइम कर दीजिए इनको कंप्लायंस के लिए। Serial number 25. if not complied with तो not complied with, so understood है। Not, I apologize for interrupting the Comlot 22 है before the court number 8. कोई बात नहीं, उन्होंने पास ओवर मांगना चाहिए था आपके जूनियर को, उन्होंने पास ओवर नहीं मांगा, एडजॉर्नमेंट मांगा, एडजॉर्न कर दिया उसको। Lord, I prepared immediately. कोई बात अब आएगा, आने दीजिए। Lord, it will take any week commencing. Then it will not take any. If Lordship is permitting, Lord, I argue it right now. नहीं अब नहीं, चलिए। No, I will argue right now. Sorry, चलिए। Serial number 25. My lord, in this case, my lord, I have challenged my lord annexure P1, my lord. Page number 13, my lord. ऑर्डर डेटेड 7/3/2022 को एक रिट पिटीशन के साथ कनेक्टेड होने का ऑर्डर किया था मैंने सर। अच्छा, पिटीशन नंबर है 3929। क्यों नहीं जुड़ी इसमें? कनेक्टेड नहीं है मेमोरी सर, सेम मैटर है, मैटर का वो हो गया, डिस्पोज ऑफ हो गया, को डिस्पोज ऑफ वो अलाउ पिटीशन। कहाँ है वो ऑर्डर? दे दीजिए। ये सर इसी में लगा है, ये है सेम मैटर। दे दीजिए, कॉपी दे दीजिए भैया। हाँ हाँ, पिटीशन नहीं, पिटीशन
जो ऑर्डर हमने चैलेंज किया है वो सेम ऑर्डर है जो कोर्ट ने वो किया है। सेम ऑर्डर कर दीजिएगा इसको। नंबर 26 श्री संजय राय। मतलब इसमें जवाब दो। उसमें रिप्लाई हम प्रेम करता है 17 से जवाब नहीं दिया और 17 से नोटिस के बाद लगा ही नहीं। कोई बात नहीं। श्री संजय रॉय लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर श्री जितेंद्र श्रीवास्तव लर्नेड पैनल लॉयर फॉर द state council is granted 3 weeks time to file reply subject to payment of cost of rupees 5,000 in the High Court Legal Services Authority Committee, failing which respondent number 3 and 5 shall remain personally present. List in the week commencing list on 4th May 2023. नंबर 27 श्री रियाज मोहम्मद श्री राजेश कुमार त्रिपाठी। For this case for non-payment of the pension to the contingency paid employees. As per their return process in the return, they say that he was regularized in 2013 and that superannuated on 18/1/2016. Therefore, he is not having the qualifying service as per 1979 rules, pension rules. Therefore, he is 1979 pension rules. 1977 the service condition rules and 79 pension rules. बताइए 25 साल नौकरी की है सर डिपार्टमेंट ने। नहीं 25 साल नौकरी नहीं की 10 साल की रेगुलर सर्विस चाहिए ना। वो दैट्स ट्रू लॉ पंजाब से मिलेगा बख्चाज एस्टेब्लिशमेंट में जी। शुक्ला साहब ये केस में मैंने आप उनको बोला आपको एडवांस नोटिस नेशनल के लिए आप आते हैं ना। जी सर। हाँ मैंने आपको एक नोटिस दिलाया है। केस नंबर मेरे ख्याल से जो है MA 1903 है। 1903 में दिलाया था ना जी। एक केस लगा है वकील साहब आपको देंगे नोटिस 1903 अब 2023 आज मैंने नेशनल के लिए है जी। उसमें आपको नोटिस एडवांस नोटिस दिया है जी। ले लीजिए इंस्ट्रक्शंस ले लीजिए लोक अदालत में देख लेंगे जो भी होना होगा। कर लेंगे आज करना तो आज पास ओवर करके नहीं इतना हाथ देखिए साथी है। हाँ प्लीज सर इसमें डीवी का डिसीजन है जिसमें क्वालिफाइंग सर्विस नहीं थी उसके बाद भी क्या कह दिया डीवी ने। इस केस में 94 से 2006 साल की सेवा थी। (82) की डेट के बारे में क्या खासियत क्या लिखा 82 को क्या हुआ था। 82 को क्यों काउंट किया 82 से 77 से क्यों नहीं काउंट किया 82 से क्यों काउंट किया है। फ्रॉम द डेट ऑफ देयर इनिशियल अपॉइंटमेंट से इनिशियल अपॉइंटमेंट तो 77 लिखी हुई है इसमें 1/12/77 को रोजंदारी पे रखा गया था जो आकस्मिकता प्रदत्त कर्मचारी के रूप में 5 साल की सेवा पूर्ण करने पर पद पर नियमित किए जाने के लिए पात्र था जी। तो इसलिए उन्होंने मान लिया। अब आप बताइए आप डेली वेज पे कब रखे गए और आपकी उसमें कंडीशन थी कि यू विल बी एंटाइटल्ड टू बी रेगुलराइज्ड ऑन कंप्लीशन ऑफ 5 years ऑफ सर्विस। हमारा अपॉइंटमेंट है सर 12/10/85 को। कहाँ है एनेक्सर। The document is not record, but I have mentioned in the petition. Mention से नहीं होता please bring that. No, उसको deny भी नहीं किया सर। नहीं they are not required to. I'll file this to you. Yes. Current counsel for the petitioner is required to file
copy of his appointment, initial appointment of order as a daily wager. सर्टिफिकेट है हमारे पास, तो इनिशियल अपॉइंटमेंट का तो ऑर्डर ही नहीं, क्योंकि ठीक है, जो भी कुछ है वो पेश करिए. Because he wants to take advantage of a division bench decision of this High Court in Shri Krishna Shrivastava versus State of MP and others 2003 का 4 MPLJ 376, for which he is required to show that he was appointed on daily wages and there was some condition for regularizing him on the post on which he was appointed as a daily wager on completion of 5 years of service as a contingency paid employee. Stop. Let this requirement be fulfilled, for which petitioner prays for कितने दिन में पेश करेंगे आदेश? 10 days time to do the needful list in the week commencing 1 मई 2023. मैडम आपको रिक्वेस्ट किया था भी नंबर आएगा आपको एक आध एडवांस कॉपी देंगे इसलिए बुलाया था. नहीं बस आपको बता देंगे ये. At the end of the day पूछ लीजिएगा जो भी कोई एमए आएगी. I'll give you some advance copy. My lord. Serial number 28, the Mahesh Patelia. लिस्ट आफ्टर 2 वीक्स, 2 सप्ताह के बाद हमें फाइनल होना वाला है. लीडिंग सर Shri Rajesh Kumar Tiwari prays for time. Pleadings are complete. List for final hearing. Petition is admitted for final hearing. List for final hearing in part B of the cause list as per its seniority and number. चलिए. मैम लिस्ट में आ जाएंगे. Serial number 29, Ajit Kumar Singh. शोकॉज नोटिस के खिलाफ आएंगे. लॉर्डशिप लाओ जजमेंट लाओ. शोकॉज नोटिस के अगेंस्ट पिटीशन इज नॉट मेंटेनेबल. Yes, lordship. बताइए दी. Lordship, first one is 1997 11 SCC, page number 316. लाए होना भैया दे दो ना. कौशल साहब आप किस किस कंपनी के लिए आते हो? किस किस कंपनी के पैनल पर हो? न्यू इंडिया, ओरिएंटल और यूनाइटेड. ठीक है. नोटिस अगर आपको कोई देंगे तो नंबर आएगा तो देंगे ही. ठीक है. This petition is filed. None for the petitioner. Petition is filed challenging the show cause notice dated 24/3/2017 passed by the respondents and further seeking compensation to the petitioner for harassment to the tune of rupees 5 lakhs. Next paragraph. Shri Takmeen Nasir and counsel for the respondents that this petition is not maintainable in the light of the law laid down by Supreme Court in the state of Punjab and others versus Ajit Singh 1997 का 11 SCC 368 wherein it is held that charge sheet containing charges based on documents served but charges yet to be proved by adducing evidence. Full stop. Examining of the merits of the charges and setting aside of such a charge sheet at this stage in its writ jurisdiction by the High Court on the ground that the charges were meritless was held to be improper. Is held to be improper. Full stop. Similarly, reliance is placed on the judgment of Supreme Court in Deputy Inspector General of Police versus K.S. Swaminathan 1996 का 11 SCC 498 where similar view is taken by the Honorable Supreme Court. Stop. In view of the judgments of Honorable Supreme Court in K.S. Swaminathan and Ajit Singh, this court is of the opinion that petition filed against the charge sheet is not maintainable when charges are yet to be proved.
My lord, in this Therefore, petition being bereft of merit deserves to be dismissed and is hereby dismissed. my lord, in this case, my lord, इनका नाम डाल दीजिएगा. टाइम से आना चाहिए वकील साहब. my lord, I am Later on, Shri Ajit Kumar Singh appears for the petitioner and prays for marking his presence. लॉ बहुत सेटल्ड है. चार्जशीट के खिलाफ petition मेंटेनेबल नहीं होती. जी चलिए. लेटर ऑन करके माफ हाँ लेटर ऑन करके डाल दिया. मैं लेटर ऑन को मैं अरे वो सही था. नेक्स्ट केस. दूसरे वाले केस में मेरा ग्राउंड है था my lord, कि चूंकि ही प्यून my lord, class 4 employee my lord, and charge sheet has been issued by the chief engineer who is the appellate authority my lord. कोई फर्क नहीं पड़ता. और उसमें जो है तो चार्जशीट में भाग दीजिए इंक्वायरी में. ठीक है ना. उसके बाद फिर बताइए. और रिटायर्ड भी हो चुका है. ठीक है. जब पनिशमेंट होगी तो बताइएगा. चलिए. बहुत दिग्गज. ठीक है. Serial number 30, Bhupesh. In this case, to weeks time can be granted to file rejoinder. There are certain documents. रिटर्न का फाइल हुआ था. ये रिप्लाई तो बहुत पहले फाइल 2018 ये इन्होंने ऑब्जेक्शन लिया है रिप्लाई में कि he has not pointed out as to who are the junior who have been regular. Now, I am aware of 2 cases where the orders were passed by this court and number of आप रिजॉइंड मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ. रिटर्न का फाइल हो गया. तो फिर आज रिजॉइंडर के लिए टाइम लेने का क्या औचित्य है. रिटर्न फाइल हुआ था 21/6/2018 को. रिप्लाई फाइल हुआ फाइल हो गया जी. आज 5 साल बाद क्या करेंगे इसमें. लास्ट डेट में इनफैक्ट KC Gildial, learned senior advocate, prays for time to file rejoinder to a return which was filed in June 2018. By way of intelligence, time is granted. Petition is admitted for final hearing. List for final hearing in Part B of the court list as per its turn and seniority. Serial number 31, Shri Amit Kumar Chaturvedi. In this matter, I am seeking a week time to file rejoinder law. Recently, respondent they have filed return on 6/3/23 law. जी. कब तक दिया है रिटर्न. 6/3/23. मार्च 2018. 23. तो फरवरी 2018 की डेट पड़ी है रिटर्न हो रहा है. आपने कब फाइल. अमित चतुर्वेदी साहब ने कॉपी भी रिसीव की है 5/3/18 को. यस मैडम. 5 सेम ऑर्डर करिएगा इसको. अभी आप ही थी ना. Gildial साहब वाले केस में आप ही ने लिखा था. सेम ऑर्डर करिए. Prays for time for a return which was filed in March 2018. Petition is admitted for final hearing. List for final hearing in Part B of the cause list as per its turn and seniority. शुभ नाम बता दीजिए आप. अतुल सिंह भारद्वाज. अतुल सिंह भारद्वाज जी. Serial number 32, Shri Chandrika Prasad Reddy, 32.1, Shri Akash Chaudhary. In this case, my lord, time to file reply, my lord, reply me. श्री आपका शुभ नाम बताइए. राजवर्धन सिंह. राजवर्धन सिंह for the petitioner. श्रीमती स्वाति असीम जॉर्ज, learned panel lawyer, prays, I'm sorry, learned deputy government advocate, Deputy government advocate, prays for time to file reply. Petition is pending since 2018. Subject to payment of cost of ₹5,000. 4 weeks time is granted to file reply. Failing which, नहीं बस 4 weeks time is granted to file reply. 32.1 में 2019 से इसमें भी 5,000 रुपए कॉस्ट लगाइएगा और वो सब लिख दीजिएगा टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द डिलिक्वेंट ऑफिसर, नॉट टू बी डेबिटेड टू द पब्लिक एक्सचेकर. Serial number 33, Shri Arun Kumar Soni, Suresh Gupta. जी बताइए. After notice, respondent not reply the case till date. And रिटर्न तो लगा हुआ है इसमें 4 और 5 का. तो 4 और 5 का लगा है, बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड. क्या मैटर क्या है थोड़ा बताइए. और मैटर बताइएगा पहले. 3, 4, 5 में ही तो है.
आप किसके एम्प्लॉई हैं? मैं तो एमपी भी है ना? हाँ एमपीवी की हाँ, इसमें जवाब आ चुका है। हाँ 1 और 2 और 3 में नहीं आया सर। 1 और 2, 3 का जरूरत है क्या, ऐसा बताइए। क्या है कि वो पहले वहाँ सर्विस करते थे, मतलब वहाँ के बाद फिर उन्होंने इधर एमपीवी ज्वाइन किया, मतलब तो वो सर्विस काउंट नहीं हो पा रही है, तो उनका रिप्लाई भी जरूरी है। वेयर इज मिस्टर हर्षवर्धन राजपूत? बुलाइए उनको। श्री, आपका शुभ नाम बताइए। KL जाटव। KL जाटव फॉर द पिटिशनर। Reply of respondent number 1, 2 is not available on record. Petitioner's contention is that petitioner was earlier an employee of respondent number 2. Later on, he joined services of respondent number 3, 4 and 5. Full stop. His past services are not counted for the purposes of computation of qualifying service. Yes. Therefore, reply of respondents number 1 and 2 is must. 1, 2 and 3 is must. Full stop. On request of this court, notice is accepted by Shri Harshvardhan Singh Rajput. He will seek instructions and file reply if necessary on behalf of respondent number 1, 2 and 3 within 4 weeks. So the second point is IA is pending for admission. ठीक। नंबर 34। आइए, किसकी इम्प्लीडिंग पार्टी की कौन सी दिखाइएगा, तो किसको पार्टी बनाना चाहते हैं। Heard on IA 3232/21, it is submitted that petitioner is no more. His wife be allowed to be substituted as the sole legal or heir. Full stop. This application is allowed. Let necessary correction be carried out within 3 working days. Thank you. Serial number 34, the Akash Chaudhary. Reply is awaited. Reply filed. Not there. Reply is filed on 17/3/2021. रिटर्न तो इसमें 2018 का लगा हुआ है। Yes. उसकी कॉपी भी रिसीव की है फॉर आकाश चौधरी 17/9/18 को। आपने 21 को कौन सा रिप्लाई फाइल कर दिया मैडम? मतलब 18 का फाइल है। 21 बोल रही वो Project may be kept in a passover round. पासओवर में क्या होगा? श्री राजवर्धन सिंह जी for the petition. He submits that return is not filed, but it is evident from the record that return was filed in September 2018 with a copy to Shri Akash Chaudhary. Full stop. क्या मैटर क्या है? रेगुलराइजेशन का Matter pertains to regulation. हाँ। Notes to the purpose of this circular issued by General Administrative Department. Guidelines were framed for the regularization of the employees who were working on a daily wages. 7-8 की लाइट में किया गया कुछ सर्कुलर जो Raised for him is granted 4 weeks time to argue this case, to show that he must argue this case on his request. Case is adjourned. Petition is admitted for final hearing. List for final hearing in part B of the court. Yes, Mr. Rajput. आइटम नंबर 33 है। इसमें कोई मिस्टर KL जाटव अपीयर हुए थे। इसमें यूनियन ऑफ इंडिया Because I have seen actually my colleague Mr. Vikram Singh, he was there. I will inform and verify. I don't know, मैंने आपको नोटिस दे दिए हैं, आप जवाब लीजिए। विक्रम सिंह जी बहुत बड़े वकील हैं, वो तो आते नहीं है। I will. और नहीं आप चाहते मैं जो है स्टेट के सेक्रेटरी को, यूनियन के सेक्रेटरी को डायरेक्ट लिख देता हूँ that nobody is appearing
and let them make their I am arrangement. very grateful, my lord. My lord has granted me this opportunity, Lord. Sir, I will take care of it. Highly obliged. So kind of you. Lord, I'm praying that maybe kept in the list, my lord. After 2. ठीक है, चलिए. 35 Sri Nitin Kumar Gupta. पे आदित्य शर्मा जी दूसरे कोर्ट में है, पास होकर के लिए रिक्वेस्ट किया है। अरे ठीक है, क्या है डेथ केस है ना, उनका नाम डाल देंगे. चलिए, सब तो पैरामीटर सेटल्ड है. किस तारीख का एक्सीडेंट है? 23/11/16 23/11/16. कितनी इनकम मानी है? इनकम मानी है 8,435। हाँ, और ऑनरेबल का जजमेंट है, उसमें स्किल्ड माना चाहिए. स्किल्ड की इनकम है 9,185। बीएससी 9,185 पैरा 24 ऑफ द अवार्ड. हाँ, इसमें आया कि ये तो सत्य है कि एग्जिबिट 18 से 25 तक बीएससी उत्तीर्ण का व्यक्ति था. ठीक है, चलिए. तो आपने बीबीए में माना है स्किल्ड. ठीक है, चलिए. दूसरा इसमें 1/4 लगेगा. 6 डिपेंडेंट है, फादर को छोड़ भी देंगे तो मदर, वाइफ और बच्चे. चार है ना भाई? 5 है सर. अगर फादर को छोड़ भी देंगे हाँ, तो वाइफ, 3 बच्चे और माँ. 4 हो गए ना. तो 4 में भी तो 1/4 ही होगा. 1/3 लगाया. 1/4. और तीसरा सर, एज पर नानूराम 40,000 पर हेड 3 बच्चों को मिलेगा. ठीक है. This appeal is filed by the claimant being aggrieved of award dated 10/1/2019 passed by Planet 13th Additional Motor Accident Claims Tribunal Bhopal in MACC number 2341/16 on 3 grounds, namely was disease Suresh Sisodia was a skilled worker having qualification of BSc, yet tribunal has computed his income fitting him to be an इनकम होगी 9,185. आपका जजमेंट है बीएससी बीबीए का स्किल्ड मानेंगे. इनकम माना है, स्किल्ड कम माना है, इनकम कम माना है. स्किल्ड कम माना है, इनकम 9,185 डेट ऑफ एक्सीडेंट. हमारे पास तो ये दूसरा चार्ट लगा है. डेट ऑफ एक्सीडेंट है 23/11/16. 23/11/16 को 9,185. 9,185. यस. हाँ, चलेगा. सर वो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट वेरी करता है. कोर्ट ने उसको लिया है. भोपाल डिस्ट्रिक्ट को गांव छोड़ना है. नहीं सर, तो वो कोर्ट ने वही लिया है ना. छोड़िए इसको. क्या लिखा? at rupees 8,435 per month against the prescribed minimum wages for a skilled laborer of rupees 9,185 per month. Full stop. Second ground is that 1/4 deduction should have been made. Tribunal has arbitrarily made 1/3 deduction. Full stop. Third ground is that in the light of Nanu Ram and Satvinder Kaur, minor children should have been allowed a sum of rupees 40,000 each on account of death of the sole breadwinner, on account of death, on account of loss of parental consortium, and that has not been awarded. Next para. Shri Aditya Narayan Sharma supports the award and submits that no indulgence is required. So disease was a casual labor as per the admission of the claimant. ठीक है, इसमें अब स्किल तो लिखा दें. ठीक है, लिखा. About and submits that disease was a casual labor. Next para. Taking this fact into consideration, a disease was possessing qualification of BSc and was working in a gas agency, and he has been accepted to be a skilled laborer by the tribunal. That finding does not call for any interference. Full stop. Thus, when income of rupees 9,185 prescribed under the minimum wages act is taken into consideration, then annual income will come out to rupees 1,10,220. Full stop. 25% is to be deducted towards the living expenses of the disease. Full stop. क्या एज क्या थी डिजीज की? Sir, 26 as para. Stop. Para 17. It was 26 years of age. 40% is to be added towards the future prospects, and then multiplier of 17 will be applicable.
17 will be applicable, taking total pecuniary compensation to rupees 19,67,427, over and above which claimants are entitled to a sum of rupees 70,000 under non-pecuniary head, and further sum of rupees 80,000 at the rate of rupees 40,000 per child for loss of parental consortium, taking total compensation to rupees 21,17,427 against a sum of rupees 16,75,922. 29. Para 16,75,929. Thus, there will be addition to the tune of rupees 4,41,498, to which claimants will be entitled to. Full stop. This additional amount will also carry interest at the rate of 7%, as has been awarded by Learned Claims Tribunal from the date of filing of the claim petition till the date of actual payment. Other terms and conditions shall remain intact. This additional awarded amount shall remain invested in monthly income scheme or fixed deposit receipt of Indian Post Office / Nationalized Bank till the minor children attains the age of majority. My presence for respondent insurance. आदित्य नारायण जी का नाम लिखा है ना? Serial number 36. मतलब इसमें आईसीआईसी का कंपनी है, मतलब इसमें इनको नोटिस दे देते हैं ना, लिखिए श्री BR विजयवार, भोजराम विजयवार for the appellant. इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ अवार्ड है ना? Notices are accepted by Shri Aditya Narayan Sharma for the respondent insurance company, namely ICICI Lombard Insurance Company Limited, Jabalpur. एड्रेस चेंज हो गया मतलब इसमें। ठीक है, अरे भाई जब ये नोटिस दे रहे थे एड्रेस का क्या मतलब है? Full stop. Shri Aditya Narayan on our request accepts notice. He may seek instructions to list this case in the forthcoming Lok Adalat. So registry to direct reflect. क्या रजिस्ट्री को क्या डायरेक्ट करना है? So नाम reflect कर दें. रजिस्ट्री इज डायरेक्टेड टू रिफ्लेक्ट नेम ऑफ श्री आदित्य नारायण. आपके पास तो वकालतनामे रखे रहते हैं ना? नहीं सर, रखे नहीं रहते हैं, आते हैं केस टू केस बेसिस आते हैं जी. जो अलॉट होता है उसी में आता है, रखे नहीं रहते. नंबर 37 श्री प्रमोद सिंह तोमर है क्या? अरे हाँ, इनको बुला लीजिएगा. मिस्टर शर्मा इधर आइए. ये लंच में इनका केस देख लीजिए. 2 केसेस में डॉकेट की कुछ गड़बड़ी है, वो पूरा करिए उसकी. मीट है जी. सीरियल नंबर 37 प्रमोद सिंह तोमर 2013 में रिटायरमेंट हो गया था, उसके बाद इन्हें रिकवरी करी 78,342 की. उसमें स्टे हुआ, स्टे होने के बाद कंटेम लगाया, हमने पैसा वापस कर दिया, लेकिन इंटरेस्ट नहीं दिया हमारी बात. ऐसा जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट. जी. पैसा दे दिया मैंने. कब रिकवरी हुई, कब दिया? ये रिकवरी हुई थी 13 से 15 तक, उसमें लिखा है ऑर्डर में उनने, और उसमें 21 महीने वापस कर दिए. लिखिएगा. Petitioner's grievances that petitioner attained age of superannuation from the post of one Kshetrapal. Yes, protection from the office of DFO South Forest Division Balaghat. Full stop. Against him, post retirement recovery of rupees 70353 was made with effect from 1/8/2013
to 31/7/2015. Full stop. When petitioner had filed contempt case number 179 of 2021, then said amount was refunded to him on 23/12/2021. Full stop. Now petitioner is claiming interest on this amount which was illegally withheld by the respondents in terms of the law laid down by Supreme Court in Vijay L. Mehrotra versus the state of UP and others, reported in AIR 2000 SC 3513. ये किताब निकाल के देखिए भाई, judgment, wherein Honorable Supreme Court has equivalent citation लिख लीजिए 2001 का 9 SCC 687 has directed to refund such amounts with 18% interest. Next para. It is pointed out that there is a finance department circular which authorizes payment of interest at the rate of 8% on delayed payments. Taking these facts into consideration, this petition can be disposed of with a direction to the respondents to refund to pay interest at the rate of 8%. अरे साहब 8% with effect from 31/7/2015 till 23/12/2021 when the amounts were actually refunded to the petitioner. Let this exercise be completed within 60 days of receipt of certified copy of the order. इसको नोट करिए भाई. Payment of interest on delayed release of retirement benefits. Serial number 38 CKD6. डॉक्यूमेंट निकाल के दे जो भेजे चाहिए. ये बताइए ये किस चीज का अपॉइंटमेंट है? Lordship, this is the आंगनवाड़ी वर्कर अपॉइंटमेंट. रिकॉर्ड है इसमें? नहीं है रिकॉर्ड सब बुलवा लेता हूँ. लिखिए. श्री कैलाश देव सिंह, लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर. श्री पीयूष भटनागर, लर्नेड पैनल लॉयर फॉर स्टेट. श्री एसपी मिश्रा फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 8. Shri Piyush Bhatnagar is directed to call for the record of selection of Anganwadi Karyakarta for the village Good, Lordship. Good. Lordship. But जनपद पंचायत में. जनपद पंचायत गुड. विलेज का नाम बताइए. वार्ड नंबर 10 गुड. For ward number 10, Good, District Riva. Let record of the selection be called for list in the week commencing 8 May 2023. Serial number 39 Sanjeev Kumar Singh, Ram Subal Chaturvedi. Pleadings are completed, madam. We probably on क्या मैटर क्या है ये? किस का मैटर है? ये कंप्लेन, ये हमारा नंबर 2 में है लॉर्ड. पहला ये संजीव सिंह का है जो कंप्लेन किए थे. किस चीज का अपॉइंटमेंट है? अपॉइंटमेंट है, कंपनसेट अपॉइंटमेंट है. अच्छा लिखिएगा. नन फॉर द पिटिशनर 39 में लिखिएगा. श्री राम सुफल चतुर्वेदी फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 7. श्री पीयूष भटनागर फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 6. 39.1 में श्री राम सुफल चतुर्वेदी फॉर द पिटिशनर. श्री ये बताइए, आ गए, इनका नाम डाल दीजिए. किस चीज का अपॉइंटमेंट चैलेंज कर रहे हैं आप? माय लॉर्ड, अपॉइंटमेंट एलडीसी का है. एलडीसी. हाँ, किस ग्राउंड पर? माय लॉर्ड, किस ग्राउंड पर चैलेंज कर रहे हैं? post was not available, my lord. The post was reserved for, my lord, the ST category, my lord. ये तो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट है ना. आप कौन है? आप कौन है?
आप क्या रिजर्व कैटेगरी के हैं क्या? No, my What lord. is your status to challenge his appointment on compassionate grounds? My lord, on the basis where we have, my lord, who were आपको क्या हुआ असुविधा हुई? वो वारंटो क्वालिफिकेशन के संबंध में रहता है. Compassionate appointment में there is a government circular that the norms can be relaxed. my lord. And this is the judgment of Supreme Court also. My lord, yes, बताइए my- कंपैशनेट अपॉइंटमेंट में आप 2 चीजें बता दीजिए बस, और नहीं तो पिटीशन वापस ले लीजिए इसके पहले कि हम कॉस्ट लगाएं. 2 चीजें बता कन्विंस कर दीजिए कि कंपैशनेट अपॉइंटमेंट में भी रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स लागू होते हैं. my lord. My lord, it may taken pass over. नहीं Pass over में कर देना. नहीं वकील साहब, नहीं. फाइनल हियरिंग का डे फाइनल हियरिंग अफेक्ट होती है तो निवेदन कर रहा हूँ कि पास ओवर का सुन लें, my lord, इतना निवेदन. तो फाइनल हियरिंग अफेक्ट होती है ना. फाइनल हियरिंग कब सुनेंगे? इसको मंडे को कर दें, my lord. नहीं आइए पास ओवर में आइए, my lord. पास ओवर में रखिएगा अभी. my lord. बता दीजिएगा अपना लोकस भी बता दीजिएगा और जजमेंट बताइएगा कि कंपैशनेट अपॉइंटमेंट में रिजर्वेशन पॉलिसी लागू होती है. और नहीं बताएं तो मानसिकता बनाकर आइएगा, विदाउट वेस्टिंग टाइम इसको विड्रॉ कर लीजिएगा. my lord. Serial number 40. This is a matter of equal pay, my lord. So the reply of state is awaited on. परमानेंटली क्लासिफाइड एम्प्लॉई है क्या है? No. These are junior engineers, my lord. These are appointed in the year 2018. Now the 2017 appointed junior engineers are appointed in different pay scale, higher pay scale, and we are appointed in a lower pay scale. They are working. They are holding the same post, doing same work. Everything is same. Lord, even as per the advertisement, the salary that was offered in the advertisement, that is being paid to them. And that is different. And there is equal pay for equal work का प्रिंसिपल जो है वह तो बहुत सेटल्ड है. काम अलग अलग कर रहे हैं क्या दोनों? नहीं, काम तो वो है जूनियर, दोनों जूनियर इंजीनियर है, एक ही काम है ना. जूनियर इंजीनियर ही है, उसमें तो कोई डिनाइल नहीं है. सेम पे स्केल में लेगा. The state government has issued directions for regulating the pay, and based on those directions, my lord, what are the directions? Please show the directions. Lord sir, may kindly see my reply. Lord, annexure R2. R2, yes. Page 18. Page 18. Now, this is the instruction that the power management company had sent us. What is that? That for all new recruits, the guidelines will be common for all the companies of under the electricity department. The process, methodology, and various for new recruitments is under consideration. Yes. For which shall be issued in due course. So to avoid any disputes or legal issues, all recruitment process be stayed or on as is where is. इससे क्या मालूम पड़ेगा? And इसके बाद page 19 may be seen. Page 19, yes. This is by the state. क्या कहा? निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में कंपनी द्वारा की जाने वाली समस्त नई भर्तियां संवर्ग हेतु पदोन्नति पर वेतनमान आदि राज्य शासन के उक्त संवर्ग के वेतनमान के अनुसार निर्धारित किया जाए. वेतनमान पर कंपनी के संचालक मंडल के आवश्यक रूप से अनुमोदन प्राप्त किया जाए. And based on this, the advertisement was issued. And in the advertisement itself, it is mentioned that they will be paid 32,800. Page number? This is page 12. Page 12 of your return? Of my return. Yes. This is clause number 16. Yes. And junior engineer, electrical distribution, pay scale is 32,800 to 1,03,600. But this is on the basis of this advertisement only the payment is being made to them. नहीं, ये तो बोल रहे हैं, ये तो बाद के लोग हैं. ये बोल रहे हैं कि इनके पहले जो नियुक्त हुए थे 2016 में 2017 में उनको हायर पे स्केल पे नियुक्त किया गया. We were appointed, my lords. We came to know that our just next senior, एक साल पहले वाले जो 17 वाले, they are being paid 36,000. बता दीजिए किस ग्राउंड पर हो गया ये पे स्केल अलग अलग कैसे होगा? राज्य शासन का कौन सा ऐसा निर्देश है ये तो बता दीजिए. आपने R3 तो लगा दिया, निर्देश तो बता दीजिए राज्य शासन का. But then I'll file it. You will not file anything extra now. But there is a violation of principle of equal pay for equal work. ठीक है, वो जो सीनियर है उनको एक इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन पे स्केल तो वही रहेगा. देखिएगा, petition is filed seeking direction that petitioners discrimination meted out to the petitioners be
set aside in as much as petitioners who were appointed as junior engineers pursuant to an advertisement issued in the year 2017, which petitioners were given appointment in the year 2018 as junior engineer within bracket electrical distribution. Their pay band is fixed at rupees 32,800 dash 103600 within bracket level A, whereas persons who were appointed a batch earlier are being given pay scale of rupees. That is Page number P7. P7. Page number 54. G 54 only. Here the pay scale is mentioned as page 57. 9,000 have been given pay band of rupees 9,300 dash 34,800, which has been revised to अटल साहब आप लोग देखिए 9,300 to 34,800. 34,800 लिखा, which is revised to with grade pay of 4,100. with grade pay of 4,100. Full stop. Petitioners' grievances that since they are also working as junior engineer, they should be given the same pay scale as has been revised for the earlier batch and earlier batch. Full stop. Next para. Though Shri Aditya Mandekar submits that there are orders of the state government as contained in Annexure R3 to regulate the pay scales for various cadres in the Power Management Company Limited, but he has not brought this exact guidelines for fixation of pay scales and how a different pay scale could have been prescribed for the newly recruited persons, which is admittedly lower than the persons who were recruited a year back. Full stop. Taking these facts into consideration and the law laid down by Supreme Court in comma, this court is of the opinion that principles of equal pay for equal work will be applicable, and therefore petitioners are also entitled to be given the same pay scale of rupees 9,300-34,800 with grade pay of 4,100 as is admissible to other similarly situated junior engineers. Full stop. Junior engineers as revised from time to time. In above terms, petition is disposed of. Let necessary proceedings be carried out within period of 60 days from the date of receipt of certified copy. Lordship, I am for 1 to 3, Lordship. 1 2 3 डाल दीजिएगा. Serial number 41 से सत्यदार मिश्रा. Document लाए हैं क्या आप? मतलब I supply. जी. Reply is still awaited. Received. Vikas Kumar Sharma. Vikas Kumar Sharma, learned counsel for the petitioner. Reply तो already filed है sir. But they did not supply the copy. नंबर 21 को कॉपी दे देता हूँ. Let copy of the return filed on record be applied to the petitioners. इस पर क्या है grievance आपकी? But in this case, my lord, petitioner has been directed by the district education officer Anupur, my lord, to appear in the examination afresh, which is going to be held in March 2021. Let rejoinder, if any, be filed within 4 weeks list thereafter. My lord, IR to continue. IR, if any, to continue. Serial number 42 पे दिनेश कुमार उपाध्याय. I have extra copy, my lord. I have already subscribed. पावती ले लीजिए उनसे. No. List in the week commencing 8 मई 2023. ये बताइए. So this petition is pending since 2021, but reply is still awaited. I am praying for weeks time for it. आपका शुभ नाम बताइए. Abhishek Dubey. अभिषेक दुबे और इनका नाम डाल के 4 weeks time to file reply. List after 4 weeks. चलिए. Serial number
43. किस चीज पे एब्जॉर्प्शन चाह रहे हैं आप दुबे जी? सर ये है तो इनका लोकस उनका नहीं है, या कुछ स्कूलें थी प्राइवेट, वो फिर बाद में एब्जॉर्ब गवर्नमेंट ने ले ली थी सर। तो बैक डेट की जो नौकरी का है जॉब्स बैक डेट से चाह रहे हैं। जवाब दे दीजिए आप। जी सर। रिप्लाई तो ये रिप्लाई तो है फाइल है, लेकिन सप्लाई कर let copy of reply be supplied by Shri Devdutt Bhave during the course of the day. Petitioner, if so advised, may file rejoinder within further period of 4 weeks list thereafter. Event number 44. Deepika Singh का क्या मैटर है? मैटर होमगार्ड्स का जो है टर्मिनेशन का रिटर्न हैज बीन फाइल्ड। जी Matter time for the connected contempt matter. सुनते हैं इसको फाइनली फिर किसी का pleadings are complete. List for final hearing in part B of the cause list as per its run and seniority. We have to file an application of vacating of interim order. क्या है? Because they have a remedy of appeal under Rule 26. दिखाइएगा वो, दिखाइएगा। Matter thrice and fourth has come before this honorable court. क्या है बताइए? And without applying that, where is the impugned order? P14. P14. Page number? Page number 61. क्या है order? इस जिले के सैनिक क्रमांक कितना इतना कार्यालय डिवीजन कमांडेंट होमगार्ड सागर समाचार आदेश क्रमांक कितना इतना 9/6/2017 के पालन में इस कार्यालय के तत्कालीन प्लाटून कमांडर श्री विनीत तिवारी पर झूठे एवं बेबुनियाद आरोप लगाने, मानसिक प्रताड़ना, मानसिक व्यक्तिगत एवं भावनात्मक रूप से प्रताड़ित करने, पुनः नामांकन कमेटी होने पर मेडिकल एवं पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने, मध्य प्रदेश होमगार्ड नियम 2016 नियम 23 की उपखंडिका 100 एंड 100 में दोषी पाए जाने के फलस्वरूप निर्देश किया गया था। उक्त सैनिक तत्संबंध माननीय उच्च न्यायालय से स्टे लेकर ड्यूटी पर उपस्थित हुआ। तत्संबंध तो ऑर्डर अपीलेबल है ना? इस ऑर्डर की अपील की है आपने? इनफैक्ट मतलब kindly appreciate the अपील करी नहीं करी आपने? इसकी अपील तीन चार बार हाई कोर्ट आ चुके हैं। हाई कोर्ट आए होंगे आप? नेचुरल जस्टिस हैज नॉट बीन अप्लाइड। अपील करी है, अपील को डिसाइड करने के लिए बोलते हैं लेट द अपील बी डिसाइडेड। जब तक स्टे रहेगा आपके पक्ष में, ठीक है, लिखिएगा। श्री S.P. Mishra, learned counsel for the petitioner. Petitioner is aggrieved of order dated 25/3/21 passed by the district commandant Home Guard Sagar. Full stop. Shri Devdutt Bhave submits that appeal is provided under Rule 26. Rule 26 of the Home Guard Madhya Pradesh Home Guard Rules 2016. Full stop. Petitioner has not filed appeal. Full stop. This petition is pending since 2021. There is a stay operating in favor of the petitioner. Therefore, this petition can be disposed of with the direction that petitioner shall file an appeal within 15 days from today. And if such appeal is filed before the competent authority, then without adverting to the aspect of limitation, the appellate authority shall consider and decide the appeal within further period of 60 days through a speaking order after affording the opportunity of hearing to the petitioner. Till then, order of status quo granted by a coordinate bench shall continue. Full stop. क्या सुनते क्या हैं आप? क्या लिखा है मैंने? स्टेटस कंटेम्प्ट में क्या बचा? Lord, the contempt order has been complied. It was removed. हाँ ठीक है, कंप्लायंस हो गया ना, लिखिएगा। कंटेम्प्ट में लिखिएगा सत्यप्रकाश मिश्रा, लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटीशनर। श्री, आपका शुभ नाम बताइए। Priyank Shandil. Priyank Shandil submits that compliance of the order is already made. Full stop. In view of the fact that compliance is already made, nothing survives for showing indulgence in the matter of contempt petition. Rule is contempt proceedings are dropped. Rule is discharged. चलिए next case. This situation earlier also it was not honorable court was observed that the
आप अपील करिए, आपको तक स्टे का दिया है। 45 श्री मनोज कुमार अध्यक्ष। Applications were invited for the post, not for teacher eligibility test. Petitioner applied for the same lot and she was declared as qualified lot. That is annexed lot P9 page 20. Page 28. P9 page 28 lot to be qualified lot. Now in the final list lot, the very next page, page number 29. Page number 29, very next page. The finalist it says on hold lot. So her result was withheld lot. Final why it was withheld? It was withheld. The controversy in this matter lot that she belongs to SC community lot. Falls within the Mahar community of SC lot. She was earlier residing in Chhattisgarh lot in Rajanandgaon. The bifurcation took place lot. She got married to husband lot. She was a resident of Madhya Pradesh. But Mahar community has been notified in SC lot in Chhattisgarh as well as in Madhya Pradesh. So they say not because you earlier belonged to Chhattisgarh, the benefits of that community lot that cannot be granted. And your marriage has taken place with the person who belongs to Mahar community. Mahar community in Madhya Pradesh, my lord. That is the only dispute. Last date, not the court had granted time to the state not to go through this judgment. It can be disposed of in the later. Aditya P. Singh, learned counsel for the petitioner. Shri Devdutt Bhave, learned panel lawyer for the state. I am for the point number 4. Tabrij Ahmed. Tabrij Sheikh. और Respondent number 4 man. सैयद के बाद शेख आते हैं, फिर अहमद आते हैं। जी, ऐसा ही है ना? श्री सिद्धार्थ नरूला for respondent number 5. Siddharth Narula for respondent number 5. ठीक है, with the consent of the parties, especially Shri Devdutt Bhave, that decision of the division bench passed in WP 9400/21 decided on 21/2021 will govern the outcome of this case. Our petition is disposed of in the same terms. It is made clear that the said order dated 21/2021 passed in WP 9400/21 shall apply mutatis mutandis to the facts and circumstances of this case. Serial number 46. Shri B. Jonas Yadav. These petition replies Sahu. 4 and 5 are the contesting. Adil Bari. Adil Bari. Adil. Shri Adil Bari, learned counsel for the petitioner. My lord, sir, one IA is also pending for amendment. Achha. Heard on IA 9689, but in 2022, same is allowed. Let the amendment be carried out within 3 working days. Next para. Shri Devdutt Bhave prays for and is granted 4 weeks time to file reply. Let's after 4 weeks. Although my lord, the respondent 4 and 5 are the main contesting parties. 4 and 5 को कौन present करता है? My lord, राजकुमार साहू, द्वारका प्रसाद वर्मा। क्या प्राइवेट डिस्प्यूट है क्या? सैलरी के रिलेशन में सैलरी पे नहीं करी। सरस्वती शिक्षा परिषद नाम से चलते हैं। तो उनके लिए कौन आ रहा है? ये नोटिस इश्यू हुए नहीं हुए अभी? 4 and 5 के लिए कौन आ रहा है? सर द्वारका प्रसाद वर्मा, सुनील कुमार गुप्ता, संजय कुमार कोटे। लिखिए none for the respondent contesting respondent number 4 and 5, though their names are reflected in the cause list. If they so desire, they may file reply within 4 weeks, failing which they may be proceeded ex parte. Serial number 41. Siddharth Kumar Singh. Petitioner is challenging on the benefit fees order. चीज का है ये रोजगार सहायता की बनवाई। क्या हुआ आपको हटा क्यों दिया? समाप्त करते रिकॉर्ड बुलवा लीजिए मैडम इस पे।
Sudhanshu Singh, learned counsel, Sudhanshu Kumar Singh for the petitioner, Srimati Swati Asim George, learned deputy government advocate for state, praised for time to call for the record of the disciplinary proceedings against the petitioner. Let record be called for within 3 weeks. List in the week commencing 8 May 2023. Serial number 48, Shri Rakesh Kumar Jain, Shri Julian Shukla. बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बताइए ना, ग्राउंड बताइए ना। कंडेंसेशन ऑफ डिले की अभी अर्जी है, अभी वो डिसाइड नहीं हुई है और मेमो अपील हुई नहीं। तो डंपर जो है, डंपर खड़ा था बीच रोड पर, इससे जाके एक बुलेरो गाड़ी जो है वो टकराई। तो ये किसके? ये डंपर की तरफ से। हाँ तो सॉरी, हाँ डंपर की तरफ। तो उसमें और आप बुलेरो के हैं? जी, तो उसमें कोर्ट ने कह दिया कि डंपर जो है वो उसका नेग्लिजेंस है और डंपर के ऊपर यूनिवर्सल क्या इंश्योरेंस कंपनी जो उसके ऊपर लायबिलिटी डाल दिया। उनका कहना है कि चूंकि क्रिमिनल केस हमारे ऊपर नहीं बनाया, बुलेरो वाले के ऊपर बनाया। कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस नहीं, कंट्रीब्यूटरी भी नहीं होगा वो नक्शे में, और कोर्ट ने फाइंडिंग ये दी है, बीच सड़क में विदाउट सिग्नल ये खड़ा था, इसलिए नेग्लिजेंस इसका। और रात के 2 बजे का एक्सीडेंट है, 1:30 बजे 2 बजे। एक आध हफ्ते बाद चल रहे थे। पास ओवर में देखते हैं क्या, 5-2 मिनट का तो केस है, खत्म करेंगे इसको। चलिए पास ओवर रखिए। नहीं, वो जजमेंट मांगेंगे ना, आप इस क्वेश्चन की वो नहीं है, वो देंगे, नितिन जी देंगे जजमेंट होने। Number 49, Satya Islama. At the outset, may I submit, Milord? We have also challenged this award, Milord, in the form of a company appeal. Because I am paying the Company Milord, I am appearing for the respondent number 6 in this case, Milord. That is the United India Insurance Company, Milord. We have also filed the appeal challenging the same award. नंबर क्या है उसका? Milord, the number is MA 6295/2020. लिस्ट दिस केस 6295/2022 दे दीजिए along with MA नंबर इतना इतना। चलिए नितिन जी वो देख के दीजिएगा, रात को 2 बजे डंपर खड़ा है, आप दे दीजिए अंधेरे में बिगर सिग्नल के। है ऑलरेडी है। In this case, any week commencement. अच्छा चलिए वीक कमेंसिंग दे दीजिए 1 मई 2023। Serial number 50, Shri Monesh Sahu. ये लोक अदालत में सेटल हो सकता है क्या लांबा साहब? दो कंपनियों की लायबिलिटी, लांबा जी की और लॉर्डशिप इसमें क्या है कि एफआईआर केवल इनके खिलाफ हमारा कोई नाम ही नहीं था। 1 महीने बाद वो एक ऐसा आके बस ने टक्कर मारी। तो लोक अदालत में आएगा नहीं आएगा? लॉर्डशिप मेरिट पे है। मेरिट पे ठीक है। Serial number 50, Shri Monesh Sahu. Lordship, I am praying 2 weeks time to file reply. आपको चुनना श्री हैरी मामूरिया फॉर द पिटिशनर, श्री अतुल द्विवेदी learned panel lawyer praised for and is granted 4 weeks time to file reply. List after 4 weeks. Serial number 51, Ajit Kumar Singh. मानो रिजवाइनर इसने फाइल कर दिया। इसमें एडिशनल रिटर्न की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के बाद जो रिकवरी अमाउंट किया गया था वो साथ ही जो एम्प्लॉइज थे उसे रिकवर किया जा रहा है। उसके संबंध में मैंने रिजवाइनर में डॉक्यूमेंट भी लगाए, तो जो उसके संबंध में इन्हें एडिशनल रिटर्न फाइल करना। तो ये डिसाइड करेंगे कि आप डिसाइड करेंगे? सर मेरा निवेदन है, सेक्शन जॉर्ज साहब क्या डिसाइड किया आपने? मतलब एडिशनल रिटर्न फाइल करना है कि मतलब just now I received the file, मतलब I'm just praying that just now मतलब because file was displayed by in morning, मतलब right now I made a B copy from फाइल एक दिन पहले नहीं आती कि आपकी? आ गई थी मैम, वो सर सुबह सुबह पता नहीं मिसप्लेस कैसे हुई सर। पढ़ने के बाद मिसप्लेस हुई कि बिगड़ पड़े मिसप्लेस हो गई? पढ़ चुके थे ना, तो फिर मालूम होगा ना कि फाइल करना है कि नहीं करना है। सर आई एम जस्ट प्रेइंग 2 weeks टाइम। देखिएगा श्री अवधेश कुमार सिंह फॉर द पिटिशनर, श्री क्या शुभ नाम है आपका? जॉन जॉर्ज, मनु वी जॉन praised for 2 weeks time to file additional return. List of 2 weeks. IR to continue. Serial number 52,
The RB Tiwari. In this case, Lord, petitioner were appointed year 2019, Lord, in post-grade collector. Respondent has not given any salary, Lordship, but और petitioner आज भी काम कर रहे हैं, Lordship, 2023 तक. कौन है रिस्पोंडेंट? कह देते हैं डिसाइड करने के लिए आपका रिप्रेजेंटेशन है. Chief Medical Officer छतरपुर. Shri Ratan Bharat Tiwari submits that petitioners were appointed as class 4 contingency employees under the respondent number 2. Full stop. They are still working but are not being paid salary. Full stop. Petitioners have already made representation as contained in annexure P 5 to the collector Chhatarpur. Full stop. This petition can be disposed of with a direction to the collector Chhatarpur to Chief Medical Officer. Chief Medical Officer Chhatarpur to cause an inquiry that whether petitioners are still working, and if they are working, then why salary is not being paid to them. Full stop. If it is found that petitioners are working, then wages be paid to them in accordance with the order of appointment within period of 30 days of receipt of certified copy of the order. This court has not expressed any opinion on the marriage. 53, Kitab Tarun Singh, Timothy Kannan Gerwal. Lordship, I am appearing for respondent number 3 and 4. We have recently filed a power on 25/3/2023 and seeking some time to file reply. Reply के लिए समय चाहिए आपको. My lord, this matter will go before AFT. No, my lord. We are only concerned about respondent number 3 and 4. 1 and 2 is a formal party, my lord. 3 and 4 क्या है? 3 and 4 में बैंक है, एक में my lord बैंक ऑफ बड़ौदा है. ठीक है, श्री. मैं पढ़ दूं सर इनका क्या मांग रहे हैं? नहीं, we have challenged. मैं पढ़ देती हूँ. By way of present petition, petitioner is not challenging any specific order, but challenge has been made on the action of respondent number 2 to 4. Respondent number 2 is PCTA. Well, similar identical matter we are doing before the AFT one. No, ma'am. Because there is recovery has been made from the disability pension. किस काम पर पे आप? My lord, my husband was employed with the army, my lord. He was in the medical corps. He was getting disability pension. Yes. He wasn't getting the disability. He passed away, my lord, before getting the disability. His wife received the disability pension. My lord. Why recovery has been made? Recovery, my lord, there was some excess payment made as a dearness allowance, my lord. That, my lord, that excess payment was made from the family pension of the petitioner. That was, my lord, challenged before this honorable court. My lord, this honorable court pleased to state that order, my lord. Subsequently, my lord, disability pension was due, my lord. They, my lord, released my earlier, my lord, the recovered amount, my lord. Subsequently, they recovered from my lord another disability pension. Disability pension. ठीक है. तो ये मैटर AFT में. AFT, my lord, AFT नहीं जाएगा क्योंकि हमारा जो my lord जो ग्रेवियंस है वो बैंक से है. तो बैंक क्या? बैंक को इन्होंने बैंक बिगर एम्प्लॉयर के ऑथराइजेशन के डिडक्ट कर सकता है. आपका ये कहना है? ये किया है. नहीं, अगर तो हम कितना लिख देते हैं, then I will not permit you to go before AFT. I'll write down your contention. My lord, that petitioner's contention is that bank has unauthorizedly made deductions without any instructions from the employer. My lord, may observe it. Then I will not permit you later on to go before AFT. My lord. Yes, what are your? Because I have visited, my lord. The lady has visited the respondent number 2. They said everything we have given to the bank. This action is per se by the bank. देखिएगा, शुभ नाम बताइएगा. प्रताप तरुण सिंह. प्रताप तरुण सिंह submits that this case will not go before the Armed Forces Tribunal, and as much as petitioner had visited the bank, the respondent number 2, and she has been informed by the respondent number 2 that all the actions were taken by the bank and they never authorized bank to make any recovery. Full stop. Thus, taking this fact into consideration, 2 weeks time is granted to Shri Ishan Singh Pawar to file reply on behalf of respondent number 3 and 4. 3 and 4. Full stop. My lord,
The earlier petition, my lord, is also pending. It may be linked with that. नंबर लिख के दे दीजिए पर्चे में। मैडम का शुभ नाम डाल दीजिए फॉर रिस्पॉन्ड नंबर 1 and 2। Well, this is the order. रख लीजिएगा इसको, ठीक है। सब इनकी अंडरटेकिंग है कि बैंक नहीं किया है। Yes. There are several communications, my lord. On the negative one, I'll take my lord to those communications. Serial number 54. Kamal. In my opinion, you can approach AFT and still assail the orders of the bank, because without authorization from the Yes, that is bank, that bank is can what my still be made submission. a party before AFT. मैंने जो order दिया उसमें बैंक party है. Every day we are doing over there identical matters, my lord. नहीं, let me then I'll not permit you to withdraw. Then I'll not give you any liberty. My lord. Monday को AFT है. He admits that initially. ठीक है ना? Tomorrow I'll not give you any liberty. Shri Pratap Tarun Singh admits that he will not be seeking any liberty to withdraw this petition and approach AFT, because he is not assailing any action of the respondent number 1 and 2 in this petition. And he is sure that ठीक है, इनका ओवर कॉन्फिडेंस इनको रहने नहीं, one रहने दीजिए प्लीज। नेक्स्ट केस। What I'm saying, my lord, there are communications, my lord. I am sorry. You are not trying to understand the basics of the service jurisprudence. You let your client face the music because of your inexperience. My lord, what my submission is? Sorry. I'm only assailing my lord, the action of the respondent 3 and 4. That is not within the knowledge of respondent number 1 and 2. Because several communication has been made. That I have already noted. My lord, चलिए। Number 54. Ms. Madhya Pradesh. This matter pertains to the illegal appointment done in the matter of recruitment of the Anganwadi Karyakartas matter. देखिए भाई, reply आ गया इसमें। My lord, 7 days time. Last date of hearing, my lord had directed to aviator to file. आप रिप्लाई दे दीजिए। देखिएगा, Ms. Madhavi Chaturvedi, learned counsel for the petitioner. Shri Manas Mani Verma, learned government advocate for state, none for the caveator. No reply is filed by the caveator, though time was granted to him on the last date. Next, let records be called for by the respondent state, and if they so desire, may file reply within 4 weeks. List thereafter. I'm also praying for the interim relief in the matter because Serial number 55. Shri Anshuman Singh. Shri Rajiv Singh. My lord, the challenge in this case is the order whereby the appointment of Panchayat Kami is directed to be done on the basis of a resignation passed by Gram Panchayat and not on the basis of merit. My lord, I have prepared a synopsis of the case. My lord, the permit किस साल का है ये अपॉइंटमेंट? 2010 my lord. 10 में कब से हो गया ग्राम पंचायत का रेजोल्यूशन? कौन सा पॉइंट है बता दीजिए, जजमेंट है इसके ऊपर। 2007 के पहले जो है रेजोल्यूशन था, उसके बाद रेजोल्यूशन खत्म हो गया। हाँ, दे दीजिए, उतना सही मैटर है ना। 2007 तक था ना, कोई 7 तक था, उसके बाद रेजोल्यूशन आ गया था स्टेट गवर्नमेंट का that it has to be done on the basis of merit. Yes. Who is appearing for the respondents? रिस्पोंडेंट नंबर 7। हाँ, आज रिप्लाई फाइल कर दिया हूँ आपको, तो बहुत अच्छा किया आपने। उसके बाद इसका बता तो दीजिए, इसको पास ओवर रखना। पास ओवर किस बात के लिए करना है? सीनियर काउंसिलर। कौन है सीनियर काउंसिलर? अखिलेश सिंह। अखिलेश सिंह। तो क्या करेंगे वो? जजमेंट से कवर्ड है ये, लिखिए। श्री राजरूप पटेल। अनुज श्रीवास्तव। अनुज श्रीवास्तव, learned counsel for the petitioner. Shri Saurabh Soni, learned panel lawyer for state. Shri राजरूप Patel for respondent number 7. Next, petitioner's case is that on 29/6/2010, a notice was issued by Gram Panchayat Mada inviting applications for appointment of Panchayat Karmi. Full stop. Last date for submission of applications was 6/7/2010. Full stop. Petitioner had tried to submit the application, but Sarpanch declined. Therefore, petitioner had approached SDO Amar Patan, who made an endorsement on the application and directed the Panchayat to accept it on the same date.
Full stop. On 6/7/2010, application of the petitioner was received by the Gram Panchayat for the appointment to the post of Panchayat Karmi in Gram Panchayat Mada. Full stop. Next para. Petitioner's grievance is that instead of judging merits of the candidates who had applied, comma, Gram Panchayat passed a resolution Resolution, my lord, is P11. dated 7/8/2010 in favor of one Shri है Resolution is 19/2012, P11. यहाँ पे गलत क्यों लिखा है? No, earlier there was that resolution was set aside. 7/8/2010. लिखने दीजिए ना, चलेगा? One Shri Shivram Singh overlooking the merits of the petitioner. Full stop. The petitioner made a representation to the Chief Executive Officer Janpat Panchayat and then filed an appeal before the Sub-Divisional Officer. When the Sub-Divisional Officer stayed the impugned resolution dated 7/8/2010. Full stop. An appeal was filed. Appeal filed by the petitioner before the SDO was allowed. Wide order dated 12/1/2012. Full stop. Shivram Singh filed a revision against this order of SDO before the Commissioner Riva, which came to be dismissed on 1/8/2013. Full stop. Wide order, next para. Wide order dated 22/1/2012. Chief Executive Officer Jila Panchayat Satna directed the CEO Janpat Panchayat Amar Patan to ensure appointment of Panchayat Karmi on merits. Full stop. But overlooking these directives, comma, on 19/2/2012, Annexure P11, Gram Panchayat passed a resolution to appoint one Kumari Suman Singh, who was lower in merit than the petitioner. Full stop. Thereafter, petitioner challenged this order of appointment of Suman Singh before the. I did not challenge it. The complaint was made, and the CEO. A complaint was made before the CEO Janpat Panchayat CEO Janpat Panchayat had informed CEO Jila Panchayat that appointment for the post of Panchayat Karmi had not been made. A proposal under section 86 of the Panchayat Raj Evam Gram Swaraj Adhiniyam 1993 for undertaking appointment was made on 5/3/2014. Full stop. On 12/9/2014, CEO Jila Panchayat Satna issued letter directing that appointment be made strictly in compliance with the circular of the state government dated 13/8/2007. But this directive was not followed, and this direction was challenged by Kumari Suman Singh, respondent number 7, in an appeal before the Additional Commissioner Riva, in which petitioner was not made a party, and Additional Commissioner Riva allowed the appeal and held that since Gram Panchayat had already passed a resolution for appointment of Panchayat Karmi on the basis of resolution, therefore CEO Janpat Panchayat could not have directed the preparation of a merit panel. Next para. It is submitted that law in this regard is well settled, that appointments are to be made in accordance with merit and not as per the basis on the basis of resolution simpliciter. Reliance is placed on a decision of this High Court in Jay Prakash Patham versus State of MP and others 2011 का 2 MPLJ 392 and a division bench decision of this High Court in Suresh son of Lakshman Rathod versus Chief Executive Officer
जिला पंचायत बड़वानी इन 2011 का 4 MPLJ 717। नेक्स्ट पैरा, तो रिजोल्यूशन दिखाइएगा P11 क्या है। P11 इज ऑन पेज नंबर minus 34. 34। The relevant part will start on page 37. 38 में वो सब प्रस्ताव जो पारित किया है उस कॉलम में प्रस्ताव के पक्ष में 8 एवं विपक्ष में 4। नेक्स्ट पैरा, perusal of the order annexure P proposal and resolution annexure P11 is evident that resolution was passed on the basis of the voting of the members of the panchayat, where 8 persons had given vote in favor of appointment of Suman Singh and 4 against her. Full stop. Thus, it is evident that the said resolution is contrary to the circular issued by the state government on 13/8/2007 annexure. I have not filed my lord. Copy of which is taken on record and which specifically provides that selection of panchayat karmi will be in accordance with the merits and the criteria prescribed in the said circular. When tested on the touchstone of the decision government circular dated 13 August 2007 and the decision of coordinate bench and honorable division bench in Jay Prakash Batham and Suresh, said resolution cannot be approved. Therefore, the commissioner, additional commissioner Riva, acted arbitrarily in allowing the appeal filed by Kumari Suman Singh, respondent number 7, without having taken into consideration the circular dated, the government orders dated 13/8/2007 and the decisions of this High Court. Stop. Therefore, neither the resolution passed by the Gram Panchayat nor the order of the additional commissioner can be sustained in the eyes of law. They are hereby quashed. Gram Panchayat is directed to complete the process of recruitment strictly following the norms provided in the circular dated 13 August 2007 within further period of 30 days. Work terms of appeal is disposed of. I'm highly opposed. Number 56. My lord, if I may break the right of the aviator may kindly be closed for. नहीं, My lord, they have chosen not to. अरे इतनी जल्दी नहीं मारा, इतनी जल्दी नहीं। कभी आप भी इधर से आएंगी, 7 दिन में आपका भी राइट क्लोज हो जाएगा। इतनी जल्दी मत करिए। Herein, my lord, the petitioner was employee of railway. He stood superannuated in the year 1996. His pension was revised, my lord, and the areas of 5th A division has not been credited by the bank. I have no grievance against the railways. Railways has also filed their return, and from the aerial Railway has filed their return or no? return, they have filed their return. They have already issued the directions to the bank, and my lord, kindly see the calculation sheet which they have provided. ठीक है, नहीं एक सेकंड, तो क्यों नहीं दे रहा बैंक? I'll just clarify there are two things. Railway has not filed their reply. And secondly, we have filed our reply. Bank. Railway has not filed reply. Railway has not filed the reply. देख लीजिए भाई एक मिनट. Railway का We reply have आएगा. tried to clarify that we have given all the views which were. एक सेकंड रुकिए, रेलवे का रिप्लाई आया नहीं आया? Online मैंने check किया था तो I couldn't Preliminary find it. objection on behalf of the respondent number 1 and 2 That was State my- Bank of India. That was my Application for amendment. That is his application, petitioner's application. Reply affidavit for the respondents Rohit Jain. That's again 1 and 2. Respondents क्यों लिखा फिर आपने 1 and 2 लिखना चाहिए था. आप इतना डिसेप्टिव क्यों बनाते हैं चीजों को? So tender apologies. This is a reply of the main contesting respondents. Tender apologies. Indian Railway is still awaited. Let reply be filed by Shri
Sandeep K. Shukla. Sandeep K. Shukla, who represents respondent number 3 and 4 within 15 days from today, as petition is pending since 2017, and respondents 3 and 4 have chosen not to file reply despite lapse of more than 5 years. Full stop. By way of last indulgence, 2 weeks time is granted. List in the week commencing 1 May 2023. My lord, permit me say something. Kindly it would taken 3 weeks. नहीं 2 हफ्ते बहुत है। टाइम हो गया। 5 साल में नहीं किया। कॉस्ट लगाना है तो बताइए, मैं कॉस्ट और लगा देता हूँ। There's a detailed order sheet wherein it was found ठीक है, that अब they next had to case. file reply. Next case. So these are the recovery matters, my lord. ये 815 बटे 60। अच्छा, वो तो 815 से कवर्ड है। पास ओवर नहीं है, तो 815 से कवर्ड है। देखिएगा, subject matter of these petitions is to be governed by the outcome of WA number 815 बटे 2017. List these cases after decision in this said WA, which is pending before the full bench to answer the request. Serial number 58, Shri Sandeep Singh Baghel, Shri Madan Singh, Shri Pradeep Kumar Verma, Shri Vikas Mishra. क्या मैटर से ये? My lord, this is a bunch matter. My lord, there are the. क्या किस चीज का ट्रांसफर है ये? My lord, this transfer is of 2021, my lord. Matter आपके पक्ष में स्टे है क्या? Yes, my lord, there is. हाँ, तो उसको किस पोस्ट पर हैं आप लोग? कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है, मैनेजर है, उसको क्वेश कर देते हैं, लिबर्टी दे देते हैं। My lord, तो कॉस्ट फ्रेश ऑर्डर्स एज पर द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीजेंसी। my lord, सर इसमें एक पॉलिसी है, वो पॉलिसी के बाद हमने डिसाइड कर दिया है ये। नहीं सर, हमारा सबमिशन ये सर, बिल में ट्रांसफर नहीं, बट इन अकॉर्डेंस विद द पॉलिसी डेटेड 24। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीजेंसी के रूप में करेंगे ना। my lord, the matter involved here is already decided by the divisional bench of this honorable court, my lord. क्या कह दिया? Taking into all the contentions that. क्या कह दिया? My lord, they have said that the post is transferable and the employee can transfer. तो लेकिन अभी तो 1.5 साल से स्टे है, 2 साल से। My lord, नहीं, ठीक है, ये कह देंगे। but there is no live contract as on now, my lord. Their contract has already been over on 31st of March 2022. We have filed that. उसके बाद काम नहीं कर रहे ये। कर रहे हैं। Just because of my lord the. ठीक है, तो वही तो कह रहे हैं। उसके बाद में you will be free to decide the terms and conditions of the contract in accordance with law and this judgment. लिखिएगा। These petitions pertain to transfer of various petitioners who were working on various posts under Madhya Pradesh. डे क्या होता है? मध्य प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड क्या होता है भाई? लाइवलीहुड होता है। लोग लाइवलीहुड बना दिया पार्टी को। लाइवलीहुड मिशन पैकेट में SRLM। Full stop. Petitioner's contention is that their order of transfer was stayed by a coordinate bench while order dated 15/9/2021 and that has remained stayed for over a period of 1.5 years. Full stop. आपका लिखा है भाई। Shri Mannan Agrawal, learned counsel for the respondents, in his turn submits that this controversy as to whether petitioner's services are transferable or not have been answered by a division bench of this High Court in WA 986/2021 dated 8/11/2021. So also in WA 930/2021 decided on 28/10/2021, wherein it is held that posts are transferable. Full stop. Shri Mannan Agrawal further submits that now there is no live contract between the petitioner and the answering respondents, and they are continuing in service on the strength of the stay orders granted by a coordinate bench in this court of this court. Next para. After hearing learned counsel for the parties, I am of the opinion that since stay has continued for over a period of 18 months, it can be made absolute and petitions can be disposed of
with liberty in favor of the respondents to determine the terms and conditions of the contract, and if petitioners are likely to continue on the strength of their individual assessment, then transfer them as per the policy and keeping in mind the administrative exigency. So also the orders of the Honorable Division Bench NWA 930/21 and 986/21. Full stop. In above terms, these petitions are disposed of. All right. Serial number 59. Serial number 59. Deepak Awasthi. Must be the original record of the WP required. WP 456. Shri Deepak Awasthi, learned counsel for the petitioner, submits that original record of the case in WP 456 2023 of 2023 will be required. On his request, list this case next week along with WP 456/2023. No. Serial number 60. Srimati Sudha Pandit. Password. Password present. Serial number 61. Case Bha. The petitioner is aggrieved by annexure P6, whereby wrong pay fixation has been done against him. With representation से काम चलेगा कि नोटिस इशू करना पड़ेगा? Direct for deciding representation. Shri Kaustubh Shankar Jha, learned counsel for the petitioner. Srimati Swati Asim George, learned deputy government advocate for state. Petitioner's contention is that he is victim of wrong pay fixation. He is an employee of, he is working as constable 392 GRP Bhopal. Full stop. This petition can be disposed of with a direction to the respondent number. किसको डिसाइड करना है? 3 को डिसाइड करना है. Lord, the representation, my lord, is submitted to 4, my lord. He has already made a representation to respondent number 4 as contained in annexure P7, my lord. P7. Full stop. विशेष पुलिस महानिदेशक. My lord, that is number 3. Number has 3. made representation to respondent number 3. ठीक है. 15 दिन 60 दिन court has not expressed any opinion on the merits through speaking order. Serial number 62. Shri Gopal Singh Baghe. P1 माला उसमें कमिश्नर ने अपील हमारी खारिज कर दी है. Issue notice to the respondents on payment of PF पर ऑलरेडी रेंटिंग जो है माला कमिश्नर ने पहले दी है P2 में लगाया है. क्या रेंटिंग ऑलरेडी पहले कमिश्नर के यहाँ पे था माला? हाँ उसका तो खारिज हो गई ना. कब खारिज हुई? फाइनल खारिज कब खारिज हुई? अभी लेटेस्ट हुई है 6 मार्च 23 को. हाँ जी तो ठीक है. क्या क्या मैटर है? ये सब ग्राम रोजगार सहायक का है माला. ठीक है वेट करिए. Issue notice to the respondents on payment of PF by registered AD post within 7 days, returnable 4 weeks. चलिए तब तक के लिए रेंटिंग कर चुकी है ऑलरेडी. मैं नीचे कोर्ट के निर्देश समझ. अरे भाई वकील साहब ऑलरेडी अमाउंट का जो है वो हमने जब पेड कर दिया. ठीक है कर दिया हो. Serial number 63. So, case not the identical petitions have been entered in. अरे आइडियली में अपने फैक्ट्स बताइए. Not actually what has happened. These petitioners may not earlier, my lord. अच्छा ये वो कोई इंचार्ज वाले हैं ये? Yes, my lord. जी जी वो दे दीजिए. आइडेंटिकल का ऑर्डर दे दीजिए. और आपका नंबर किस नंबर पर है? Serial number 15, my lord. 15. Yes, my lord. और my lord वो इंचार्ज वाला ऑर्डर इसमें है. हाँ वो दे दीजिए. Lord, I am supplying the identical. मेरा भी तो ऑर्डर है. Yes, yes, my lord. That lordship. तो दे दीजिएगा. देख लीजिएगा. सरकार का भी ऑर्डर 2 दिन पहले किया है.
ये सीरियल नंबर 15 कर दीजिएगा, प्लेस ऑफ पोस्टिंग लिख लीजिए। Not I just supply. डिस्पोज ऑफ किया है कि नोटिस किया? I'm not noticed. नोटिस किया है ना, चलिए। I just ये भी किया है, नोटिस किया है, लिख लीजिएगा। आइडेंटिकल ऑर्डर लिख कर दीजिए। this is okay. That's not चाहिए। बताइए। ये लीजिए, सेम ऑर्डर कर दिया, मैं करेक्शन कर दिया। Not a difference is going to tell they were naib tehsildar here means tehsildar and joint director. The difference is नहीं तो आप किस पद पर हैं? मैं तहसीलदार था, जॉइंट कलेक्टर की पिटीशन लगाई तो सरकममेंट करने के लिए मिला। जॉइंट कलेक्टर के प्रमोशन के लिए पिटीशन लगाई आप? यस। तो जॉइंट कलेक्टर कैसे बन जाएंगे आप डायरेक्टली तहसीलदार? कौन सा प्रावधान है? पिटीशन अलग है भाई, दिखाइए, एक सेकंड रुक जाइए। ये ऑर्डर नहीं, पहले आप एक सेकंड दिखाइए। Not my order of promotion. तहसीलदार को प्रशासकीय आधार पर तत्काल प्रभाव से, तो सिंपलीफिकेटेड ट्रांसफर ऑर्डर है। इसमें कहाँ है इंचार्ज वाला, बताइए तो। इंचार्ज वाला ऑर्डर आई एम टेकिंग ऑन। अरे इंचार्ज नहीं, इसमें बताइए ट्रांसफर ऑर्डर में that you are being posted as in charge. Subsequently passed, this is the order. So you file it on record. Sorry, करिएगा phrase for time to कुछ मत करिएगा अभी। गलत मत, नहीं हाँ, गलत बयानी मत करिए आप। नहीं, that is why I submitted. No, sorry. Facts is similar. No, facts are different. You have not been posted as in charge. You have not been promoted. वो subsequently was, that is, if lordship says that. तो ले आइएगा, आप amendment कर लीजिएगा, लिखिएगा। Phrase for time to file. Is that order has. You should have filed order along with the petition. Not that we received. Phrase for time to file certain documents. On his request, 2 weeks time is granted to the lead to. Sorry. गलत बोल के ऑर्डर मत लीजिए। गलत नहीं, it's same. Lordship has passed orders. No, that's a different matter. नहीं, it's not next week. I'm not. आएगा। You may file it too. After a week, Lordship. आएगा। Just in the week commencing 24 अप्रैल 2023। 17 अप्रैल कर दीजिए, 17 अप्रैल 23। चलिए। Serial number 64, शेष धर्माधिकारी। The petitioner is challenging annexure P6, whereby by a truncated order, my lords, the petitioner services has been terminated. My lord, the facts are this: the petitioner is a dental surgeon, and the respondent number 2, after the approval of the respondent number 1, floated an advertisement whereby the post of dental surgeon was to be filled at Netaji Subhash Chandra Bose Medical College at Jabalpur, my lords. The petitioner participated in the same by filing the application. Thereafter, my lord, the eligibility criteria. Notice to the respondent to file reply as to what was the contingency to cancel selection list of senior residents, which was issued on 21/2/2023. Let complete file in which matter was dealt with be produced by the Dean Netaji Subhash Chandra Bose Medical College, Jabalpur, on or before next date. List on 19 April 2023. Sorry. My lord, may I make a submission? My lords, what has happened? I've just been informed. They are issuing another advertisement for the same post, my lord. करने दीजिए, अभी तो टाइम है, एक हफ्ते में तो हो नहीं जाएगा ना सिलेक्शन। My lords, my lords, as per my instruction, they are taking it on 10th of April. क्या एडवर्टीजमेंट इशू करके? My lords, they are directly calling it now, my lords. 10th of April, my lords. देखेंगे जब आएगा तब उसको पेश करके एप्लीकेशन लगाइएगा। My lords, I have. Sorry, no further interference. My lords. My lords, anything may be made subject to outcome of this petition. Nothing. Because अपर्याय रीजन के कारण इनको रिजेक्ट कर दिया गया। नॉर्मली नोटिस इशू करके 6 हफ्ते बाद लगा देता हूँ, आने दीजिए उसको। My lords, 29 के लिए रख दीजिए, फिक्स डेट कर दीजिए। We'll make a representation to the dean not to proceed further till the matter is pending. ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस। Stand over. I, Swatanta Pandey,
But by way of justification, my lord, I am before you could with a listed prayer, my lord, taking directly to respondent number 2 to decide my representative. Petitioners contains अपना नाम बताइए स्वतंत्र श्री स्वतंत्र पांडे the responsible for the petitioner submit that petitioner attains the age of superannuation while working as deputy superintendent of police agent of police full stop. He has not been paid his complete emoluments of leave encashment. He has already made a representation to the Director General of Police as contained in Annexure P4 full stop. He prays for directing the Director General of Police PH2 Bhopal to decide the said representation. This innocuous prayer is not opposed. 15 दिन 60 दिन any opinion on that. The light of annexure P3, which is the order passed the coordinate bench of the ठीक है, they will decide it on merits. चलिए. Serial number 66, Shri Dinesh Kumar Rohini, Shri Ambar Mishra. My lord, chronology events is number 3. My lord, 14 अक्टूबर 2022 को फॉर्म निकला समूह 5 के लिए और इसका लास्ट डेट थी 28 अक्टूबर, जिसमें करेक्शन के साथ 2 नवंबर 2022 तक लास्ट डेट थी। my lord, हमने फॉर्म भरा my lord 31/10 को हमने करेक्शन करके उसमें रोजगार पंजीयन सबमिट कर दिया, मतलब हमारा लिविंग रजिस्ट्रेशन डाल दिया मैडम। my lord हमें अपात्र घोषित कर दिया my lord पेज नंबर 13 आपका रिप्रेजेंटेशन डिसाइड हुआ था, आपका लाइव रजिस्ट्रेशन नहीं था ना? हाँ my lord, हाँ my lord, डिसाइड करने का बोल देते हैं P30 my lord था my lord। लिखिए petitioner's contention is that और my lord अभी काउंसलिंग की डेट है my lord, तो प्लीज my lord डिसाइड करने का बोल दे रहे हैं भाई। my lord Decline the interim relief on one. अरे petition dispose of कर दे रहे representation डिसाइड करेंगे। Submits that petitioner had submitted her live registration with the employment exchange before the last date of filing the corrected details full stop. Yet she has been denied call for the counseling full stop. She has already made a representation. Petitioner has already made a representation to respondent number 2 full stop. This petition can be disposed of with a direction to respondent number 2 3 days 15 days कर दीजिएगा। my lord इसमें my lord प्लीज एनेक्सर नंबर 10 देख लीजिए my lord, इसमें 5 अप्रैल से 9 अप्रैल तक की चॉइस फिलिंग का अवसर दिया जाएगा my lord, इसमें हमें सम्मिलित किया जाए my lord। क्या लिखा? एनेक्सर P10 my lord पेज नंबर 39 my lord, कल से छुट्टियां हो जाएंगी तो फिर वो my lord तो ऑनलाइन भरना, ऑनलाइन की छुट्टी नहीं my lord, ये नहीं इनको नहीं लेंगे, इनको ऑफलाइन ही बुलाया जाएगा my lord अगर ऑर्डर होता कोर्ट से। अगर आप सक्सीड करेंगे तो यू विल गेट एवरीथिंग। इस तरीके से नहीं होता है। मतलब इनको अभी अपात्र कर दिया गया है, अपात्र कर दिया गया, उनको इसीलिए रिप्रेजेंटेशन डिसाइड करने को बोल रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसको नोटिस इशू कर देते हैं। नहीं my lord, नोटिस नहीं my lord। It is made clear that if petitioner's representation succeeds, then she will be afforded an opportunity to fill the choice. In above terms, कोई 7 दिन में रिप्रेजेंटेशन देंगे, 15 दिन में डिसाइड करेंगे। चलिए Serial number 67, Shri Rajiv Kumar Singh. क्या हुआ? आ गया रिपोर्ट तो इसका डिस्ट्रॉय हो चुका है। Because of the accident is of 2012. हाँ क्या करें? ऐसे इसमें लिमिटेशन के ग्राउंड पे रेलवे किलोमीटर क्या बोल रहे हैं? रेलवे ट्रिब्यूनल ने लिमिटेशन के ग्राउंड पे रिजेक्ट किया क्लेम। जी ठीक है। कितने दिन बाद पेश किया था आपने? पेज नंबर 10 पे देखिए, 10 महीने का डिले सिर्फ हमने से कितने महीने का? 10 महीने का 10 मंथ। पढ़िएगा पेज नंबर 10 पे क्या लिखा है? At this stage it is perused that the application is moved under section 5 of the Limitation Act dated itna. In the affidavit in support, the application is dated 9/5/14. It is pertinent to mention here that on the affidavit was attested the original application had not originated. Even the application is not properly verified. It is dismissed. ये तो
हाइपर टेक्निकल अप्रोच, इसको रिमांड कर देता हूँ मैं वापस, लिखिएगा। पिटिशनर अपीलेंट इज एग्रीव्ड ऑफ ऑर्डर डेटेड 14 दिसंबर 2015 passed by learned railway claims tribunal Bhopal bench in case number OA oblique Roman 2U oblique BPL oblique 2015 oblique 038, rejecting the application under section 5 of the Limitation Act dated 17/5/2014 on hyper-technical grounds. Full stop. This approach of the tribunal in a matter when tribunal is sitting in a benevolent jurisdiction and the law is having benevolent ramifications cannot be appreciated. Full stop. The impugned order is set aside. Matter is remanded to the learned railway claims tribunal to decide the claim afresh on merits of the. May I make a sure? Kindly see page 11, Your Lordship. 11. If a respondent जो है यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू जनरल मैनेजर वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर, और पिटीशन में जो बनाया है इन्होंने, दे हैव मेड एन अमेंडमेंट और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद कर दिया है। टिकट कहाँ से ली थी, कहाँ से कहाँ तक यात्रा कर रहे थे वकील साहब? ये लॉर्डशिप ये डभौरा से कर रहे थे यात्रा, डभौरा से मानिकपुर। डभौरा से मानिकपुर तो वहाँ आएगी, इलाहाबाद में ही आएगा। उनको पार्टी बनाया था, तो उनको पार्टी बनाया था। ये amendment will be permitted to amend the cost title before the learned claims tribunal. Appropriate cost title and plead appropriate party. In above terms, appeal is disposed of. Obliged. Serial number 68, Vijay Tula. This is hard to be hard. क्या मैटर है? Lord आंगनबाड़ी करेक्शन ठीक है, आंगनबाड़ी तो ठीक है। Lord श्री शुक्ला लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर, श्री सौरभ सोनी लर्नेड पैनल लॉयर फॉर स्टेट, श्री द्विवेदी लर्नेड 6 for respondent number 6, Rakesh Dwivedi for respondent number 6. Readings are complete. Case is to be heard finally, list for final hearing. Not to be heard today. 9. Serial number 60. The matter relate to, we are not challenging any order, Lordship. We are seeking a direction to respondent, Lordship, that on the basis of annexure P5, a parity may be decided, Lordship, and petitioner will grant the second, Lordship, Samaman Vetanman. Representation डिसाइड करने के लिए बोल देते हैं, ठीक है ना? Lordship, क्या चाहते हैं? Lordship, एक बार annexure P5 देख लें. It will be at page number 20. इसमें Lordship, respondent has decided those person who has completed 20 year of service, Lordship, they may get the second Uchtar Samayman Vetanman. A 6 employee list of 6 employee has been set, Lordship. Out of which, Lordship, except the prisoner, all have been getting the benefit of grant pay scale of, Lordship, 2800, Lordship. आपको क्यों नहीं दिया, यही तो पूछना है। There was no reason assigned by them. तो इसीलिए तो बोल रहे हैं इसकी लाइट में डिसाइड करें आपका रिप्रेजेंटेशन। Lordship, क्यों भाई? नहीं judgments, no, they are not entitled as per the judgment passed by this honorable court, my lord. तो रिप्लाई वगैरह आ गया क्या? Yes, ma'am. See, reply has been filed. We are not relying on AL Thakur. This is different case, Lordship. Reply has been filed on the basis. I am only seeking on the basis of annexure P5, Lordship. Limited prayer के annexure P5 की लाइट में कंसीडर कर लें, पैरिटी है तो। श्री शुक्ला विवेक शुक्ला, Vivek Shukla, learned counsel for the petitioner. Saurabh Soni, learned government advocate for learned panel lawyer for state. Next, Shri Shukla submits that petitioner is not claiming parity with the judgment of ordinate bench of this court in case of AL Thakur. A.L. Thakur. Lordship. कहाँ है वो? Judgment कहाँ है? It was that, Lordship, paragraph number annexure P5, Lordship. We have pleaded in my memo. अरे भाई आपसे जो पूछ रहे हैं वो बताएंगे नहीं आप?
ये annexure P4 है lordship. P4 है AL Thakur. नहीं, P4 is an order passed on AL Thakur and others, but is claiming parity with the order annexure P5 issued in favor of 6 other persons who were also working as timekeeper. Petitioner's contention is that since he was working as timekeeper, respondents be directed to decide his case on the basis of parity which he is claiming with other persons in whose favor order dated 19/7/2017 annexure P5 is passed by the chief engineer Upper Narmada Zone Jabalpur. Full stop. Next paragraph. Without commenting on merits, this petition can be disposed of that in case petitioner files a fresh representation to the chief engineer Upper Narmada Zone Jabalpur, then he shall consider the case of the petitioner, and if it is found to be at par with Shri Balmukund Dubey and others in whose favor order dated 19/7/2017 is issued, then shall decide the representation in accordance with law. Full stop. Let representation be made along with copy of the writ petition and the order being passed today. Within 15 days from today, it shall be decided by the concerned chief engineer within further period of 60 days through a speaking. This court will not express any opinion on the merits of the case. obliged lordship. Obliged.
Lordship, in this case, rather we challenge the action of the respondent, sir. रिकवरी का ये पे फिक्सेशन की है क्या? हाँ, ये पे फिक्सेशन की नहीं, ये रिकवरी है। ये जो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी ये होते हैं, इनको नगद राशि दी जाती है, जो एग्रीकल्चर वर्क होता है उसको खर्च करना पड़ता है, इंटरेस्ट अकाउंट। हाँ, तो उसमें खर्च करना पड़ता है। तो ये दतिया से ट्रांसफर होकर टीकमगढ़ आए। उस समय इनने जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं लाडसभा में, उस समय जो राशि मिली थी उसमें से 60,000 रुपए हम खर्च नहीं कर पाए थे। तो उसको हमने, जो हमारा ट्रांसफर हुआ, तो हमने वो नगद जमा कर दी है और उसकी पावती ले ली। इसके बाद जब इनने एलपीसी भेजी यहाँ टीकमगढ़ में लाडसभ, तो एलपीसी के साथ ये भेज दिया कि इनने जो पैसे जमा नहीं किए हैं इनसे रिकवरी की जाए। वो रिकवरी का जब वो हमको लेटर मिला, वो कहाँ है एक्नॉलेजमेंट 60,000 रुपए जमा करने सर मैं देखो सर, वो 60,000 आपने जो दतिया में जमा किए थे वो मैं उसका एक्नॉलेजमेंट कहाँ है? रिप्लाई में लिखा है। रिप्लाई में लिखने से नहीं होता है जी। आप उसका एक्नॉलेज, उसकी रसीद मिलती है गवर्नमेंट में, कोई भी नगद लेते हैं बिगर कागजी कार्रवाई के नहीं होता। रसीद नहीं लगाई, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। आप बोल देते हैं डिपार्टमेंट में जाइए, रसीद पेश करिए, दे विल कंसीडर इट, दैट्स ऑल। नहीं, हमने सर एक डॉक्यूमेंट देख लें, हमने इसमें खुद लिखा है कि जो 60,000 का ये बता रहे हैं वो संदेहास्पद है। उसकी रसीद पेश करेंगे? हाँ, इनके पास है ही नहीं, और वो इनके शो कॉज भी स्पेसिफिक जारी हुआ था। अगर रसीद पेश नहीं करेंगे देन यू विल बी एंटाइटल्ड टू रिकवर इट। वो तो लाडसभ आफ्टर रिटायरमेंट लाडसभ उससे रिकवर कर लिया है। नहीं सर, ये स्टे है, स्टे ऑर्डर दूसरी पिटीशन में है, वो भी हमने लगाया है। परमिट टू विथड्रॉ पिटीशन, नहीं तो रिटायर्ड क्लेम सेटल नहीं करेंगे और डिस्प्यूट पेंडिंग नहीं। Dinesh Kumar Upadhyay is for withdrawal of this writ petition as he is willing to deposit the amount of interest which was handed over to him and posted at Tatia and which he could not account for. Petition is as withdrawn. Interim order, if any, shall stand vacated. तो ये आ जाए कि उससे ग्रेजुटी से रिकवर हो चुका है। हम वही चाहेंगे, आप वहाँ जाके बताइए। हमारा स्टेटमेंट लिख देंगे, रिकवरी जमा कर दिया। He submits that amount is already recovered. That will be subject to verification by the respondent authorities. नंबर 30 आए श्री संजीव कुमार सिंह, श्री राम सुब्रत चतुर्वेदी। जी अच्छी टेक्निक है, क्या मैटर है बताइए। मैटर इज माय लॉर्ड, ये जो सेकंड पिटीशन मेरी है, पिटीशन में बताइए क्या है। फर्स्ट पिटीशन में लॉर्डशिप, ये पिटिशनर जो है कंप्लेन करता है सबकी, और इसने कंप्लेन की कि मेरा जो अनुकंपा नियुक्ति हुई है। ठीक है, याद आ गया मेरे को, ये बताइए। My lord, due to my personal difficulty, my lord, I was out of station, my lord, my father was there, तो my lord अभी नहीं, आपने तो लंच के बाद बोला था, ये कब तक ब्लैकमेलिंग चलेगी ये? नहीं, सॉरी, नहीं, पर्सनल डिफिकल्टी तो आपने पास ओवर नहीं लेना चाहिए था, पर्सनल डिफिकल्टी फर्स्ट राउंड में बताना चाहिए थी। यू सॉट पास ओवर, आई ग्रांटेड यू पास ओवर, नाउ यू से पर्सनल डिफिकल्टी, ये सब नहीं चलेगा। मेरिट्स पर बता दीजिए, डिसाइड कर देते हैं, या विड्रॉ कर लीजिए, आपके पास दोनों चॉइस है। You have no locus, you have absolutely no locus, you are trying to unnecessarily harass this private respondent. He has been granted compassionate appointment. Show me from the rules that the provisions of reservation are applicable to grant of compassionate appointment. That is the specific query I made you in the first round. Please show me. My lord, वही sorry on that लिखिएगा। नहीं, I'm sorry, my lord, may I please submit? कॉस्ट लगाऊंगा मैं, कॉस्ट पे दूंगा टाइम, अदरवाइज नहीं दे पाऊंगा। मेरी पर्सनल डिफिकल्टी होगी, सुबह क्यों नहीं बोला आपने? my lord, हमसे पूरा प्यार हो जाएगा पर नहीं हो पाया, my lord, जजमेंट नहीं मिल पाया। कोई बात नहीं, वो है ही नहीं, ऐसा मिलेगा ही नहीं आपको। हमने जब नोटिस हुई थी, my lord, ऑनरेबल कोर्ट हैज my lord कंसीडर my lord द जजमेंट पास बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट my lord इन 2014 1 FCC दीजिए, 2014 1 FCC दीजिए, क्या लिखा उसमें? Therefore, the honorable court by ठीक है, देखते ना 2014 1 FCC क्या है।
इसमें तो किसी ऑर्डर शीट में लिखा नहीं है 2014 का 1 SCC 16/10/2019 को नोटिस हुई है 16/10/2019 को हाँ ठीक है उसमें भी नहीं लिखा है 16/10/2019 को हुई थी ठीक at that time मालूम ऑनरेबल कोर्ट बात मालूम भाई क्या क्या नाम है पार्टी का 2014 का मालूम सेंटर इलेक्ट्रिसिटी मालूम ओडिशा वर्सेस Gaubel and other man. 161, pin number 161. ठीक तो है इसमें बताइए ना आप कि आपका केस ये है कि वो पोस्ट SC ST के लिए रिजर्व थी उस पर इनको कंपैशनेट अपॉइंटमेंट नहीं दिया जा सकता था इतना ही तो मैंने पूछा आपने पिटीशन बनाई होगी तभी आपको मालूम होगा ये चीज तो कि कहाँ है उसमें कि कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए रोस्टर का पालन किया जाना अनिवार्य है इतना बता दीजिए वही बस वो मिल नहीं पाया नहीं मिल पाया वो पिटीशन बनाते वक्त ढूंढना चाहिए था सॉरी प्लीज नो अभी हमको रिजॉइंडर मिला ठीक है मिला होगा कब मिला रिजॉइंडर आपको 13/2/2000 रिजॉइंडर तो आप ही फाइल करते हैं प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन हैज बीन फाइल्ड बाय द रिस्पोंडेंट नंबर 7 हाँ ठीक है 2020 कुछ है नहीं इसमें Have you said anything that there is a provision of reservation while granting compassionate appointment? नहीं सर Is it your stand? नहीं ऐसा तो नहीं है बस तो खत्म हो गई बात लिखिएगा श्री संजीव सिंह लेकिन हमने जो कनेक्टेड में रिप्लाई फाइल कराया जिसमें हम जो एक्शंस ले रहे थे उनको प्राइवेट रिस्पोंडेंट उसको बाद में देखेंगे पहले तो इनका तो कर दें इनके तो वो वर्ड खत्म करें लिखिएगा ये नहीं नहीं हो गया वकील साहब हो गया कभी जवाब आपसे मांगा था जवाब आप देंगे नहीं पर्सनल में बाहर था मालूम Shri Sanjeev Kumar Singh submits that because of personal difficulty, he could not prepare the case. However, he is directed to bring on record necessary rules to point out that in the matter of grant of compassionate appointment, provisions of reservation rules are applicable and applicable. List on 10 April top of the list. With clear stipulation that no passover, no adjournment will be admissible to the petitioner. Serial number 48. Shri Rakesh Kumar Jain. Apologies for not appearing the first one. But this is an appeal by the insurance company. The factual metrics. बता दिया शुक्ला साहब ने बता दिया आपका डंपर लेने से पता नहीं इसको मेमो ऑफ अपील भी नहीं है उनका ग्राउंड क्या है ये भी नहीं मालूम हाँ केस हमको मालूम है केस मालूम है बस उतना पर्याप्त है जी What has happened in this case? The deceased Puran Singh was the owner of the Bolero vehicle. His driver was driving the vehicle. Now that vehicle got dashed against a standing dumper which is insured by the Aplan insurance. Yes. So what happens immediately thereafter? The FIR got registered against the Bolero vehicle driver. Who lodged the FIR? The FIR was lodged by Nanne Bhai. Nanne Bhai is a third person. He's a third person. He's a third person. Now, none. Is it disputed that the Bolero had dashed against your dumper? Have you disputed this fact while reading any evidence? No, man. No. Dumper was standing on the road? Dumper, what they say as per Exhibit P8 is, that's पैराग्राफ 15 नहीं पैराग्राफ 1 मिनट सर मैं पहले कर लूं फिर आप कर ले रोज एक बात सुनिए लड़ाई मत सीनियर से ये बात करने का तरीका नहीं प्लीज पैराग्राफ 15-16 फाइंडिंग में तो ये बोल रहा था मैं जो बताना चाह रहा हूँ मालूम आप बताइए एग्जिबिट P8 बताइएगा Exhibit P8 now what the tribunal has done paragraph 15 on the basis of assumption P8 में क्या है स्पॉट मैप बताइएगा now what they say my lords is that the indicators were not on that is what has not come in P8 and that is why it is assumed that the vehicle
अच्छा, आपने क्या एविडेंस लीड करी कि गाड़ी खड़ी नहीं थी, चल रही थी? With the records of the case, what I can see is that we did not need any evidence, but one aspect which Then is on what important basis you have come here? One important aspect. Was it not your duty to lead evidence to show that there was no negligence on the part of the dumper? If I may just place reliance on one of the divisional bench, prior to that one argument, the claim petition was filed under section 166. Claimants being the plaintiff has a duty at the first go to establish that there was a negligence on the part of the appellant's vehicle. Now that is what has been held by the divisional bench, that in such kind of a case, where the claimants did not discharge an initial duty. Now, what my lords may say is that the claimants did not examine any of the eyewitness. Only two witnesses were examined, my lords. Was the widow and the son. And there is no FIR against my driver, my lords. Just a minute. My lord, my only humble submission is that initial duty was on the claimants. Now, if the criminal records are seen, which they place reliance upon, there's no FIR against my driver. And they have only exhibited, at paragraph 12, it has been discussed, the widow, not being an eyewitness, has exhibited the criminal documents, which is against the Bolero vehicle. There is no eyewitness which has been examined to establish that there is a negligence, which is the pre-requirement under section 166. Now that has not been done. So what this honorable divisional bench judgment says, my lord, in fact, it goes beyond that to say that what has happened in this case, one vehicle caused the accident, that was of a different make. Challan was filed eventually against a different make. Despite the challan being there, the honorable divisional bench came to the conclusion that it was the duty of the claimants to call the investigation officer of police to establish that what was the documents or what was the investigation done as to set the make of the vehicle got changed. Now here is a case, there is no evidence at all by the claimants. I go down to that we did not call the investigation officer of police or the author of P8 matters. But P8, as discussed in paragraph 15, my lord, that's only a naked eye examination of the document. The initial onus was on the claimants, and there is no FIR admittedly against me. That they also admit. The criminal documents exhibited is against the dumper, Bolero G, my lord. So the prerequisite of section 166 is not being made out. चलिए अब आपका क्रॉस एग्जामिनेशन पड़ेगा. क्लेमेंट ने श्रीमती अर्चना पार्वती ने कहा है कि चीफ में आप क्रॉस एग्जामिनेशन पढ़ते हैं आपका उन्होंने उसके रिबटल में क्या क्रॉस किया, पढ़िए प्लीज. चलिए हम पढ़ते हैं आपके लिए. ये कहना सही है कि घटना दिनांक को जिस वाहन से मेरे पति जा रहे थे वह वाहन मेरे पति के नाम ही रजिस्टर्ड है, उक्त वाहन हम लोगों के पास नहीं है. मुझे इस बात की जानकारी नहीं कि घटना के समय वाहन कौन चला रहा था. मुझे इस बात की भी जानकारी नहीं घटना दिनांक को वाहन में कितने लोग बैठे थे. मुझे इस बात की जानकारी नहीं मेरा वाहन मेरे पति का वाहन पेड़ से टकराया था. मुझे इस बात की भी जानकारी नहीं कि मेरे पति की दुर्घटना किससे हुई थी. मुझे इस बात की भी जानकारी नहीं पुलिस ने किस वाहन चालक के विरुद्ध मामला बनाया था. मुझे जानकारी नहीं. मैं आज न्यायालय में अपने पति की दुर्घटना में मृत्यु होने के संबंध में गवाही देने आई. ये कहना सही है पुलिस ने जिस वाहन चालक पर मामला दर्ज किया है उससे मैं क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के लिए न्यायालय में गवाही देने आई हूँ. ये कहना सही है कि पुलिस द्वारा जिस वाहन चालक पर मामला पंजीबद्ध नहीं किया उससे मुझे कोई दावा राशि नहीं चाहिए. यह कहना सही है कि मैंने अनावेदक क्रमांक 1, 2 और 3 को दावा में अनावश्यक पक्षकार बनाया है. वो तो इलिटरेट लेडी है. आपने ये बोला ही नहीं उससे कि ये जो है हमारी गाड़ी गलत नहीं खड़ी हुई थी. शी हैज सेड इट इन एग्जामिनेशन इन चीफ. ये कहना नहीं एक सेकंड आप ही की बहस को जवाब दे रहा हूँ. इसने कहा है
जीप क्रमांक कितने से आ रहे थे? बुलेरो सागर जुगल के खेत के सामने पहुंची तब सरखड़ी के पास मुख्य मार्ग पर अनावेदक क्रमांक 1 लक्ष्मी नारायण के डंपर MP 49 इतने को बिना इंडिकेटर जलाए बिना संकेतक लगाए इतना खड़ा कर रखा था, जिस कारण से माखनलाल द्वारा इतने में डंपर टकरा गया, जिससे बुलेरो में सवार पूरन सिंह की दुर्घटना स्थल पर मृत्यु हो गई। ये तो हेड से एविडेंस होगा, बिकॉज जो if I may respectfully submit जी, if they do not call the investigation officer of police to even establish P8, जी, then the negligence is not proved as per the requirement of 163. If it would have been a case under 163A, then I have no case. इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में आपके खिलाफ कोई चार्जशीट पेश नहीं हुई? नहीं हुई सर। वो और ये पैराग्राफ 12 में देखिए खुद ही बोल रहे हैं। अच्छा, मैं क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है मेरे पास, गवाही भी है, वो इनका ड्राइवर शराब पी के चला रहा था, बट आई वुड वांट टू दैट कि क्रिमिनल डॉक्यूमेंट्स या मजिस्ट्रेट की जो ट्रायल के रिकॉर्ड्स दैट कैन नॉट बी रेड इन दिस। ड्राइवर का बयान हुआ है कोर्ट में, तो मैं इस बार रिलाय कर रहा कैन नॉट बी डंपर के ड्राइवर का, बुलेरो ड्राइवर, हाँ वो भी पढ़ते हैं ना, इसको बयान हुआ है कोर्ट में। अब इसमें जो है एक सेकंड, क्या नाम है ड्राइवर का? माखनलाल। माखनलाल जी तो का बयान हुआ है, उसने साफ सुथरा कह दिया, उसको उसका रिबटल कहीं कहिए, बर्डन उनका था आईओ को बुलाना, बर्डन मेरा थोड़ी होगा। आपका तो है नहीं, आप कह रहे हो नहीं, आप कह रहे हो कि my vehicle was not I do not so say then कि burden will burden shifted is on the you. other insurance No, company. I would say कि burden burden to establish माखनलाल जी का बयान हुआ है, देखें कहाँ हुआ है। हाँ, अरे हुआ है, पैराग्राफ 14 के 3 में पेज 16 में डिस्कस किया उन्होंने। देखें जरा एक सेकंड। इसमें लिखा लार्डशिप ये है कि बुलेरो गाड़ी के ड्राइवर माखनलाल ने अपना कथन किया है, इसमें लिखा हुआ है अनावेदक साक्षी क्रमांक 4 व्यवहार में लिखा है, उससे मैंने बताया, तो मेरे पास भी नहीं। पहला नंबर पैरा 14 में 14 में 14 में है सर, पेज 8 है अवार्ड का। हाँ, उसमें ड्राइवर माखनलाल ने भी अपने कथन किए हैं। दीजिएगा रिकॉर्ड दीजिएगा, हाँ देख लीजिए ठीक है, देख लीजिए, मैं वो कोशिश ही कर रहा हूँ सर, मिल जाए। देख लीजिए। अच्छा, सामने लिखा लिख दिया भाई, कहीं लिखा बोर्ड ने जब लिखा तो कुछ तो होगा नहीं, कैसे लिख दिया उन्होंने। वो ठीक है, उससे तो नहीं है। criminal deposition cannot be read, but I have a copy, उसमें ही आया है वैसे। उसको प्रूव करते वहां से रिबटल होता कर रहा हूँ कि उसको फिर क्यों बोल रहे हैं? चलिए, बट उसमें जो 80-90 की स्पीड में चला रहा था, दारू पिया हुआ। ये कैसे कह देंगे, हमारे कोई मेटेरियल ही नहीं है, कोई भी FIR कोई चालान पाई, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। FIR बाहर का आदमी लिखा रहा है, थर्ड आदमी लिखा है। eventually if there is a negligence of my vehicle, there could have been a fresh FIR, a supplementary चालान, whatever। क्रिमिनल लॉ में प्रोविजन ही नहीं है भाई, फ्रेश FIR, सेकंड FIR, लेकिन it could be a first FIR against me at least, my lord, because under 166 and just vehicle when judgment says, my lord, that the investigation officer of police has to be called by the claimants to prove that PA ठीक है, cannot be assumed by the learned tribunal by a naked eye कि वो हमारे ट्रक इंडिकेटर्स नहीं चल रहे थे। That is what paragraph उसमें सर लिखा यही है, ये जो पैराग्राफ 14 में 14-15 है, जो 14 में लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ सर। आवेदकगढ़ द्वारा प्रकरण में जो अपराध के समर्थन में बोलेरो गाड़ी का ड्राइवर ने कथन किया कि दिनांक इतने की रात को इतने से जा रहा था, ये बिना ये आई विटनेस हो गया,
ये सर आवेदकगण द्वारा प्रकरण में जो अपराध विवरण प्रस्तुत किया गया उसमें उसके पुलिस आधार द्वारा पर उन्होंने फाइंडिंग एक ले ली नंबर पर घटनास्थल आम रोड दर्शाया गया है जहां पर डंपर खड़ा था, तथा 2 नंबर पर जुगल किशोर का खेत दर्शाया तथा 5 नंबर पर बोलेरो गाड़ी खड़ी थी दर्शाई गई है। उक्त अपराध विवरण P1 से ये दर्शित होता है कि जहां पर उक्त डंपर खड़ा हुआ था दर्शाया गया है वह आम रोड के ऊपर सड़क पर खड़ा था तथा पुलिस द्वारा अपने अपराध विवरण फॉर्म में ऐसा कुछ भी नहीं दर्शाया कि उक्त डंपर ने सावधानी से के लिए कोई संकेतिक या इंडिकेटर जलाए थे। वो तो खड़े ही रहते हैं। FIR पढ़िएगा आप, FIR पढ़िएगा जरा, कुछ FIR से फिर मतलब निकालते हैं। हाँ जी जी पढ़िएगा। मैं पुलिस सहायता केंद्र सागर सैनिक के पद पर पदस्थ हूँ, चौकी प्रभारी दिस TPC की नंबर पर कायमी हेतु जिसे लेख किया गया है नकल नालसी जेल में की ग्राम पिपरिया थाना दमोह देहात का रहने वाला हूँ, मजदूरी का काम करता हूँ। मेरे पिताजी बनवाली सिंह साकिन दिस वालों के खेत की रखवाली करते हैं। जो हम परिवार सहित बनमाली सिंह मेहरी में रोड के किनारे रहते हैं। कल रात्रि 10 बजे के करीबन खाना पीना खा पीकर सो गए थे। आज सुबह 7 बजे के करीब पिताजी खुब्बी जी ने उठे तो बताया कि जुगल के खेत में एक बोलेरो गाड़ी एक्सीडेंट शुदा खड़ी है तथा वहीं थोड़ी दूर पर एक व्यक्ति जैसी है। तब मैं जाकर देखा तो बोलेरो गाड़ी बाएं साइड क्षतिग्रस्त थी तथा एक व्यक्ति की लाश वहीं बैठी हालत में थी। सर मैंने हिलाकर सिर व बाएं गाल व इतने सीने में काफी गहरी चोट लगी थी। ऐसा लग रहा था कि सागर तरफ से बोलेरो गाड़ी आ रही थी तो डंपर रोड पर खड़ा था। जो खड़े डंपर में पीछे तरफ से बोलेरो का ड्राइवर तेज गति से लापरवाही पूर्वक चलाकर एक्सीडेंट कर दिया। It is all hearsay. He is not an eyewitness. He saw the incident at 7 a.m. And then there is a description of your dumper also. There is a description. जी चलिए। He also said my lord that the Bolero was driving the ration. वो तो उसने आई विटनेस ही नहीं है, आई विटनेस ही नहीं। सुबह 7 बजे जाकर उसने देखा। I go down to that, but there is no FIR. There is no need for any FIR. चलिएगा। Negligence, they have not proved that by way of. चलिए अब ऑर्डर सुनिएगा। This appeal is filed by the insurance company. Definitely that you will find mention. This appeal is filed by Universal Samio General Insurance Company Limited, being aggrieved of award dated 20/12/2021, asked by Learned Third Additional Motor Accident Claims Tribunal, Damoh, in MACC number 300044/2016, on the ground that in the FIR it is mentioned that negligence was that of the Bolero driver and no FIR was recorded against the dumper bearing registration number MP49H1555. Full stop. No investigation was carried out against the said dumper, and since there is no whisper of dumper in the FIR, therefore the insurance company of the dumper should have been exonerated. Full stop. Placing reliance on the judgment of Honorable Division Bench of this High Court in National Insurance Company Limited versus Srimati Setubai and others, 2008 ILR MP 2367, it is submitted that Honorable Division Bench has discussed the scope of Section 102 of the Evidence Act and has held that in a claim petition filed under Section 166 of the Motor Vehicle Act, if there is change in the version of the eyewitness, then claimants are required to examine the IO and the first informant that how another vehicle came to be implanted. Next para. Placing reliance on this judgment, it is submitted that the insurance company of the dumper should be exonerated. Next, Shri D.N. Shukla, Learned Counsel for
National Insurance Company Limited, that is the insurer of the Bolero vehicle, submits that FIR is crystal clear. It reveals that it is not an eyewitness account. Accident had taken place somewhere in the night, whereas FIR was lodged on the next day morning. Full stop. From the narration of the FIR itself, it is clear that it is not an eyewitness account. Next, it is submitted that insurance company of the dumper did not examine any eyewitness to prove that their dumper was not involved, though there is a specific mention of dumper in the FIR. Next para. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, comma, relevant portion of the FIR, exhibit P2. P2 and Dehati Nalishi exhibit P1, on the basis of which FIR exhibit P2 was lodged, reveals that accident took place at about 10 p.m. Accidented vehicle was seen at 7 a.m. on the next date. Full stop. There is a specific mention of the fact that when रघुवीर है क्या नाम इनका अन्य भाई नहीं when Pubbi Singh got up in the morning, he saw a accidented Bolero standing in front of the fields of agriculture fields of Jugal. Full stop. He saw a person sitting in the Bolero. When they went close to the Bolero, they found that the concerned person was dead after sustaining grievous injuries on various parts of the body. Full stop. It is also mentioned in the FIR itself that Bolero vehicle, which was probably coming from the side of Sagar, had hit the dumper from behind by rashly and negligently driving the Bolero vehicle. As a result, Puran Singh sustained injuries and died. Full stop. It is also mentioned in the FIR itself. Puran Singh was wearing his identity card in his neck, and therefore his name and details could be ascertained, and thus report was lodged. Full stop. Next para. Two things are evident from the report. One, author of the report is not an eyewitness. To this extent, decision of Honorable Division Bench in National Insurance Company will not be applicable because there is no eyewitness to the incident to prove or disprove the negligence of Bolero vehicle. It is all an incident. It is the author of FIR is a person who had seen the accidented vehicle on the next day morning. Full stop. Second aspect is that there is a specific mention of Bolero hitting the dumper from behind. Full stop. Thus, when there is no eyewitness account, then onus was on the owner driver of the dumper to have examined themselves in the court of law to prove that they were not at fault and accident took place purely due to negligence of the driver of the Bolero vehicle. Full stop. Apparently, owner driver of the dumper did not examine themselves. Insurance company of the dumper also did not bother to examine either their own officer, investigator, or owner driver. Now, it is vehemently argued that dumper was, even if standing, in absence of examination of the IO, for which onus was on the claimants, no claim could have been allowed against the owner driver and insurer of the dumper. Next para.
facts in the case of National Insurance Supra are different. Full stop. In that case, originally a FIR was lodged against a truck, and later on a bus was shown to be involved in the accident. Full stop. Under those facts and circumstances, Honorable Division Bench of this court has held that onus was on the claimants to have examined the IO and the eyewitness to prove that accident had not taken place with a truck but with a bus. Full stop. Next para. In the present case, facts are totally different. Therefore, ratio of judgment in case of National Insurance Company Supra will not be applicable. Full stop. In the first information report itself, it is clearly mentioned that accident had taken place between Bolero and the dumper. Full stop. Dumper driver would have been the best witness. Full stop. Since he has not been examined, comma, and there is a mention of this fact by Srimati Archana Parvati that accident had taken place when Bolero had hit the dumper, which was standing without any indicators, etc. Comma, onus was on the insurance company to have put specific questions in this regard, that dumper was standing with all the lights, etc. on. Full stop. Next para. There is another aspect to it. Dumper was standing in the local area where accident took place. Full stop. Report was lodged by the local people of the area where dumper was standing. Full stop. When examined from this aspect, that report was lodged by a person who was not an eyewitness and dumper belonged to a local area, then it is possible and it cannot be ruled out that with a view to give benefit to the local person, dumper was standing on the road, comma, FIR was lodged in such a manner so to give a clean chit to the dumper. But to avail the benefit of the clean chit, onus was on the owner driver of the dumper to have examined themselves to prove the actual fact and should have offered themselves to get their vehicle examined. Full stop. Next para. For the fault of the police authorities, which we are aware that how investigations are carried out and what are the provocations and hindrances in investigation, comma, claimants cannot be put to disadvantage when it is not a case of false implication of a vehicle, as was a case in case of National Insurance Company Limited Supra. Thus, when examined from all these aspects, then impugned award cannot be faulted with. Full stop. Faulted with, especially when circumstances speak for themselves. Full stop. Appeal fails and is dismissed. किस चीज के लिए? चलिए, अरे नहीं हाँ उनको मत बोला करिए भाई. Serial number 60 pandit. Review petition, my lord, the matter was heard and the submissions of the state were considered. Oh, my lords have specifically asked the state while passing impugn order, staying the impugn order, that whether the police constable, my lord, the policy requires that his transfer order or any posting order are to be issued by the establishment board. Transfer matter है. जी sir. बताइए क्या what is the error on fact of the record, page of the record? जी sir. अगर sir if lordship sees the order, my lord, from page number 13 onward. Page number 30. 13 sir, 13. इस आरपी में सर पेज 13 से. आरपी का पेज 13 ये. जी सर. 13 14 में सर 14 पेज का जो सेकंड लास्ट पैरा है. हाँ पढ़िएगा.
it is also submitted that for the transfer of police head constable, there is no need for approval of the police establishment board as per the circular dated 14/2/2007, my lord, annexure P5. Now स्टेट ने जवाब दिया है सर, उनने कहा है कि सर्कुलर के हिसाब से नहीं है, whereas यही सर्कुलर सर हमने एनेक्सर P9 लगाया सर, इनका बहुत क्लियर नहीं था तो P9 जी उसमें भी वही है, बिकॉज दैट थिंग हैज कम फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर माय लॉर्ड। जो प्रकाश वाला केस है सर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट हैज लेड डाउन गाइडलाइन प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया व्हिच इज रिपोर्टेड इन 2006 वॉल्यूम 8 पेज नंबर 1 माय लॉर्ड SCC। इनका दैट सर्कुलर इटसेल्फ सेज दैट इट इज रिक्वायर्ड। वो हाँ वो सर्कुलर में पढ़िएगा सर, आप इनके इससे देख रहे हैं कि रिव्यू पिटीशन में P9 लगा है। P9 इस पेज 72 पेज 72 ये जो थर्ड आया बोर्ड पुलिस स्थापना सर, हाँ इसका सब क्लॉज 2 पढ़िए। उक्त पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा उक्त पुलिस अधीक्षक एवं इनसे नीचे के स्तर के पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण अथवा पदस्थापना के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। आपराधिक प्रकरणों में राज्य शासन के बोर्ड के निर्णय को हस्तक्षेप का अधिकार होगा अथवा बोर्ड के निर्णय क्रियान्वयन के पूर्व राज्य शासन के नाउ माय लॉर्ड दे इन बिकॉज दे इन देयर रिटर्न हैड स्टेटेड कि इनकी जरूरत नहीं होगी ट्रांसफर की। नाउ दिस और इसकी जरूरत भाई इनका रिटर्न का वाला पैरा देखो, इनके रिटर्न के जिस पैरा में इनने बोला है वो पेज 4 पे है सर, पैराग्राफ बहुत लंबा पैरा है सर, पैरा 4 का लास्ट जो कंक्लूडिंग पैरा है पेज नंबर 4 पे है सर। वो इवन अदरवाइज वो सब बीच से पढ़ता हूँ। Yes. Even otherwise, for the employees and constable like petitioner, the approval of the police establishment board is not required in light of. And now this power is gone. Yes, बताइएगा आपसे। Yes, Mr. मैं पेज नंबर 14 my lord, 14 of petition my lord order discuss that my lord। आप ही ने कहा जरूरत नहीं है, ये तो कॉन्ट्ररी टू सर्कुलर है। ये किसके आपके किस ओआईसी ने जवाब बनाया है? इनको बुलवा लीजिए जरा। इसमें रिप्लाई में ही लिखा है। हाँ रिप्लाई में लिखा था, ये तो आपके ओआईसी को बुला रहे हैं, आपको थोड़ा ना कुछ कह रहे हैं। जी सर। जैसे जवाब बनाने वाले लेकिन वकील साहब के साइन हो रहे हैं जवाब के ऊपर आपके। मैं आपको जवाब दें क्या देखने के लिए? हिमांशु 24 डीएसपी वैसे कॉल कर लेता हूँ। नहीं वैसे तो कर लेंगे। वकील साहब कौन है आपके? वकील साहब से तो गलती हुई। क्या नाम है इनका? नाम समझ में नहीं आ रहा साहब। अरे वकालतनामे से मालूम पड़ जाएगा। अरे आप कितना छुपाएंगे? आप जितना छुपाएंगे उतना जो है। आपसे कहाँ छुपेगा? अरे हिमांशु चौबे आपसे। तो इसमें किसने साइन किए? शिव कुमार श्रीवास्तव जी ने साइन किए इसमें वकालतनामे में। बिगड़ देखिए जवाब बना रहे। इसमें 2 दिन का समय दे दें। मैं बिल्कुल बुलाइए। ऐसी मारो श्री श्रेयस पंडित, लर्नेड काउंसिल फॉर द रिव्यू पिटिशनर, श्री मानस मणि वर्मा, लर्नेड गवर्नमेंट एडवोकेट फॉर स्टेट। नेक्स्ट petitioner is seeking review of order dated 25 March 2023 full stop. It is pointed out that contention of the respondents as mentioned in para 4 of their return that for transfer of a police constable there is no need to take the matter to the transfer board is contrary to the provisions contained in the circular dated 14/2/2007 full stop. It is submitted that respondents have inappropriately referred to circular dated 14/2/2007 full stop. Let OIC of the case remain personally present before this court to explain that how he has mentioned in his return that approval of the police establishment board is not required in the light of the policy and circular dated
14/2/2007 full stop. Let Shri Himanshu Chaube, DSP JNPA, remain personally present on 10 April 2023, failing which this court may have to take coercive measures seeking his presence. Till then, transfer order of the petitioner shall remain in effect. Final hearing cases, serial number 4. My lord, in this matter, yesterday I have sought time to read out the reply, my lord. जी. I have read the reply, my lord. क्या मैटर क्या है पहले ये तो My lord, matter is related to promotion, my lord. आप बताया, कल आपसे एक सवाल पूछा था. Yes, my lord. आपके किस जूनियर का प्रमोशन हुआ है? Yes, my lord. Kindly see, my lord, Annexure P1, my lord. P1, yes. P1 में, my lord, 41 नंबर देखें, S कासिम अली. S कासिम अली. 41. पेज नंबर 9 में, my lord. 41, ठीक है. कासिम अली. And NL मेघानी, पेज नंबर 40, serial number 48. जी. After that, my lord, Shripal Jain, serial number 53. Yes. ये पार्टी हमने पिटीशन में भी बनाया हुआ इनको रिस्पोंडेंट. ये बता दीजिए, आपसे जूनियर हैं. Yes, my lord. Now, my lord, kindly see the gradation list which is passed by the respondent, my lord. Page number 31 is important, my lord. Annex है, my lord. P4 है, my lord. P4 का पेज नंबर 31 देखें. ये बताइए. My lord, my name is at serial number 136, KN Pradhan. जी, जी. Now, my lord, kindly see 140 S Qasim Ali. जी. यहाँ पे देखें, my lord, at पेज नंबर 172 श्रीपाल जैन, my lord. And 154 में भी देखें नंदलाल NL मेघानी, जिनको हमने पार्टी बनाया, ये जूनियर समाज. श्रीपाल का किस नंबर पे है? 172. श्रीपाल का, my lord, 172. जी. ये प्रमोशन ऑर्डर किस तारीख का है? ये प्रमोशन ऑर्डर है, my lord, 1999, my lord. 99 का. Yes. Annexure P1. जी. आपने पिटीशन कब लगाई? In the year, my lord, 2002, my lord. जी. बताइए. But his case was considered, he was OA grade 3. His case was considered for promotion to OA grade 2. जी. If your lordship is kind enough to see R1, my lord. R1. हमने आपका जो पिटिशनर है, आपका ग्रेडिंग लिखा है, उनका सिलेक्शन आप देखेंगे. Till 85 he could not be selected because of his adverse ACS grading. पेज 6 पे दिखा रहे. जी, हमारे रिप्लाई का. हाँ, ठीक. And 87 he was selected. He did not. 85 say he was selected. 87 selected, my lord, but he did not join because he was getting posting outside Bhopal. He wanted Bhopal. So he did not. He joined in 88. ये कहाँ लिखा है आपने? रिप्लाई में होता है. रिप्लाई में लिखा है. लिखा है, बट इसका कंसेंट इसलिए नहीं है, मानो, क्योंकि 83 में हमें असिस्टेंट ग्रेड 2 का प्रमोशन दिया है हमने. अगर ये इस ग्राउंड को ले रहे हैं तो एक मिनट रुक तो जाइए. अच्छा, रुक जाइए. यस जी. कहाँ लिखा है आपने? पैरा 5.5 पेज 3 में. पेज 3 में. हाँ. जी. Subsequently he gave his joining in 89. ठीक है, वो तो ठीक है, वहाँ पर कोई डिस्प्यूट नहीं है. After OA ग्रेड 1 के लिए आपको अकाउंट्स पास करना था. जी. मानो, उसके लिए भी मैं रीड आउट कर देता हूँ. इनका सर्कुलर देखें, मानो. हाँ, बताइए प्लीज. R2 है, पेज नंबर 7 देखें, मानो.
Page number 7, yes. My lord, I am reading the clause 2. The condition of undergoing 3 months training for promotion grant of higher pay scale will be relaxed in respect of employees who are already working as OA grade 2, OA grade 1 as on 1/1/1989. जी. These employees working as OA grade 2 and OA grade 1 shall be eligible for promotion grant of higher pay scale irrespective of the fact 1189 को कहाँ है आपका प्रमोशन? तो हुआ है 1/89 को 13 तारीख को हुआ है, 15 जुलाई 83 को हुआ है ग्रेड 2 पे। कहाँ है वो प्रमोशन? एनेक्सर P3 देखे मैम लोग, पेज नंबर 19 में। पेज नंबर 19, यस। ये तो आपका 83 का तो अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन है, ओए ग्रेड 3 हुआ। अरे आप तो ग्रेड 2 का पूछ रहे हैं। ग्रेड 2 कब बने आप? ग्रेड 2 तो 89 में बने, ये लिख ही रहे हैं ना। मैं नोट 89 में बने। 89 में बने ना। 89 में बने ग्रेड 2। और मैं लोग इनके किस तारीख को बने? 89 में गिव ज्वाइनिंग ऑन 16/8/89। और ये जो आप सर्कुलर पढ़ रहे हैं पेज 7 पर, इसमें एक 89 को जो ग्रेड 2 थे उनको तो एक 89 को आप ग्रेड 2 नहीं थे, ग्रेड 2 नहीं थे, तो फिर कैसे रिलैक्सेशन मिल जाएगा? मैलोड मैं बता दे रहा हूँ, बट मैलोड जो हमारे से जूनियर थे वो भी हमारे सेम पोस्ट पे थे। हमें उससे मतलब नहीं है, आप अपनी एलिजिबिलिटी की बात करिए। बता देना मैलोड। एनेक्सर P1 देखें, पेज नंबर 8 देखें, इसमें इन्हें छूट दी हुई है कि आप अगर ये एग्जामिनेशन क्लियर नहीं किया है तो आप ये ऑर्डर रिलीज होने के बाद में आप 3 मंथ्स के अंदर इसकी ट्रेनिंग कंप्लीट करके ये एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। That is a different aspect, totally different aspect. पेज नंबर 13 देख लें मैलोड। 13, yes. मैलोड पैरा नंबर 3 देखें, the promotees who has not undergone the accounts training would be required to undergo the accounts training and pass the associates examination in accordance. पढ़ रहे हैं आप? पेज नंबर 13 मैलोड। पेज नंबर 13 पेज नंबर 13 तो कटा हुआ है। What is this? My lord, the order of the promotions. प्रमोशन के ऑर्डर की कंडीशंस तो पेज नंबर 11 पर दी हुई हैं। 11-12 पे भी दी हुई है मैलोड, और पेज नंबर 13 में भी दी हुई है। 13 का क्या है? 13 का पैरा नंबर 3 है मैलोड। पैरा नंबर 3 क्या? The promotees who has not undergone the accounts training would be. I'm not able to read. My lord, I'll supply. But in fact, subsequently he appeared in the examination and failed. तो आप वो भी लेंगे तो भी आप जी। और this petition is filed being aggrieved of the decision of the respondents in not promoting the petitioner to the post of OA grade 1. Petitioner's contention is that while order dated 26/11/99, annexure P1, persons junior to him, namely Shri S. Qasim Ali, N.L. Meghani and Shripal Jain were promoted from the post of assistant grade 2 to assistant grade 1, as can be seen from the seniority list annexure A3 issued on 15th July 15th July seniority list order of confirmation on the post of OA grade 3 dated 15 July I'm sorry from the seniority list contained dated 2/2/79 contained in annexure A4. Being aggrieved of this, it is submitted that petitioner should have been promoted in as much as similarly situated persons were given promotion, while impugned order annexure A1
with the further stipulation that if promotee had not undergone the accounts training, then he will be required to undergo the accounts training and pass the associated examination in accordance with the instructions contained in the board circular dated 30/8 1985. Next paragraph. Thus, it is submitted that if petitioner would have been given an opportunity, keeping his seniority in mind, then he could have been promoted and given an opportunity to pass said examination. Full stop. Reliance is also placed on annexure on the circular of the Electricity Board dated 30/8 1989, wherein it is mentioned that the condition of undergoing 3 months training for promotion / grant of higher pay scale will be relaxed in respect of employees who are already working as OA grade 2 / OA grade 1 as on 1/1/1989. Full stop. Next paragraph. Shri Anup Nair in his turn submits that firstly, petitioner was not given promotion on the post of OA grade 2 along with his juniors, as 2 of his ACRs were not up to the mark, and therefore for the year 1981, 1982, 1984 he was not selected. Full stop. Thereafter, petitioner was selected for promotion to the post of OA grade 2 in the year 1985, 87, 88, but he did not join because he was given posting outside Bhopal. Full stop. Eventually, petitioner joined as OA grade 2 on 16/8/1989 in City Division South Bhopal. Next paragraph. It is further submitted that order annexure P1 is in relation to those OA grade 2 who were promoted as OA grade 2 prior to 1/1/1989, and therefore there is a specific mention of the fact that persons who had not undergone the accounts training will be required to pass the associate examination in accordance with the instructions dated 30th January 1989 as contained in annexure R2. Full stop. Next paragraph. It is also submitted that petitioner eventually appeared in accounts training examination and failed the same. Therefore, he cannot make any bone of contention in regard to his non-promotion. Next. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, it is evident that firstly, petitioner's case will not be governed by board circular dated 30th January 1989, annexure R2, in as much as he was not working as OA grade 2 / OA grade 1 as on 1/1/1989. Full stop. Actually, he was promoted and joined as OA grade 2 on 16/8/1989. Full stop. Similarly, clause 3 read by the petitioner as is annexed to annexure A1, that is order of promotion dated 26/11/99, will not be applicable to the petitioner's case because petitioner has failed to demonstrate that any of the persons who were given appointment were promoted / appointed as OA grade 2 after 1/1/1989. Full stop. Therefore, that relaxation which is mentioned on page 13 will not be available to the petitioner as he was not promoted as assistant grade 2 as on 1/1/1989. Next paragraph. Thus, when petitioner did not fulfill the necessary qualification,
and was not entitled for relaxation, then petitioner cannot claim promotion, dehors the rules and the circulars which were applicable in this regard. Thus, petition being devoid of merit and petitioner having, and it is an admitted position that petitioner did not pass the accounts training examination in a examination, which was a condition precedent for promotion to assistant grade to the post of assistant, OA grade 1, petition is devoid of merit, deserves to be dismissed and is dismissed. Serial number, खरे सबका नाम डाल देना, स्वप्निल खरे. Yes. स्वप्निल खरे. serial number 5, Sri Shivam Hajari, Srimati Kanak Bewa. केस 3 बजे ठीक. कुछ पर्ची दे रहे हैं, क्या पर्ची है? Judgment है सर, मैं photocopy आज ला नहीं पाई सर. Lord, I have also given citations. I'll be relying on my lord. My lord, this is a case. My lord, I have copies of those. किताबें निकल जाने थी. I have copies of those judgments. अच्छा ठीक है, शुरू करिए. My lord, this is a case whereby the petitioner who was working as constable in CRPF has been dismissed from his services. Constable in CRPF. Appointed on 5/4/1985. 5/4/85 appointment. Thereafter, he underwent training and was posted in Srinagar till the year 1991. 1991 posted. Yes, my lord. After that, my lord, he was on the airport when he was bitten by a dog, my lord, on 30/4/1993. 30/4/1993, he was bitten by a dog. While he was performing his duties on the Srinagar airport. Bitten by a dog. At Srinagar airport. While he was performing his duties. My lord, thereafter he was admitted in 20-bedded hospital CRPF Srinagar on 11/5/1993. 11/5/1993 admitted. कितने दिन बाद कुत्ते काटने के? नहीं, यस माय लॉर्ड, उस समय हमको इनिशियल ट्रीटमेंट दिया, फिर इतने दिन बाद हमको एडमिट किया, फिर वहां से डिस्चार्ज करके हायर हॉस्पिटल भेजा, ये बोल के कि हमको और ट्रीटमेंट की जरूरत हुआ. I'll give that list of date as well, my lord. From the Srinagar hospital, my lord, we were discharged from 20-bedded hospital. We were discharged on 14/5/93 and we were referred to 92 military base hospital, Srinagar. 92 base hospital, Srinagar. My lord, there the medical specialist at this hospital, my lord, on 17/5/93 said that we need a close supervision and light seated duty can only be given to us. My lord, thereafter we performed our duties, my lord. We are undergoing this treatment and the chart is given at para 5.9 of the petition, my lord. Yes, sir. My lord, whole chart from 14/5/93 till 13/11/97, whole chart is there at para 5.9 of our petition, page 4. Yes. We are undergoing this treatment. While we were undergoing this treatment, my lord, in between this, my lord, we were given, my lord, absented from our duties from 9/2/96 to 12/6. क्या चीज my lord? 5/93 के बाद आप रीवा कैसे आ गए? my lord, वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ. आगे हम absent की ड्यूटी से, my lord, we absented from the duties and we went to Riva for, my lord, this treatment, my lord. उसके बाद, my lord, when we came back, we were, my lord, given regular, our absent dates were counted as leave and we were working, my lord, thereby, and we were punished with 25 days of confinement, 2 lines, with effect from 21/3/97 to 14/4/97, my lord. आप हम वापस जब आए, my lord, 93 से 97 तक आप गायब रहे? नहीं, my lord, हम सिर्फ ये, my lord,
from 9 to 96 to 12/6/96 क्या हो गया था? and 11 से ग्रीन हो गया था कि क्या हो गया था? मतलब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई थी उसको, दैट इज कम ऑन रिकॉर्ड एज वेल। क्या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम? मतलब he was कुत्ता काटने से या तो जो है मतलब आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दैट फील्ड बट मतलब आई से दिस, कुत्ता काटने से क्या होता है? मतलब आई एम सपोजिंग कि देयर कैन बी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बिकॉज़ समझना चाह रहे हैं ना, मतलब कुत्ता काटने से कौन सी बीमारी होती है? मतलब रेबीज होती है। रेबीज होती है मतलब उसमें फिर हाइड्रोफोबिया भी आ जाता है तो कभी-कभी, दैट इज रेबीज जब हो जाती है तब होता है उसका सिम्टम है मतलब। तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आपको रेबीज डायग्नोस की गई क्या? नो मतलब वी वर मतलब आई विल कम टू दैट। इनके सीएमओ जो इनके सीआरपीएफ के हैं, दे आल्सो से दैट वी वर सफरिंग फ्रॉम क्लिनिकल सफरिंग और यू वर सफरिंग। I was suffering from clinical depression वाला। नहीं थोड़ा समझना पड़ता है ना भाई, वी में क्या आप भी साथ में सफर कर रहे थे क्या? हो सकता है वकील साहब इतना क्लोजली आइडेंटिफाई हो जाए क्लाइंट से, साथ हमको तो एनओसी हो के हमारा डबी मिला है। अच्छा ठीक है, देयर इज नो चांस but my lord the fact is ki CMO of CRPF has also admitted to this fact that we were suffering from clinical depression and psychological problems my lord. If my lord permits I'll show that as well my lord. That is on annexure P5 my lord, जो हम पहले एब्सेंट किए थे मतलब जो हमारी एब्सेंटिज्म को लीव मान के कंसिडर करके हमको वापस ज्वाइनिंग दे दी गई थी, उस ऑर्डर में है P5 मतलब पैरा 2 पेज नंबर 20 मतलब अब बढ़िएगा। The CMO Group Center Hospital CRPF Khatkati on reporting back to the said Constable Sachulal has examined the individual and submitted report wide letter number so and so dated so and so. As per the report of CMO, Constable Sachulal is suffering from mental depression and he was continuously under medical treatment since August 93. Medical documents in support of his treatment taken from the आपको नौकरी में वापस ले दिया। यस मालूट वापस ले लिया, और ये जब वापस लिया मालूट तभी हमको वापस लेते ही 25 डेज का कंफाइनमेंट टू लाइंस और पिट्ठू जो बैक पैकिंग होता है वो पनिशमेंट दे दी मालूट। सस्पेंशन रिवोक, अब सस्पेंशन में थे ना अभी तो लिखा है 21 पे पढ़िए तो yes ma'am accordingly इतना सच्चूलाल who was placed under suspension with effect from इतना is hereby revoked from suspension from इतना and his suspension period इतना भी treated as on duty। ये तो सस्पेंशन हुआ। yes सस्पेंशन और ऑर्डरली रूम पनिशमेंट का भी उसी में ऑर्डर my lord, I'll read that. After considering the mental depression of the individual as well as his prolonged medical treatment and report of CMO Hospital CRPF Khatkati, the undersigned comes to the conclusion that it is not desirable or practicable to hold departmental inquiry against the said Constable Sachulal, and therefore the departmental inquiry to be held wide memorandum number so and so dated so and so dispensed with, and the individual be dealt in orderly room for his unauthorized desertion or absence। उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पे हमको मतलब 25 days of confinement to line। क्या हुआ? उसके बाद मालूट on when we were being punished मालूट we again absented मतलब I absented मालूट I absented from the punishment मालूट। now our ग्रामर तो सही कॉनोटेशन में आएगी, इसमें एक रहता है एक प्रेमिक। अरे भाई हम क्या होता है मालूट हो सकता है आई बिलोंग टू सागर मालूट, बुंदेलखंड में हम ही बुंदेलखंड में तो अंग्रेजी बोली नहीं जाती है वो तो हिंदी में बहस करिए, मालूट के सामने बोलना पड़ता है। नहीं आप हिंदी में बहस करिए, फिर हम बोलिएगा हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। बुंदेलखंडी बोल लेंगे आप, करिए बुंदेलखंडी में बहस करिए। As long as you are using English medium, please use correct grammatical। वैसे मैं बुंदेलखंडी बोल सकता हूँ लेकिन I'll stick to English। जी जी my lord, I was suspended and then taken back my lord। और the ground for our taking back was clear from that order। वो देख लिया उसके बाद आगे की बात बताइए। उसके बाद my lord जब हमको पनिश किया पनिशमेंट ऑर्डर my lord वो ऑर्डरली रूम था तो that is no order, they have admitted this in their reply as well। क्या
कि this in their reply para to orderly room जो मतलब I just read उसमें orderly room में we are dealt with वहां पे हमको 25 दिन confinement to lines का punishment और पिट्ठू जो बैकपैकिंग होता है वो punishment दिया तो that is admitted fact para 2 में है reply में अरे भाई इसके बाद मतलब we absented from our duty we absented I absented from my duty मैं केस बंद कर दूंगा मैं अगर आपने किया वी कहा तो I absented from duty my then my lord I say my lord that our grounds are my lord proportionality of the punishment. Where is the order of punishment my lord, my lord. That is on annexure P2 my lord. P2 क्या लिखा है उसमें? उसमें मालूम ये लिखा है कि हमने रिपोर्ट नहीं किया एंड एज फार एज मेडिकल पिट्टू ड्यूटी लगाई गई थी हाँ लाइन पे जो कन्फाइनमेंट दिया हाँ मालूम तो उसमें हमारा कहना है कि जब पनिशमेंट जो हमें किया गया मालूम दैट इज नॉट प्रोपोर्शनल बिकॉज व्हेन इट इज एन एडमिटेड फैक्ट that we are undergoing. Did you file any appeal against that order? Yes, my lord. We filed an appeal, my lord. That has also been dismissed. P3. P3. No, that is the order of appeal against the order, punishment order annexure P2. I'm asking you that when you were given punishment, when your suspension was revoked. No, against that we did not. Against that you did not file any. We absented after that. So how can you absent after that? Please, my lord. That is the crux of the matter. I absented, my lord. But I say, my lord, you admit that order of punishment as contained in annexure P5, my lord. P5 was never put to challenge. Never put to challenge. In fact, my lord, if my lords will must confine yourself to here. Once you did not challenge that order, my lord, in appeal for any superior authority, that order is not under challenge. We challenge our dismissal. I understand. My lord, your dismissal is आपने इतनी बड़ी कहानी बताई हम उसको क्रक्स में बता दे रहे वहां तक तो सहानुभूति के पात्र थे आप P5 तक P5 में आपके खिलाफ एक ऑर्डर पारित हुआ सस्पेंशन रिवोक किया आपको लाइन अटैच किया गया जो भी लैंग्वेज है my lord, orderly my lord, council will desirable इतना to held wide memorandum इतना council my lord, as far as I know my lord, orderly room के जो punishment order होता है my lord, that cannot be challenged. It cannot be challenged. Petty punishment, but it is given in Rule 32, my lord. So why did you not join at the after considering the mental depression of the individual as well as his prolonging medical treatment and report of CMO GC hospital CRPF Katkati, the undersigned comes to the conclusion that it is not desirable or practicable to hold a departmental inquiry against Itna Sachulal, and therefore the departmental inquiry proposed to be held by memorandum Itna is dispensed with, and the individual be dealt in orderly room for his unauthorized desertion / absence. Accordingly, सच्चू इतना प्लेस इतना अब ये जो पोर्शन है ये इस ऑर्डर में ऐसे कोई पनिशमेंट ऑर्डरली रूम का क्या है माय लॉर्ड दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि माय लॉर्ड उसके अगेंस्ट एज फार एज चलिए उसके अगेंस्ट होता तो आप ऑर्डरली रूम में क्यों नहीं गए माय लॉर्ड ऑर्डरली रूम में गए उसके बाद हम सेम डे 4 दूसरे दिन जब से हमारी पनिशमेंट चालू हुई 4 बजे वी लेफ्ट द प्लेस वी नहीं यू लेफ्ट आई लेफ्ट द प्लेस and thereafter punishment was imposed. ये जो है P2 impugned order पढ़िएगा P2 पढ़िएगा इसमें भी my lord दे से कि उन्होंने नोटिस 4 बार भेजे हमको रिसीव नहीं हुए my lord relevant part is on page 16 Page 16, yes. 7, paragraph 7. After carefully examining pros and cons of the issue, I agree with the report of EO, inquiry officer, and come to the conclusion that Constable Sachu Lal of this group center is guilty of charge of absenting from line campus from so
21,397 without proper permission from the competent authority. The delinquent again reported in GC campus on 2798 at 2010 hours and deserted the campus. My lord, we reported, but since, my lord, we were not allowed to join. Not you were not. I reported, my lord, and I was not. My lord may consider this, my lord. I'll try to change this habit. For this case, उनसे जाके असिस्ट कर रहे हैं ना, उनसे पूछिए. For this हम तो वही पढ़ते हैं स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन की किताब, उसमें बोलिए वी को आई कर सकते हैं क्या, ऐसा दिया हुआ है क्या? आपने पढ़ी नहीं पढ़ी है? उसमें है क्या? उसमें ही को शी तो है, वी को आई है क्या? नहीं है ना, बैठ जाइए. मतलब इस केस में कंसिडर कर ले. I'll change this habit of mine जो पुरानी बुंदेलखंड की वजह से. नहीं, बुंदेलखंड की वजह नहीं. डोंट ब्लेम बुंदेलखंड, क्योंकि मालूम मैं वहीं पे हम blame बुंदेलखंड. वहीं पे हम. And he will take offense. Now you cannot blame बुंदेलखंड. He will take offense. Personally, he will take offense. नहीं, I am also from बुंदेलखंड मालूम. अरे भाई वहीं रह के हम तो ससुराल है बुंदेलखंड में. बुरा मान जाएगा. बुंदेलखंड को ब्लेम मत करिए. हाँ. तो सर ऑन 2798 यहाँ पे लिखा हुआ है वी रिपोर्टेड बैक. You reported. I report, मतलब for this case it may be considered. Without proper permission of the competent authority, the delinquent again reported in GC campus on 2798 at 2010 hours. कितने साल बाद? सवा साल, 1.5 साल बाद, सवा साल बाद. 21/3/97 को आपने डिजर्ट किया और 2/7/98 को 1 साल 3 महीने बाद, ऑलमोस्ट 4 महीने. 4/7 को फिर चले गए. 1 साल. Because we are not allowed to join, इसलिए हम चले गए. हाँ. Without proper permission from the competent authority, which indicates his unsuitability as a member of the force and disinterest in service. Therefore, I have come to the conclusion that Constable Sachulal is not a fit person to be retained in a disciplined force like CRPF. I therefore, in exercise of power vested in me under section 11(1), now this is also one of our grounds. 11(1) is for minor penalties, but using powers under 11(1) of CRPF Act 1949, read with Rule 27 of CRPF Rules 1955, hereby impose the penalty of dismissal from service. For that, we'll rely on this, ILR 2018 1916. सेक्शन देखें 11(1) क्या है? Yes, or come to that. और रूल 27 भी देखें क्या कहता है. Rule 27 to it empowers them to in fact the same point is squarely covered in the judgment I have just forwarded. पहले रूल 27 तो देख लें. रूल 27 क्या कहता है? सेक्शन 11 देखें 11 तो देख लिया, 27 पढ़िएगा. 27 क्या कहता है? जी बताइए क्या जजमेंट है, बताइएगा. मतलब दिस इज ILR 2018 MP 1916. पढ़िएगा. मतलब I'm reading from paragraph 18. Yes. Although there is a little bit difference, he was only absenting for 7 days. But on the legal aspect, under such fact, circumstances, and the legal position as is attaining today, rival contentions are to be appreciated. It is apparent from Office Order Annexure P1, in our case would be P2, that charge on the petitioner was that he left the group center on so and so at so and voluntarily absented till for a period of 7 days on his own sweet will, reported for duty at so and so. Petitioner was charged under the provisions of Rule 27 of CRPF Rules 1955. Punishment has been inflicted on him by the commandant exercising the power vested in him under Section 11 CRPF Act 1949. Read with Rule 27 of CRPF Rules 1950.
Rule 27 of CRPF Rules 1955 provides procedure for the award of punishment and is contained in Chapter 6 of CRPF Rules 1955. As per the table given in the said rule, the punishment of dismissal or removal from service from the force can be inflicted on constables and enrolled followers by the commandant. Therefore, the contention, my lord, this is with regards to Rule 27. My lord, now, as far as Section 11 of CRPF Act 1949 is concerned, Section 11(1) read as follows. Then, my lord, section we have just read. But after that, a plain read of this section makes it apparent that Section 11 of CRPF Act 1949 deals with minor punishment as compared to the major punishment. The language of the section is unambiguous and it says that the commandant or any other authority or officer, as may be prescribed, may subject to any rules made under this act, my lord, award in lieu of or in addition to suspension or dismissal anyone or more of the following punishments to any member of the force whom he considers guilty of disobedience, neglect of duty, or remissness in force. Thus, it is apparent that exercising authority under the provisions of Section 11(1) of CRPF Act 1949, as is mentioned in the impugned order, commandant was not entitled to inflict penalty of dismissal, as it amounts to a major penalty provided under Section 10 of CRPF Act 1949. Therefore, it is apparent that only a minor punishment, as mentioned in Section 11 of CRPF, could have been inflicted, and Section 11 do not permit the commandant to inflict major penalty of dismissal from service. In fact, Section 10M, for absenting. This is our. Then, my lord, we are also on the. My lord, this is the technical issue. Then we are also on the proportionality of the punishment. My lord, for that, my lord, we say, my lord, facts. According to the facts, my lord, we say because we were undergoing a medical treatment to which they have admitted. CMO has said that we were. Have you produced medical prescription when you had absented on 21/3/97 to 2/7/1998? Have you produced the medical certificates on record? My lord, paragraph number 5.9 of our petition gives a 5.9. My lord, what I'm saying is, I'm asking you a very simple question. You talk of medical certificates. Have you produced medical certificates starting from 21/3/97 to 2/7/98? My lord, we did produce it before the authorities, CRPF, my lord. They have themselves admitted. We just read the order, my lord, P5. उसमें they themselves have admitted. P5 की बात नहीं हो रही, P5 की बात है. देखिए, ये वकालत आप बहुत लंबी नहीं कर पाएंगे. नहीं, my lord, I'm saying that. समझ लीजिए, P5 96 का है. My lord. 96 के बाद में आप 21/3/97 से एब्सकॉन्ड किए हैं. मैंने आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा है कि 21/3/97 से जुलाई 98 तक जब आपने रिपोर्ट बैक किया, उस बीच के मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन लगाए हैं आपने? आप डायरेक्ट सवाल का डायरेक्ट जवाब दीजिए. मतलब प्रिस्क्रिप्शंस आर नॉट देयर. बस बट जजमेंट बताइए, कौन सा जजमेंट है प्रोपोर्शनैलिटी पर? But my lord, paragraph 5.9 has been admitted by them. They say that it has happened, my lord. They say it is a fact. चलिए, it is an admitted fact. दीजिए रिप्लाई देख लें, my lord, एक मिनट. ठीक है. रिप्लाई में, my lord, para 11 of their reply, my lord. They say that it is a fact. Before their own authorities admitted, and now they have admitted in their reply, my lord. Anything else? My lord, now we come to proportionality. My lord, after considering this, that he was undergoing medical ailment, my lord, there are these are the judgments I'll be relying upon, my lord. Under 2004 volume 4 SCC 560. इसमें, my lord, I'll be relying upon para 12 onwards. Para 12.
This is a case, my lord, whereby a police constable of Delhi police was dismissed medical from, leave for more than 2 months. Sorry. my lord, he was dismissed. My lord, this is after he was dismissed, he was considered as on medical leave. my lord. ठीक है. And then he was given. 2009 का क्या है? My lord, should I read paragraph? Yes. Just where I'm trying to learn. Identical facts नहीं, but my lord, what I'm trying to say is that Facts ही अलग है भाई केस के. क्या my lord? Facts ही अलग हैं. Facts identical नहीं है my lord. It is also on the absenteeism. It is not simpliciter. Here the person was on a sanctioned medical leave and thereafter he did order not of dismissal was passed. ठीक है. He did not report back on time, my lord. That is why, my lord. चलिए 2009 में क्या है relevant? My lord, ये paragraph 12 एक बार if my lord permit. पढ़िए. The disciplinary authority, without caring to examine the medical aspect of the absence, awarded to him the punishment of removal from the service, since their earlier order of termination of the appellant service under the temporary service rule did not materialize. No reasonable disciplinary authority would term absence on medical grounds with proper medical certificate from government doctors as grave misconduct in terms of the Delhi police rules. Non-application of my सेकंड जजमेंट क्या है? My lord, 2008 मतलब ये 8 SCC yes 8 SCC my lord, इसमें हमारे अगेंस्ट भी है, बट दिस इज इन ऑल फेयरनेस my lord, इसमें भी 5 साल का था. इसमें कंसिडर किया कि कब डिजर्शन मतलब कुड हैव बीन डिसमिस्ड. इसमें 5 साल एब्सेंट था. इट हैज बीन कंसिडर्ड एज my lord not grave enough punishment to dismiss someone. Page number, para number, my lord, para 14 onwards, my lord. Para 14, yes. In this, my lord, unauthorized absence was of 5 years, my lord. Yes. ठीक. और in 2009 is my lord my lord, in this in detail proportionality when can be considered has been discussed, my lord. From para 15 to 19, my lord, and from 19 onwards is the operative part. If my lord permits, I'll read whole, or I please 19 के आगे जो आपको ठीक लगे वो पढ़िए. My lord, I'll read para 19 onwards. Yeah. The doctrine of proportionality is thus well recognized concept of judicial review in our jurisprudence. What is otherwise within the discretionary domain and sole power of the decision maker to quantify punishment once the charge of misconduct stands proved. Such discretionary power is exposed to judicial intervention if they exercise in a manner which is out of proportion to the fault. Award of punishment which is grossly in excess to the allegations cannot claim immunity and remain open for interference under limited scope of judicial review. One of the tests to be applied while dealing with the question of quantum of punishment would be, would any reasonable employer have imposed such punishment in like circumstances? Obviously, a reasonable employer is expected to take into consideration measure, magnitude and degree of misconduct and all other relevant circumstances and exclude irrelevant matters before imposing punishment. Yes. In a case like the present one, where the misconduct of the delinquent was unauthorized absence from duty for 6 months, but upon being charged of such misconduct, he fairly admitted his guilt and explained the reasons for his absence by stating that he did not have any. My lord, we have also, if impugned order be seen, my lord, we have also given a representation, although after EO had completed his inquiry, we gave a representation to the authority, the commandant, my lord, and we stated that we in fact admitted our absence and stated
that we were absent because of medical problems we were suffering. So this is also identical in this case, my lord. The punishment is not only unduly harsh but grossly in excess. My lord, representation is not there on record, my lord, but impugned order may I'll read the relevant part. Representation is not on record. But my lord, impugned order may. Disciplinary authority has incorporated his. Yes, my lord. He has page 2 of the my lord impugned order, page 14 of our writ petition. Usme they have. I'll read it. The contentions in para 1 have relevance to the present charge to the incident. The contentions in para 1 have relevance to the present charge to the incident that is referred in para 1 of his reply. In that he is said to have been involved in an incident in J&K during 1993 and whereafter he has been suffering from psychological problems. In support of the incident, the admission discharge slip of 92 base hospital, Army Hospital and 20-bedded CRPF Hospital, Srinagar have been attached, which show that he was admitted for having been bitten by a dog in 93. As far the fact that on explaining his mental state and the treatment he was taking from psychiatrist in GM, this is Government Medical Hospital, Riga, before the CMO has referred him to GMH, Riva, on 23/10/96 is found to be incorrect statement as per provisions. This is there as per provisions contained in para 8B of the CRPF medical manual. All the personnel and their families would attend CRPF MI room hospital at the station, which would be the recognized institution for their medical care. They may attend other hospital only if referred by the CRPF medical institution. This can be relaxed in case where there is no CRPF establishment at station. Rule 61 of the medical attendance rule have also similar provisions in that a government servant shall be entitled to take treatment in such a government hospital at or near the place where government servant falls ill, as can, in the opinion of the authorized medical attendant, provide the necessary and suitable treatment. Therefore, the medical officer can refer a patient to the nearest hospital, government hospital, or to the CRPF base hospital only. To the contrary, the patient has appeared before the medical officer on so and so and the MO recorded in his prescription that he is a case of depression, consulted psychiatrist at Riva, etc. At no point of time MO has referred him to the GMH Riva on so and so. The MO had recommended that the patient is feeling better to continue the same treatment and the patient be sent on leave to get him checked from psychiatrist specialist Riva. The recommendation of the medical officer was thus for leave only. Yes, madam. My lord. Petitioner was charge seated for misconduct. My lord, he absented from the campus without. हो गया सब. हाँ. That आप देख 11 में 11 को मैं एक बार पढ़ देती हूँ. 11 itself says कि the order punishment of dismissal can be imposed. पढ़िएगा 11 पढ़िएगा जरा. Yes, ma'am. And there is one judgment today I did not bring, my lord, but Supreme Court has also dealt with this issue. Was earlier raised this issue. Yes, ma'am. The commandant or any other authority or offence as may be prescribed may, subject to any rule made under this act, award in lieu of or in addition to suspension or dismissal any one or more of following punishment to any member of force whom he considered to be guilty: disobedience, neglect,
or duty and reminisce, suspension in addition to suspension and dismissal. So by invoking section 11, my lord, the punishment of dismissal can also be imposed, my lord. And my lord, petitioner is, my lord, member of uniform service, and these member of uniform service, my lord, they cannot absent themselves, my lord, on a frivolous plea. If such indiscipline, my lord, goes unpunished, it would greatly affect the discipline of the force, my lord. And on merits, if my lord wants, I judgment, my lord. जजमेंट दीजिएगा मिस्टर श्रीवास्तव। 2005, volume 13, SCC 709. Paragraph 8 I am relying. I will not take much time. Paragraph 8. And another judgment, my lord, 2004, volume 7. 2004, volume 7. SCC 574. In this, my lord, paragraph 7. Yes. And the last judgment, my lord, it is on quantum, on the question of the issue of judicial review, my lord. My lord has already referred this in many cases, in my cases also, my lord. This is 2020, volume 3, 423. Paragraph 8 to 15, my lord. They have referred all the judgment related to judicial review, my lord. And looking to the misconduct committed by the petitioner, my lord, it cannot be said the order of dismissal is disproportionate and warranted interference of this honorable court, my lord. So I have original D record also, my lord, whereby he has been given opportunity on each and every stage, my lord. Yes. My lord, to that I have admitted that 4 times they have noticed us, my lord, but the fact remains they have not complied with section 11, my lord. 11 it has already been considered. I have heard you. I'll pass on. My lord, technically as well, and on my lord, the quantum of punishment as well. In 1996, my lord, around 200 days he was unauthorizedly absent. The authorities has taken lenient view, my lord, given punishment of an orderly room. During, while that punishment, my lord, that was confinement of 24 days, he again deserted, my lord. Then during 15-16 months, he appeared only for 2 days, my lord. My lord, Again deserted. Orderly room wala, my lord, the punishment is there, my lord. Usme CMO bol raha hai ki he should not be punished. And my lord, even after that, my lord, they are giving us 25 days, knowing well that he's a clinical depression. CMO कहाँ बोल रहे हैं? My lord, P5 एक बार फिर से P5 एक बार फिर से। सर P5 तो देखिए उसके बाद चार्ट देखने इनको कुत्ते ने कब काटा था और ये विवाह कब से गए हैं? 93 में। हाँ, और ये 96 से ये भगोड़े हुए हैं। But my lord, ये तो फिर भी authorities have taken lenient view, my lord, and given punishment of 25 days confinement. देख लिया वो मैंने। इनका चार्ट देख लिया जाए, इस चार्ट में इन्होंने खुद ही बता दिया है। इनका हाँ पढ़ लो, आप पढ़ लो क्या पढ़ रहे हैं। My lord, पैरा 2 के एंड में देखेंगे my lord, पैरा 2 P5 20 है, yes my lord, उसके एंड में देखेंगे। उसके बाद तो disciplinary authority has taken a view, sir. Yes my lord. To find that individual can that view if not challenged. My lord, हमको पनिश किया नहीं my lord, ऑर्डरली रूम वाला पनिशमेंट किया। ऑर्डरली रूल में क्यों नहीं गए आप? My lord, गए थे, मैं बता सर, rule 32 deals with the orderly room. What is orderly room, my lord? My lord, I'm confining my arguments only to that where they say that a lenient view has been taken. To that I'm replying to that, my lord. Usme they are saying that a lenient view has been taken whereby their own CMO says that further treatment is requires continuous treatment from psychiatric specialist and he is not fit for active. उसके बाद भी हमको my lord, they are giving us punishment and they are saying a lenient view has been taken. My lord, as far as this treatment is concerned, my this lord, is not lenient view, my lord. We have a hospital, my lord. Instead of getting himself treated in Guwahati and Srinagar, he sat in Rewa getting treatment, my lord. Now,
Even after considering all the facts, my lord, they cannot be allowed to flout, my lord. When 11 is for minor penalties, right? They are going beyond section 11 and punishing us with dismissal, my lord. Give the judgment of Supreme Court, my lord, where this issue of 11-1. आज दे दीजिएगा, साइटेशन दे दीजिएगा। सर मैं भिजवा देती हूँ। हाँ भिजवा दीजिए, लेकिन क्योंकि कल परसों में लिखा दूंगा इसको मैं। तो सर मैं कल अगर छुट्टी मैं आज भेज दूंगी सर, आज ही भेजती हूँ। Highly obliged. I'm sorry, my lord, for saying the again and again. Sorry for that. That is on the lighter side, please. ठीक है, चलिए। लेकिन बुंदेलखंडी को मत करिए, उसका मैं सीरियस ऑब्जेक्शन दूंगा। नंबर 11 विजय त्रिपाठी नायक This is a case wherein, my lord, is pay which was initially fixed in the pay of rupees 2,700, my lord, which could revise to 6,500 was reduced to 6,050, my lord. The bone contention is, my lord, that prior to downgrading me and ordering recovery, there was no opportunity of hearing. Number one. Secondly, my lord, what has happened? Annexure P3 is the impugned order. Yes, my lord. P3 पढ़ते हैं जरा देखिए। P1 is the impure order. P1, P2, and P3. It says, please refer to your representation dated so and so. In this connection, it is stated that your case has been examined. It is found that your pay fixation has been made. There are two issues. There are two issues. One is pay fixation and another is recovery. Recovery without notice, I'll question. Yes, my lord. But pay fixation, what is the ground to challenge? The ground is, my lord, that what has happened, my lord, he entered as a JE. So the pay fixation के लिए थोड़ा प्रावधान अलग होता है। नहीं मेरे पता है सर। I am aware of the limitations involved, my lord. Yes, yes. My lord, he entered. मैंने आपसे पूछ लिया कि आप लंबी चौड़ी सर दोनों के पहले कि पे फिक्सेशन एक एस्पेक्ट है और दूसरा एस्पेक्ट रिकवरी है। रिकवरी आई एग्री जी, ठीक है, वो तो मैंने I've seen my lord's view over that, my lord. So I'm not as of now, my lord, pay fixation के those I'll harp upon two circulars, their view over those, my lord, and their circular even. I was appointed, my lord, as a JE on 2010-1989, my lord. 2010-89. That is RJ1 allotment with my rejoinder. 89 appointed as JE. Yes, my lord. RJ1. Yes, my lord. Annexure. RJ1. Yes. These were, my lord. Thereafter, my lord, as per their own scheme, that if you have completed the degree course, my lord, then you will be promoted to the next promotional post of AE. कब हुआ promotion आपका AE? Sir, annexure P4 at page 13. Page 13. जी. इसकी डेट क्या है? This is 21/12/94. जी. क्या हुआ? 21/12/94 सर. Assistant engineer trainee. Right. The following graduates in electrical engineering PD so and so AM. हो गया ना ये तो. Yes. Then my lord may just come to the order dated AP5 13/6/1396, my lord. जी, टाइम स्केल ऑफ पेस में रखा गया हमको. Thereafter, my lord, may just turn to annexure. में बता दीजिए ना आपका पे फिक्सेशन कहाँ, आप किस पे बैंड में आपका प्रमोशन हुआ था? सर पे बैंड ये 2400 कहाँ लिखा है ये? इसी में है सर. नहीं, आपके प्रमोशन ऑर्डर जो है जी, उसमें पेमेंट क्या लिखा है? 2400 4700 प्लस DNR 96 में मिला है वो जी ना. 1396 को मिला है जी. 2400. इसमें आपका फिक्सेशन क्या होगा? इसका सर जो दो सर्कुलर और मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद आई कम डाउन टू दैट फिक्सेशन चार्ट. और मैं जस्ट कम टू देयर रिप्लाई. एनेक्चर R1 एंड R2 पहले देखें सर. इन्होंने ही लगाया है ऑर्डर 22. ये सर
73(1) जो बोर्ड इशू करती थी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईज एक्ट में सर्विस कंडीशन बनाने की। R2 क्या है? R2 is the board is pleased to declare that as one time exception all the assistant engineers and other officers of the equivalent rank who have been appointed on or after 1/4/89 on successful completion of 1 year training shall be initially fixed notionally at the basic pay of rupees 2700 in the pay scale of rupees 2400-4700. In cases where appointment is directly to the post of assistant engineer and other equivalent posts without undergoing 1 year training, the fixation on appointment on or after 1/4/1989 would be notionally at the basic pay of rupees 2600 and the pay scale of rupees so and so. The annual increment shall also be given notionally up to 31/12/93 with effect from 1/1/94 onwards. The payment shall be made. 89 है ऊपर डेट 1489 जी 89 है जी। ऑन और आफ्टर 89 जो भी होगा हाँ उसके बाद with effect from इतना इतना onwards जी payment shall be made on the basis of इतना इतना. It has been decided that no arrears for the period from इतना इतना on account of increase in pay shall be paid. जी. So after this circular, my lord, I was जी जी after this circular एक सर्कुलर और इशू किया उन्होंने that is PR1 order 77 board ने. Further to this office order so and so 7495, it has been decided by the board that the assistant engineers who have appointed on or after so and so on successful completion of 6 months training would be fixed initially at the basic pay of so and so. On completion of 12 months period from the date of the start of training, they would be eligible for annual increment would be fixed at rupees 2700, provided that the training period was not extended for any reason. So these were the two orders, my lord, which they say by which I was fixed. चलिए 2700 रुपए मान लें आप. हाँ जी 2700 रुपए में कितना फिक्सेशन आएगा? 2700 रुपए में सर फिक्सेशन जो हुआ है जी तो 6500 का आएगा. 6500 जी. अब आज ये इम्प्यूग्ड ऑर्डर पे आ जाएगी जी. They subsequently issued भाई एक सेकंड पेज 25 प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. जी आप 96 में असिस्टेंट इंजीनियर नियुक्त हुए 2400 के पे स्केल. जी आपका 1 साल की ट्रेनिंग पूरे होने पर हो जाएगा 2700 रुपए पर. जी ठीक है 97 में जी. अब 2700 रुपए के बाद में आपका फिक्सेशन हो जाएगा 6500 रुपए जी. ठीक है जी. अगली स्टेज जो है 6725 2800 के मान से. ठीक है वही वो कह रहे हैं. नहीं वो ये कह रहे हैं कि आपको जो 6500 दे दिया था वो गलत दिया था क्योंकि ये सर्कुलर उन्होंने इशू किया 6/5/98 को पेज नंबर 25 पे पिटीशन की. एक सेकंड देखिए क्या ऑर्डर इशू किया? ये सर 6/5/98 को इशू किया. पहले के 2 सर्कुलर विड्रॉ नहीं किए. ये एक और ऑर्डर इशू किया और ये कह दिया उसमें in partial modification of regulation 5B and 6 of the MP Electricity Board regulation for revision of pay scale for class 1 and 2 officers January 98 published by so and so. The board is pleased to decide that the pay of the person who have been appointed in the cadres of shift chemists, programmers, so and so, assistant engineers, an equivalent cadre in class 2 post and whose initial basic in the pre-revised scale was fixed as rupees 2700 after successful completion training or after 1/4/94 shall be fixed as a special case at the stage of rupees 60-50 instead of 5600 in the pay scale of rupees so and so with effect from the date he was fixed at 27. यहीं से तो आएगा ना. 94 में आपका प्रमोशन हुआ जी. आपकी पे जो है 60-50 पे फिक्स हो जाएगी. हाँ यही तो सर्कुलर ने चैलेंज किया है. अच्छा बताइए किस ग्राउंड पे किया? इस ग्राउंड पे चैलेंज किया कि आपने जो इनिशियल 2 सर्कुलर्स निकाले थे उन सर्कुलर्स में आपने एज अ वन टाइम के हिसाब से भी चले तो भी आपकी जो है 2700 रहेगी ना सर? नहीं 27. अरे भाई 2700 7175 कैसे आएगी इतना बता दीजिए आप. कौन सा सर? इन्होंने 7175 से करेक्ट करके 6725 किया है. हाँ ये सर इन्होंने ये देखिए ना सर रिजेक्ट जो किया है 6500 से 60-50 किया है. ये नहीं रिजेक्ट किया है. T1 देखिए ना सर. T1 Please refer to your representation dated 3/2/2000. In this connection, it is stated that your case has been examined and it is found that your pay fixation has been made as per board 20/1/98 का नोटिफिकेशन बता रहे हैं. उसके पहले फिक्स कर चुके थे हमको.
Hence, the pay fix done at the stage of 60-50, it is an order, your representation of fixation of pay of assets. So instead of 60-50 cannot be considered. यही तो पूछ रहे हैं आपसे, किस ग्राउंड पर आपने चैलेंज किया है? सर ग्राउंड ये है कि इनका खुद का ऑर्डर है R1 और R2, ये बोर्ड ने निकाले थे। इस ऑर्डर में ही लिखा था कि जो लोग ट्रेनिंग कंप्लीट करके आएंगे उनका ऐसा वन टाइम एक्सेप्शन हम 6500 पे फिक्स करेंगे, 2700 रिवाइज एज 6500। तो ये दोनों ऑर्डर्स दे आर स्टिल इन फोर्स, दे नेवर विड्रू दीज ऑर्डर्स my lord. ठीक है। Now my lord, may see abruptly this order dated 6598 is issued. From back date they say now 6500 should be read as 6050. ठीक है जी, यस बताइए मिस्टर नायर। एंड एक और वन मोर रिस्पेक्टफुल सबमिशन इज my lord, इसका जो करस्पॉन्डिंग फिक्सेशन था वो था सर 6500, जो कि इनके रूल्स के हिसाब से था। तो उन्होंने बोला कि साहब ये रूल्स आपको लगते नहीं रिवीजन के, क्योंकि सी क्लॉज है जो पेज 20 पे, बैक पेज ऑफ 20 पे, वो कहता है ऑफिसर्स हु हैव बीन अपॉइंटेड इन द बोर्ड सर्विस afresh on or after 1494 shall be fixed at the minimum of the revised pay scale applicable to the post held by them. So this was one of the more grounds which they say because of paying the revised जी तो आर जी क्लॉज कौन सी पढ़ते हैं? सी क्लॉज सी for officers appointed. Yes, officers who have been appointed in the post service afresh on or after 1494 shall be fixed in the minimum of the revised scale pay to the post held by them. So my respectful submission was I was not a fresh appointee. I was appointed in 89. नहीं, एक second. Then you will not be entitled to be appointed as assistant engineer. But will be, then it has to be taken to be a case of promotion. If you are trying to recon, in 1989 you were appointed as junior engineer, not as assistant engineer. No, it is not. And on the post of assistant engineer, you were given fresh appointment. It is not a case of promotion. Sorry, please try to understand. May I just study submission? I do go down to your lordship's query. It's a very pertinent query, my lord. They issued a circular that those who are graduates and have put in this year of service as an interdepartmental candidates will be appointed as assistant engineers. It was not a fresh appointment. ये period wipe out नहीं होगा सर, for the purpose of MACP या higher pay scale या pension, ये period count हो रहा है। ये देखें ना सर, हमारा अपॉइंटमेंट ऑर्डर देखें, ये जो हमको कह रहे हैं वो द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ डिपार्टमेंटल जूनियर इंजीनियर्स और असिस्टेंट शैल बी द डेट ऑफ देयर ज्वाइनिंग इन एचआरडी इंस्टीट्यूट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल द फॉर्मेलिटीज। तो दे आर ट्रीटिंग इट एज अ डिपार्टमेंटल जूनियर इंजीनियर। तो सर माय लॉर्ड्स आर मच अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि सर वो एक इंक्रीमेंट का इशू वो जो जोशी से जो शुरू हुआ कि सब जो इंजीनियरिंग कर लेगा तो उनको जस्ट टू बूस्ट थे, जिसके बेस पे उन्होंने फिक्स किया, दैट वाज नेवर विथड्रॉन। दिस सर्कुलर वाज अब्रप्टली ब्रॉट इनटू फोर्स। बता दिया आपने जी ठीक है। एंड नो अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग प्रायर टू दिस। Yes, No. Petition 5.3 they themselves say that he was appointed as word use is appointed. 5.3 में देखेंगे। Yes. Petition first line is the appointed as appointed as and annexure P4 if your lordship see again the word uses appointed, my lord. जी हाँ वो तो मैंने खुद ही कहा। जी वही। So his case comes under 5C of the pay revision rules, my lord, and the annexure R2 which my learned friend is relying on, my lord, that is a decision which was taken one time decision, para 3 आप देखेंगे। एक सेकंड रुकिएगा। जी The annexure R2 का para 3 देखेंगे। annexure R2 का para 3 yes. It says that the aforesaid decision is one-time exemption and would not be quoted in as precedence in future, my lord. So our submission is, my lord, that the pay fixation rules which my learned friend has also annexed, my lord, this case falls under 5C. No, not, he will not fall under 5C, my lord, but his case was fixed under as per the regulation 6598, my lord. 6598 का जो वो था, मतलब उसके बेसिस पे किया था, पी जो पेज 25 पे है उसके बेसिस पे इनका फिक्सेशन किया। ये बताइएगा ना कि ये 95 का जो ये सर्कुलर है जी 94 में अपॉइंटेड असिस्टेंट इंजीनियर को लागू नहीं होगा क्या वन टाइम एक्सेप्शन में? Not this, नहीं
When you say that this was one-time exception, this circular was issued, R2 was issued on 7/4/95. Admittedly, he was appointed as assistant engineer in 1994. So why this circular will not be applicable to the petitioner? तो ये रिप्लाई में बोला है कि लगेगा? देखिएगा, this petition is filed being aggrieved of the order dated 14/6/2000 passed by the Additional Secretary Madhya Pradesh Lake City Board rejecting petitioner's representation dated 3/2/2000 against the order dated 19/1/2000 whereby petitioner's basic pay was reduced from 7,175 to 6,725. Full stop. It submitted that respondents have themselves admitted that petitioner was appointed as assistant engineer by the order dated 21/12/1994. Full stop. Therefore, in terms of the circular order dated 28/11/95, he was entitled to get his pay fixed at rupees 2,700 on completion of 12 months of training. Full stop. As per the order number 22 dated 7/4/1995, petitioner was entitled to get his pay fixed in the pay scale of rupees 2,400-125-150-150-4700. Full stop. This was done but arbitrarily after making fixation of the petitioner in terms of annexure R1 and R2. Same was withdrawn in terms of order dated 6/5/1998, which will not be applicable to the petitioner. Full stop. It is submitted that this unilateral decision without giving any notice of hearing is arbitrary and illegal. Next paragraph. Shri Anup Nair in his turn submits that as per clause 3 of annexure R2 dated 7/4/1995, the decision of making pay fixation as provided under the said order was one-time exception and would not be quoted as precedence in future. And full stop. Pay was fixed as per clause 5A of annexure P5. Full stop. It is further submitted that pay was fixed as per clause 5A of annexure P5. P8, sorry Manoj, P8. P8. वो जो रेगुलेशन था, पे रिवीजन रेगुलेशन था। हाँ, P8 है, P8. P8. Next paragraph. और आपका जो पे फिक्सेशन हुआ है वो R3 हमने एडिशनल रिटर्न पे नेक्स्ट पैराग्राफ लगाया हमको। After hearing learned counsel for the petitioner and going through the record, respondents have not answered two things, namely how annexure P8 dated 20th January 1998 will have retrospective application to the case of the petitioner who stood appointed on the post of assistant engineer by order dated 21/12/1994 and was thereafter given the time scale of pay by order dated 1/3/1996. Thus, in absence of any material brought on record to show that orders of 1996/98
Annexure P11 and order pay fixation and regulations for revision of pay scales for class 1 and class 2 officers issued in 1998 will have retrospective effect, impugned pay fixation order and consequent order of recovery cannot be given approval merely by saying that order of 1998 Annexure P8 will be applicable with effect from 1/4/1994 is not sufficient. For this, board is required to show that it has power to amend the orders and circulars which were issued prior to this and they were withdrawn, but no material is brought on record to show that Annexure R1 and R2 were ever withdrawn by the board, so to make Annexure P8 applicable from a retrospective date. Thus, in absence of there being any withdrawal of the order section contained in Annexure R1 and R2, if pay fixation was already made, then that cannot be changed because rules for pay fixation as contained in Annexure P8 will not have any retrospective effect. Therefore, impugned orders are quashed, petition is allowed. The recovery they have done should be. Quash का मतलब क्या होता है? Recovery करना. Madhya Pradesh. जी बताइए सर अभी रिपोर्ट क्या हो गया? शासन में इतना सन्नाटा क्यों है? सर वो मानस जी के पास जी मानस जी के क्या करना पड़ेगा उसके लिए? सर वो सर वैसे इंस्ट्रक्शन आ गए उसमें रिपोर्ट फाइल कर दी अभी कर दी है? हाँ ऐसा श्री मोहन सिंह for the petitioner. Shri Jiten Shrivastava, learned panel lawyer for state, submits that he has instructions from the concerned TI. Shri सुबह आए थे, क्या नाम है उनका? उमेश कुमार तिवारी, that he has filed final report before the concerned court. Full stop. In view of these set facts, that final report was filed today before the concerned court. A statement made by Shri Jitendra Shrivastava on instructions received from Shri Manas Mani Verma, learned government advocate, and Shri Umesh Kumar Itna. No further indulgence is required in the petition, and petitioner will be free to challenge the order final report in appropriate proceedings. बताइए क्या मैटर है? My lord, this petitioner is the employee of NCL department. In service record, his wife name has been incorrect mentioned to the extent, my lord, Savitri Singh की जगह पे Savitri Devi हो गया. On when this fact came into his knowledge, my lord, he has moved a representation before that. क्या हो गया? सावित्री देवी और सावित्री सिंह में कौन सा बहुत फर्क है भाई? एक कोई सेकंड वाइफ का तो केस है नहीं, करेक्ट कर लीजिए आप इसको. आप ऑर्डर करिए. हमारे एक्चुअली रूल्स में था कि ग्राम पंचायत या उससे काउंटर साइन. श्री राकेश सिंह, learned counsel for the petitioner. Shri Grishma Jain for respondent number 1, 2 and 3. Shri Brahmadatt Singh for respondent number 4 and 5. Next paragraph. The only grievance which is raised by the petitioner is that in service record, name of his wife is incorrectly mentioned as Savitri Devi in place of Savitri Singh. Full stop. He submits that it is not a case of second marriage or that of entering name of second wife, but only case of correction of the name of the wife already entered in the service record. Full stop. In support of his contention, मैडम की मार्कशीट वगैरह लगाइए आपने? आधार कार्ड है, समग्र आईडी है, वोटर आईडी, आधार कार्ड सब फर्जी डॉक्यूमेंट है. जी सर, इनका कोई चंचटी नहीं है. इलिटरेट लेडी है क्या है? अच्छा, इलिटरेट है. फुल स्टॉप. He has produced a certificate from Sarpanch Gram Panchayat Ram Sthan Vikas Khand Sohaval, District Satna,
wherein it is certified by the Sarpanch that name of the wife of the petitioner is Savitri Singh. Full stop. In support, he has produced Aadhaar card and Samagra ID to show the correct name. So also an affidavit sworn by Savitri Singh. Full stop. In view of said facts, that the petitioner has also enclosed copy of the mark sheet of his children to show the correct name of their mother as Savitri Singh. In view of such facts, it is directed that respondent shall correct the name of the petitioner's wife in their service record in this direction within 30 days of receipt of communication of the order. With this direction, petition is disposed of. Period for 78. Sandeep Kumar Jain. My lord, in this case, my lord, this is third bail application, my lord. My lord, first application, first and second application were withdrawn, my lord. My lord, in this case, my lord. सब एनडीपीएस स्पेशलिस्ट हो क्या? नहीं माय लॉर्ड, यही मामले लड़ते, इसके मामले के अलावा दूसरे मामले हत्या वत्या केस नहीं लड़े जाते हैं माय लॉर्ड। अच्छा नहीं, आप वैसे ही जैन हो, हत्या कहाँ कर पाओगे? इन मामलों में कम से कम पाप रहता है माय लॉर्ड। इन मामलों में ज्यादातर कम रहता है जी, ज्यादातर इसमें इन मामलों में मजदूर लोग फंसते हैं माय लॉर्ड। अच्छा, इन्हीं मामलों में पाप ज्यादा रहता है। जी सॉरी, इन मामलों में कम से कम रहता है। क्या इस हाईकोर्ट में कोई भी जैन वकील हत्या करके मैटर नहीं लड़ता? नहीं लड़ते हैं माय लॉर्ड, लड़ते हैं। क्यों मिस्टर दिवाकर, आप भी जैन है क्या? हत्या के मुकदमे नहीं लड़ते क्या? ऐसा कहीं बंदिश है क्या? नहीं नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक। हाँ बताइए, क्या है ये? जी माय लॉर्ड, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है? जी कोई रिकॉर्ड नहीं। कोई रिकॉर्ड नहीं। 4 किलो 600 ग्राम है क्या? ये 4 किलो 600 ग्राम। 600 ग्राम। क्या है इनका रोल? इनका माय लॉर्ड, इनसे जो है सीजर के विटनेस एग्जामिन हो गए? केवल एक भौतिक सत्यापन साक्षी हुआ है, बस कार्यवाही साक्षी। सबसे जेल में है ये 24/12/2021 से। देखिएगा, Sandeep Jain, learned counsel for the petitioner, submits that this is third bail application on behalf of the applicant Sheikh Rafi, son of late Sheikh Chan. Please stop. Under section 439 CRPC. Case crime number 622/2021 is registered at police station Umaria, district Umaria, under section 8/20B of NDPS Act 1985. Applicant is in custody since 24/12/21। सही डेट है ये? 24। सरकारी वकील साहब को देखने दीजिए। Stop. It is submitted that first 2 applications were dismissed as withdrawn. Next, it is submitted that applicant is in custody for over 1 year, 4 months, and the recovery is only of 4 kilograms, 600 grams of ganja. Full stop. It is submitted that there are several loopholes in the prosecution story. Full stop. Applicant is innocent. He has no criminal history in the matter. Full stop. Roshan Singh, constable, has been examined before the court of law on 27/1/2023 and has admitted that Sub-Inspector Sarita Thakur had not called for any independent witness. Full stop. It is also admitted that no notice was given to other witnesses to participate in the proceedings. Full stop. He has also admitted that only police personnel were involved and on the date of the incident, his duty was not as a sentry. Full stop. He also admitted that no list or proceedings were drawn in front of him in regard to confiscation. He has also denied that he had brought the weighing machine. Full stop. He also admitted that the material which was drawn does not contain Malkhana number. Full stop.
taking facts into fact that there is no criminal history of the applicant. He is in custody since 24/12/2021 and quantity of seized contraband is not a commercial quantity without commenting on merits, and trial is going to take time. 50,000 to sureties. कौन सा नंबर है? कहाँ ट्रांसफर हो गया आपका? सर रिपैट्रिएशन नहीं रिपैट्रिएशन तो नहीं है एग्जैक्टली स्टे है क्या यहाँ से? नहीं स्टे नहीं है फिर क्या करना है इसमें? आज क्या सुनवाई सर 3 मिनट मंडे नहीं मंडे 3 मिनट में कर रहे हैं तो बताइए, नहीं तो थोड़ा सा तो समय लगेगा। तो फिर आराम से करिएगा, पिटीशन एडमिट कर नहीं सर एडमिट ना करें क्योंकि छोटा सा ही पॉइंट है। बताइए ना, फिर छोटा सा पॉइंट तो 1 मिनट में बता दिया जाता है। 1 मिनट बता दो व्हाट हैपेंड इन दिस केस। माय लॉर्ड में जस्ट कम टू द एडवर्टाइजमेंट दैट इज माय लॉर्ड issued by the respondents, that is that page. I'm sorry, my lord, we just come to annexure P3, my lord. At page 20, appointment on one post of Deputy General Manager Investigations, MPPGCL, Madhya Pradesh Power Generating Company invites application for one post of Deputy General Manager Investigation in the prescribed format for the departmental candidate working in MB so-and-so and other successor companies of erstwhile MPSAP in cadre of senior security officer / security officer fulfilling the eligibility condition and terms of so-and-so. The terms of the applicant shall have the past experience in handling investigation matters in the field so-and-so. The applicant will be entertained only through proper channel along with the NOC. No department. Sir, what happened? मैं इसको इसलिए पढ़ा रहा हूँ सर कि इसमें जो था it was appointment of departmental candidates to a particular post. Yes. Clause जो 6 है important है. After selection, candidate will be appointed on the post of DGM investigations, initially on probation for a period of 2 years, and thereafter permanently absorbed in MPPGCL on the pay scale of so and so, basic so and so. However, necessary pay protection will be provided as per the prevailing rules of the company. The length of past service ended in so and so and other successor companies as well. That is not the issue. No, I was absorbed. I was appointed. P4 at page 22. श्री कमलेश पटेरिया सुरक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड डेवलप फ्रॉम द कन्वेंशन पॉइंट हो गए या पॉइंट का प्रोविजन का देयर आफ्टर आई स्टार्टेड वर्किंग इन दिस पोस्ट when was your probation completed? My probation should completed within 2 years, my lord. There was no express order passed by them for completion of probation. What abruptly, my lord, annexure P1 is issued. Which says इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 30/6/2016 द्वारा श्री कमलेश पटेरिया 16, ये 2020 का आदेश है। 2 साल के अंदर उनको प्रोबेशन एसेस करना था और होता तो परमानेंट एडॉप्शन करते, हम काम कर रहे थे। इस कार्यालय के आदेश क्रमांक सो द्वारा श्री कमलेश पटेरिया मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड सो में उप महाप्रबंधक अन्वेषण पद पे कार्यभार ग्रहण करने की तिथि तक अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान की गई थी। प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार श्री कमलेश पटेरिया उप सो जिन्होंने कंपनी में सर एक सेकंड और ये अपॉइंटमेंट था सर, और इन्होंने जो जवाब दिया, आप तो घूम के आ जाते हैं सर, मैं ही बैठना पड़ता है। आई एम सो सॉरी माय लॉर्ड, मैं आस्क दिस इज द पॉइंट। नो शो कॉज नोटिस, नो अपॉर्चुनिटी, दे से आई वाज अनफिट। 2 साल की सीआर मैंने लगाई है जी, जवाब में पहली बार कहा इसको। ठीक है my lord, my respectful submission is that the services were not absorbed, my lord, and since his services were not found satisfactory, there was a condition stipulated that if his services are not found satisfactory, वो condition वो बता my lord, that is in the appointment order itself. बताइए Annexure P4 at page 22. दो वर्ष, मतलब नंबर 3 में डायरेक्ट पढ़ दे रहा हूँ सर। ठीक है, 2 वर्ष ठीक है, देख लिया सर। ठीक है, मतलब this was the reason why he is repatriated to the parent department. May I respectfully submit? This order doesn't say so. Annexure P1 at page 18. They say प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार. It is not said that your आपकी इज्जत बचाई उन्होंने। अगर वो ये कह देते जी आपका कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया जी, तो you would have been of no bear। Yes. आपके डिपार्टमेंट में जाके आपको दिक्कत हो जाती। सर उसी पे आ रहा हूँ मैं।
उन्होंने पहली बार रिप्लाई में बोला, my lords are much aware of this proposition that the validity of each order should be seen from the contents mentioned therein. जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर था वो बड़ा स्पेसिफिक था कि 2 साल के बाद आफ्टर सिलेक्शन द कैंडिडेट विल बी अपॉइंटेड ऑन द पोस्ट ऑफ DGM इनिशियली ऑन प्रोबेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years and thereafter permanently absorbed in MBPGCL. However, necessary pay protection will be provided. 2 साल बाद दो CR उन्होंने हमें कैसे one will assess my lord that my work was unsatisfactory on the basis of CRs my lord, on the basis of any recommendation. उनका reply is blank. My lord, मैं kindly see not a single document they have ACR पेश कर दी। ACR मैंने फाइल की है सर, 2 साल की, उन्होंने कम्युनिकेट की, वेरी गुड है सर। अच्छा 16, 17, 17, 18 मैंने एक एप्लीकेशन फाइल की IA 10506 वाला। क्या वेरी गुड भी कम्युनिकेट होती है सर? ये RTI में हमने ले ली थी जो उन्होंने लिखी है, बाकी तो लिखी भी नहीं। ये कह रहे हैं कि हमारा काम अनसैटिस्फैक्टरी है। पेज 16 पे देखेंगे, वेरी गुड ए IA 1 सर फाइल की मैंने 16 जुलाई 16 से 31 मार्च 17 तक की। IA वेरी गुड यस जी। फिर 17 से लेकर 18 शुरू के 2 साल हमने फाइल की है जी, वो भी वेरी गुड है सर। पेज 32 पे देखेंगे, आई एम सॉरी पेज 34 पे। तो कैसे एसेस कर लिया अनफिट है, कैसे वो कह रहे हैं, कौन सा कागज लगाया, कोई स्क्रीनिंग कमेटी के सामने रखा क्या हमारा केस, कैसे मुझे पता लगे कि सब अनसैटिस्फैक्टरी है? सिर्फ एक एफिडेविट पे लिख देना मात्र सफिशिएंट। I have, my lord, since this question had to arise, my lord, I have called for the note sheets, my lord. These are the note sheets, my lord. नहीं ACR दिखाइएगा। ACR तो इन्हें फाइल कर दी है सर। नहीं 2 ही साल की ना आपने, तो 2020 में आदेश पारित किया है सर। बाकी ACR में क्या लिखा हुआ है और ये नोट शीट में क्या लिखा है? नोट शीट दिखा दो। किस तारीख को लिख रहे हैं आपके मुख्य अभियंता ये नोट शीट? सर दस्तखत है सर उसमें नीचे 18/3/20 की है सर, 17/3 की है सर। ठीक है, ये ACR दिखा दीजिए 2 और एंड सर देयर इज अ डायरेक्ट जजमेंट माय लॉर्ड। ठीक है, देखेंगे जजमेंट भी देखेंगे। ACR बुलवा लीजिए, लेट ACR फॉर रिमेनिंग 2 years namely 18, 19 and 19-20 we also supplied, we brought on record along with the complaints which were received from various quarters as are mentioned in the note sheet dated 17/3/2020. Is this case next week? So much like